इसका जो एक देश का लोकतंत्र विरोधी रवैया है वो दर्शाता है। थैंक यू। All right, so the BJP over there at a press conference attacking Rahul Gandhi. This, of course, is a scathing attack that we are seeing on Rahul Gandhi from the BJP after the conviction by a Surat court in a defamation case. He has been awarded 2 years in prison. Of course, he's currently out on bail. In a mega crackdown on terror, BSF troops deployed along the India-Pakistan border in the area of Metla sector, Gurdaspur. Punjab detected a drone infiltrating into Indian territory from the Pakistani side and subsequently fired upon the rogue drone during search ops conducted in the area. BSF troops recovered a consignment of a packet that was dropped through the drone containing arms and ammunition. So pictures on your screen are of the consignment that was dropped using the drone. Amandeep is joining us live from Chandigarh. He has more details on what really happened. What we know as of now is that this was a drone that has been intercepted in Gurdaspur. Amandeep, tell us more, please. Well, absolutely, Nupur. This time a drone sortie suspected by the BSF in Gurdaspur sector, and in fact, accordingly, BSF troops act against that drone sortie. And even that drone has been pushed back to the Pakistani territory just because it was with a consignment, and drone was successfujly able to drop the consignment. That consignment was recovered by BSF troops, in which they have recovered 5 9mm pistols, 10 magazines and 31 rounds. And now BSF, along with the help of local police, they are searching the area that is there any other consignment that was dropped by that Pakistani drone, and who all are the connections on the ground at Indian territory who are continuously in touch with the Pakistani smugglers and who supposed to receive this weapon consignment for what purpose. This is the investigation that has been done by the BSF along with the local police. But yes, the consignment, the weapon bid has been foiled by the BSF after tracing and recovering the weapon consignment with 5 pistols, 10 magazines and 31 rounds. But extensive investigation on the ground has been launched by the BSF and the local police to find out the local connections of the Pakistani smugglers which are being exploited by these Pakistani drugs and the weapon smugglers in the Indian territory, and what is the destination of these consignments, where they are supposed to be delivered. That is all underway. Yes, all right, Amandeep, thank you very much for joining us on the broadcast. So Amandeep bringing us all those details from Chandigarh. In the Ecuadorian city of Guayaquil, heavy rains have claimed at least 21 people and left 23,000 homeless. Heavy rains continued to lash the city following the cyclone Yaku. Heavy rains have followed Cyclone Yaku, flooding properties and roads in the Ecuadorian city of Guayaquil. The downpours have caused the Guayas River to burst its banks, causing widespread flooding in the port city. Residents in nearby Puerto Bolivar were also affected by the deluge. Officials say that heavy rains this winter season have killed at least 21 people and left 23,000 people homeless. With weather forecasts predicting more downpours, the residents await respite. Agency report for Republic TV. You are watching Republic TV. We slip into a very short break. On the other side, we bring you more news, including Mamata Banerjee's meeting with Kumaraswamy that takes place today. And vandalism by Khalistani extremists is raised in the House of Commons.
QS and THE, the world's foremost university rankings organizations, have ranked Amity amongst the top 3% universities globally, making it among the very few Indian universities to be included in both rankings. Yet another top ranking for Amity University. We have to be much tougher as a nation. If a state government does not defend national interest and national security, then the center has to immediately step in. We cannot be so soft and so indecisive that a person like Amritpal and nobody first becomes a national security threat, then becomes so out of control that he organizes a private fully armed battalion around him, attacks state policemen. When the state wakes up, this man Amritpal vamooses and organizes a car chase with thousands of security forces in Punjab. Now we know that drug dealers are giving Amritpal Mercedes SUVs to drive around in. Why? Didn't the security agencies not know about all this till now, or did they allow? If a state government does not defend national interest, then the center has to step in, whether people like it or not. These are not legal matters. These are matters of national security. The United Kingdom is officially telling the people of India and the government of India that it couldn't care less. The United Kingdom is telling the government of India that it wants to do business with India, but it will do nothing to defend Indian interests. The London Metropolitan Police says it is continuing with inquiries. On the ground, the reality is the Khalistanis have a free reign. Today, Rishi Sunak and his cabinet must decide and pick a side. They cannot appease Khalistanis on their soil and hope to forge ties with India. They cannot act on every other separatist movement and in fact do everything possible to make sure that the United Kingdom is the center of anti-India activity. The United Kingdom is allowing terrorist groups who target India to run full corporate type offices on British soil. This is payback time. Last week in the UK there were celebrations when it was reported that the economy might grow by 0.4%. If we give the British access to the Indian market by signing the free trade agreement, Welcome back, and here's a quick look at the top international news we are tracking here on Republic. President Joe Biden and First Lady Jill Biden arrived in the Canadian capital Thursday with a focus on big global issues. Issues on the agenda are the war in Ukraine, climate change, and an increasingly assertive China and global trade. The Biden administration has made strengthening its friendship with Canada a priority over the past 2 years. The U.S. Secretary of State Antony Blinken appeared before the White House Appropriations Committee Thursday to testify about U.S. foreign policy priorities in the fiscal year of 2024. $63.1 billion budget proposal for the State Department and U.S. aid. As the budget was underway, Republican Chris Stewart questioned whether the administration is willing to support Zelensky's aim to reclaim Crimea. Students and parents fed up with gun violence after a shooting injured 2 administrators at the Denver High School gathered to protest at the Colorado State Capitol building Thursday. The shooting happened Wednesday morning at the East High School, not far from downtown, while 2 administrators searched a 17-year-old Austin Lyle for weapons, a daily requirement because of the boy's behavioral issues. A 3-day strike by workers in the Los Angeles Unified School District was scheduled to wrap up Thursday, but it wasn't immediately clear if any progress was made in negotiations for higher pay for teachers, aides, bus drivers, custodians, and other support staff in the nation's second-largest school system. The union has said that employees, including special education assistants, cafeteria workers, and gardeners, would return to work today. And coming up next at the UN, India shows Pakistan the mirror, warns against its Kashmir propaganda.
The United Kingdom is officially telling the people of India and the government of India that it couldn't care less. The United Kingdom is telling the government of India that it wants to do business with India, but it will do nothing to defend Indian interests. The London Metropolitan Police says it is continuing with inquiries. On the ground, the reality is the Khalistanis have a free reign. Today, Rishi Sunak and his cabinet must decide and pick a side. They cannot appease Khalistanis on their soil and hope to forge ties with India. They cannot act on every other separatist movement and in fact do everything possible to make sure that the United Kingdom is the center of anti-India activity. The United Kingdom is allowing terrorist groups to target India to run full corporate type offices on British soil. This is payback time. Last week in the UK there were celebrations when it was reported that the economy might grow by 0.4%. If we give the British access to the Indian market by signing the free trade agreement with them, then their GDP will go up by 0.25% additionally. This is huge. Britain cannot be allowed to lecture us on fake liberalism and continue to justify terrorism as dissent. I say I disagree with the way in which Britain is continuing to hurt India's national interests repeatedly. This is the time that we finally and completely realign the relationship to let the British know where the power balance will rest. 11 associates of Amritpal are to be produced here at Baba Bakara Court Complex here in the Amritsar district. Several of them have been arrested under the Arms Act while 4 others are facing the different charges. They were sent to 4 and 3 days custody. The anti-riot police along with the rapid action force have been deployed here at the court complex to ensure that there is no law and order situation emerging out of it. एक बात बताइए ना, इतने माउंटेन्स आपने चढ़े, इतने कॉन्टिनेंट्स पे इंक्लूडिंग एवरेस्ट, सबसे मुश्किल कौन सा था ये बताइए? Sir, I would say Everest is all. The Union Home Minister Amit Shah has arrived at the residence of B.S. Yediyurappa in Bengaluru. Amit Shah, of course, is meeting BSY and his son Vijendra for breakfast to discuss the poll strategy for Karnataka. So in this meeting, we are told there is BSY, Vijendra and the Chief Minister. Prajwal is joining us live right now on the broadcast. Prajwal, give us a broad sense of what we're expecting from this meeting. Looking at this entire meeting now, we could also see that the Home Minister has arrived at B.S. Yediyurappa's residence, Kaveri in Bengaluru, and he was supposed to meet both B.S. Yediyurappa as well as his son B.Y. Vijendra, who were also present along with Chief Minister Baswaraj Bommai as well. And largely now it is being stated that this is a meeting to go on and discuss poll strategy for the BJP ahead of the upcoming elections as well, because Vijendra has been tasked with heralding the Vijay Sankalpa Yatra across all the constituency, and he is in close talks with the central leaders as well, because we saw Vijayendra largely present with JP Nadda as well, and he was instrumental in launching the booth program for the BJP in the state of Karnataka along with the Chief Minister as well. And now Vijayendra's growing stature as a BJP leader is now being clearly seen over here, because when the Union Home Minister Amit Shah immediately arrived, he also spoke to Yediyurappa, but in a very lighter tone, stating that let Vijayendra give him the bouquet first. And this clearly goes on, and if you're reading between the lines, shows Vijayendra's stature as an important leader within the Karnataka BJP, no matter who the detractors are, even within the BJP party itself, which shows that B.S. Yediyurappa had always been given prominence, but now even Vijayendra is also growing as a leader. But apart from this, they have 3 main missions. One is the mission 150, which the BJP had been speaking mainly in Karnataka as to how to go and approach it. The mission 20 in Bengaluru for the BJP to go on and get 20 assembly constituencies out of the 28 assembly constituencies here in Bengaluru, and also about the mission 15 in Belagavi, because after Bengaluru, Belagavi has the highest number of seats, which is 18 assembly constituencies. And now the BJP somewhere feels that if they go on to make additional inroads in the Belagavi, then in Belagavi district, they can clearly go on and gain an absolute majority, because they are also looking at the margin of defeats over here.
Prajwal, do stay with us. Joining us right now on the phone line, we have Mr. Vivek Reddy. Mr. Reddy, good morning. Mr. Reddy, you know, these visuals are very, very telling. We see Amit Shah over there getting down and taking the bouquet first from B.S. Yediyurappa's son. In fact, he almost asks Mr. Yediyurappa to let his son give the bouquet first. What is it that you read out of it? Because many will see this perhaps as the top brass of the BJP being firmly behind B.S. Yediyurappa and his son, who has faced his detractors. Well, I think this has always been so. There is nothing new in this. The BJP's policy is that all the frontline leaders have to deserve equal treatment, good treatment from the party, and are the persons who are really going to bring the votes. I think with this in light, this is nothing new or this is nothing unique or strange. I think this is very much commonplace, and there is nothing that is to be read into it. But one thing is that the High Command, led by Narendra Modi ji, Amit Shah ji, is recognizing everybody as a team of leaders for the success of the party in the Karnataka elections this time. That is the message that goes through. All right. All right, Mr. Reddy, thank you for joining us on that. Certain BJP leaders, of course, not wanting to see too much into it, but obviously there will be others who will think that this is a signal that's been sent to the opposing camp within the BJP that the High Command does stand firmly behind B.S. Yediyurappa, a tall Lingayat leader, and his son. You are watching Republic TV. We'll slip into a short break. When we return, we'll get you more on this. The United Kingdom is allowing terrorist groups to target India to run full corporate type offices on British soil. This is payback time. Last week in the UK there were celebrations when it was reported that the economy might grow by 0.4%. If we give the British access to the Indian market by signing the free trade agreement with them, then their GDP will go up by 0.25% additionally. This is huge. Britain cannot be allowed to lecture us on fake liberalism and continue to justify terrorism as dissent. I say I disagree with the way in which Britain is continuing to hurt India's national interest repeatedly. This is the time that we finally and completely realign the relationship to let the British know where the power balance will rest. 11 associates of Amritpal are to be produced here at Baba Bakara Court Complex here in the Amritsar district. Several of them have been arrested under the Arms Act, while 4 others are facing the different charges. They were sent to 4 and 3 days custody. The anti-roid police along with the rapid action force have been deployed here at the court complex to ensure that there is no law and order situation emerging out of it. एक बात बताइए ना, इतने माउंटेन्स आपने चढ़े, इतने कॉन्टिनेंट्स पे इंक्लूडिंग एवरेस्ट, सबसे मुश्किल कौन सा था ये बताइए? Sir, I would say Everest is always the difficult one. हालांकि lot of people say sir, Everest में आजकल हर कोई चढ़ रहा है, but let me tell you sir, Everest remains Everest. Everest is the highest mountain in the world and it will remain so. And I have find Everest to be the most difficult. Most difficult. Most difficult sir. Ultimately crevasses उस खुम्बू ग्लेशियर में आपको क्रॉस करने हैं. Ultimately वो लोत्से फेस में जो 70 डिग्री की वॉल है वो आपको चढ़नी है. डर लगा कभी? सर आई थिंक डरना भी जरूरी है सर, बिकॉज डर जब आपको लगता है आप सतर्क रहते हैं. The opinion about Israel within the Indian population is much more favorable vis-a-vis how Israel is seen, for example, even in the United States. ये एक राजनीतिक मुकाबला भी है, इसको हम सीधा मुकाबला करेंगे, हम पीछे हटेंगे नहीं. From opposition meet plans to India protest, the Congress is in complete denial as Rahul Gandhi is convicted. The Congress is in huddle mode, set to appeal to a higher court.
Akhilesh Yadav first, then Naveen Patnaik, and now it's Kumaraswamy. Big buzz of Mamta's series of meetings. Prime Minister Modi heads to Varanasi, set to inaugurate a plethora of projects. At the UN, India shows Pakistan the mirror, warns against its Kashmir propaganda. And vandalism by Khalistani extremists is raised in the House of Commons, but will the UK act? Well, ahead of the assembly elections that are scheduled for Karnataka, the Union Home Minister Amit Shah has arrived at B.S. Yediyurappa's residence in Bengaluru. Amit Shah is meeting BSY and his son Vijendra for breakfast to discuss poll strategy with the two of them. Let's go across live to Prajwal, who has more details on this. Prajwal, this meeting, of course, is going to be extremely important given the fact that, Karnataka heads into polls, and for the BJP, it has been a divided house as far as the state is concerned. Now, the BJP also has its own set of problems, especially in the state of Karnataka, with many warring factions within the BJP party itself, and mainly of late there has been a war of words between the BJP National Secretary C.T. Ravi and also B.Y. Vijayendra too, over the kitchen politics and over the decision of the tickets. But also in the larger picture for the BJP, two Vijay Sankalpa Yatras were stopped, mainly one in Chikmagaluru in Mudigere, and secondly the other in Davangere as well recently. And this turned out to be a massive embarrassment for the party, and this did not go without the notice of Union Home Minister Amit Shah, who had gone on to pull up the top leadership of the BJP party. And he had clearly sent out a warning to C.T. Ravi, stating that no sort of remark should be made against B.S. Yediyurappa or his family as well, because somewhere the Congress in the state of Karnataka are cashing on this and stating that B.S. Yediyurappa as well as his family is being ignored, and now the BJP wants to put him into prominence only to go on and gain the Lingayat voters and the Lingayat vote bank too. And this is something which can definitely not be neglected by the BJP party. So this was the first instruction of Union Home Minister Amit Shah. Secondly, he's also gone on and spoken that there should be no sort of controversy when the Vijay Sankalpa Yatra is taking place, especially among the ticket aspirants. And wherever there is indiscipline, those ticket aspirants should not be given a party ticket. This is the sort of message which has been put out by Union Home Minister Amit Shah, especially against MP Kumaraswamy, who is the sitting MLA from the BJP, from the Mudigere Assembly constituency, where the BJP workers themselves are going on and conducting an open revolt against the MLA, stating that no matter what, a ticket should not be given because BJP stands for prosperity and development. But MP Kumaraswamy was nowhere to be seen in the constituency for the past 4 years as well. And apart from which, now they are also stating that the tainted MLA from Channagiri, Madal Virupakshappa, who was caught in the bribe gate scam, where his son Madal Prashant was taken into custody, his supporters and his followers caused a lot of problems for a MP, for a sitting MP GM Siddeshwara, as well as MLA MP Renuka Charya. Both of them were gerawed by the BJP workers, and they were so aggressive. The supporters of Madal Virupakshappa were so aggressive that they wanted to topple their car off, and the police had to intervene. And therefore the BJP High Command, watching this closely, has stated that there should be no sort of problem for the Vijay Sankalpa Yatra in the state of Karnataka as well, and they should go on and cover the length and breadth of the entire state of Karnataka and make sure that it happens, and tall leaders like B.S. Yediyurappa should not be insulted. Now going on and trying to tackle the allegations which has been made by the Congress. Today the Congress is holding a Raj Bhavan Chalo movement when the time is there, when Union Home Minister Amit Shah is visiting, where the Congress at the same point of time will take a march from their office towards the governor's office. And therefore now the state leaders are stating that the SC/ST reservation order, the bill which was passed in the winter session of the assembly in Belagavi, it should be brought under Schedule 9 so that it gets legal protection as well. This is one of the major demands of the state BJP leaders with Union Home Minister Amit Shah, where he is now, it is being learnt, has gone on to give assurance that it will be included as well, because now the reservation in Karnataka has crossed more than 50%.
and therefore if it is supposed to be legally considered, it should have to be legally provided a protection by bringing it under Schedule 9 of the Constitution, which Union Home Minister Amit Shah had also spoken. And now the BJP wants to make sure in Karnataka that they will not give any other controversies or scams for the Congress to highlight and go to the people as well. And also talks are being held over the manifesto too, and we can expect that within the next week the BJP party in the state of Karnataka will be releasing their manifesto and will be approaching the people. There will be mainly, it is being understood sources within the state that the manifesto will be divided into two parts, one especially for the women and youth and other for the general public as well. So we will need to wait and watch. Prajwal, do stay with us. I'm going to have to interrupt you there. But joining us on the broadcast is Mr. R.P. Singh from the BJP. Mr. Singh, the fact is that Amit Shah arrives in Bengaluru and he chooses first to go to B.S. Yediyurappa's home for breakfast, and there of course he greets his son first. That among party cadres must be sending a message that the High Command at least stands firmly behind the choices that are being made by Mr. Yediyurappa and his son. Is that the message you think that will be going out to the cadre at large? Well, you are reading too much into the subject. The fact is that Yediyurappa is a very tall leader. And then Amit Shah ji or any other leader who goes to Karnataka must visit Yediyurappa ji, and because of for understanding how to go about the election and also drawing out the strategy about the election also. And BJP is a serious party, unlike Congress, whose leaders are more busy with many other affairs. We work round the clock for party, and our cadre work round the clock, and so our leaders also. So Amit Shah ji has gone to Yediyurappa ji's house as part of the election strategy and to discuss the election strategies with him. All right. Mr. Singh, appreciate your speaking to us on Republic TV. Thank you for joining us. So, the BJP over there, of course, saying that we seem to be reading too much into these moves that are being made, but that only time will tell. You are watching Republic TV, and we are continuing to bring you updates right now on what's happening in Karnataka. As the state heads to poll, the Home Minister Amit Shah is in Bengaluru. He had a breakfast meeting with B.S. Yediyurappa and his son. Now, it's been over 150 hours and the Khalistani fugitive Amritpal continues to be on the run. In the latest development, Republic TV has accessed visuals of Amritpal's AKF members wearing bulletproof vests in Jalupur Khera. The youth were armed and trained by Amritpal Singh in the Jalupur Khera. All these people were trained in weapons use against the government. So pictures on your screen are of men who appear to be wearing these AKF jackets at the moment, of course, consuming a meal, but you can see that they are wearing these bulletproof jackets. Now, the allegations that have been made against Amritpal Singh include that he was trying to raise a private army or a private militia in Punjab to fight the Indian government. Now, apart from that, of course, there have also been a seizure of huge amount of arms from Amritpal Singh and his supporters. We have seen country-made pistols as well as other arms being taken from Amritpal and his supporters. Now, pictures on your screen are of the AFK, these pictures, of course, do show how Amritpal Singh has raised this private army, and it appears that they were provided by arms and ammunition, and which were, according to the police, supplied by either arms dealers or drugs dealers who have a huge network in Punjab. Now, even as this happens, of course, the hunt for Amritpal Singh continues. It's been over 7 days and the Punjab police has still not been able to track him. Let's go across, I think, to Amandeep, who has more details on this. Amandeep, to begin with, explain to us what these visuals essentially sort of allude to.
Well, Nupur, these visuals are from Jallupur Kheda, and this is basically belongs to Anandpur Khalsa Fauj. That is Amritpal's own militias. That he was trying to create with that just handing over the arms to the youth and asking them to practicing for the fire, just because he always make the mind of the people along with him that one day they all have to fight against the system, against the government, and for that arms are very much important and they have to practice it. So that he has created a camp of AKF, Anandpur Khalsa Fauj, in Jallupur Kheda itself, where they practice along, where Amritpal used to give them the training for the weapon usage of the weapons. There was a firing range they have set up, and where Amritpal Singh did the counseling of these youth how to mind wash those people and what actually inject in their mind against the nation, against the state. So this all practice were together. And these videos are accessed just because they have made a social media platform that is now blocked by the Indian government. And in fact, these videos were being circulated among the youth so that at least they can incline towards the weaponizing, brandishing the weapons after witnessing these videos. So this is a very big plan of Amritpal Singh, and in fact creating his own militias is a clear-cut indication that one day he's going to open the war against the state and against the nation. And in his speeches, while addressing to the people or to the supporters and the members of Anandpur Khalsa Fauj, he always quote this, that the day is not far that AKF will rule and our Indian army will be washed away from the Punjab and it turned to be the Khalistan. This is the kind of motive and the plans of Amritpal Singh, and step by step he was getting the support of ISI. He was providing the training to use the weapons against the state. He has set up a firing range. Jallupur Kheda itself, not a native place of Amritpal Singh. It turned out to be the headquarter of Anandpur Khalsa Fauj. It turned out to be the center point of Waris Punjab Day. It turned out to be the center point and the headquarter to radicalize the youth against the state. So these are the videos that are actually the evidence of this entire scenario, that how Amritpal Singh is radicalizing the youth and putting weapons in their hands. Yes. All right, do stay with us, Amandeep. In fact, Republic TV has also managed to access an audio tape of Amritpal's uncle Harjeet Singh. Listen into what he said. पपल जी एक काम करो, मेरा रद्दा वे मैं ते ना आज रात नूं जां सवेरे गिरफ्तारी दे देनी आ, ते मैं लगा फोन करन, ते मैं IG साहब जिहड़े भारगवाज नहीं आ उन्हां नाल भी गल कर लगा, ते मेरा इरादा वा भी मतलब मैं गिरफ्तारी दे दा ते मीडिया दे सामने दईए, क्योंकि मैं अज ना न्यूज़ ते सुन रहा सा भी मतलब जिहड़ा ना ਉਹ ਬਿੱਟੂ ਨਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਕਵਾਸ ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਐ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣੀ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣੀਆਂ ਵਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਵਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਭੱਜੀਏ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਏ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਵਰਗੂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਈਏ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਉਦਣ ਇਹ ਸੀ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਆਪਾਂ ਉਦਣ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਾਂ। ਉਦਣ ਜੇ ਆਪਣਾ ਵਹੀਰ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਵਹੀਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਵਹੀਰ ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਕੈਂਸਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਹੀਰ ਤੇ ਜਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦਈਏ, ਸਾਰੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਈਏ ਟੌਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ। ਕੈਮਰੇ ਕੁਮਰੇ 4 ਸਬਨੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣੀ ਲੈਣੀ ਤੇਰੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। Amandeep, coming back to you on this audio that we have now accessed. In this audio, it is extremely clear that Amritpal's uncle seemed to suggest that they should surrender. Who is he speaking to in this audio? Well, Nupur, this audio message was recorded on intervening night of 19th and 20th of March, when Amritpal's uncle Harjeet Singh supposed to surrender before the police. And in fact, before giving him into the custody of police, he has recorded a message for the Papalpreet as well as for Amritpal and posted them. And in that message, he was clear-cut saying that there is no use of to be the fugitive of the police. You cannot
not run for the longest time, you will be apprehended. So my request is to kindly surrender before the police. That turned out to be in the favor of Amritpal and his group. Now, when he's on the run, people are talking about him that he turned to be an absconder. He's afraid of the police arrest, and in fact, the Varis Punjab is getting defamed. And in that audio, in the last word, he said that I am going to surrender, and I suggest Papalpreet and Amritpal, they both were together. I suggest both of you to surrender before the police. That would be much, much better. Otherwise, you have to face the consequences, and you cannot hide from the police net for the longest time. There are cameras installed all around you, and your locations will definitely be tracked by the police. So this is the last audio message that has been sent by the Uncle Harjeet Singh to Amritpal and Papalpreet. Both are absconding, and Uncle Harjeet Singh is saying to surrender is the best option before the police. And after sending this audio message to Papalpreet and Amritpal, immediately Harjeet Singh has given his custody to Amritsar police, and in fact later NSA has been imposed against him. But the point is that Amritpal and Papalpreet, they both are absconding, and in fact they are not in touch with any of other person. They are running away from the police net, and in fact they are not listening to their own people who were from the very first day turned out to be the driving force of Amritpal, Varis Punjab and Papalpreet. But now they have turned separate from every thought of the Varis Punjab organization, and they have started taking their own decisions. And that is the reason till the date they are absconding, they are fugitive, right. They are not landed in the police net. Yes. All right. So the police, of course, is still looking for Amritpal and his accomplice, now believed to have gone to Haryana, and thereafter, of course, we are now also learning that there is a high alert that's been sounded in Uttarakhand as well. Thank you very much for joining us. And here's a look at what else is making news this morning. Prime Minister Modi will address the One World TB Summit on World Tuberculosis Day at the Rudraksh Convention Centre in Varanasi today. During the event, Prime Minister Modi is set to launch various initiatives. The PM will also award select states and UTs and districts for their progress towards ending TB. Ahead of the Karnataka Assembly elections, Union Home Minister is set to attend regional conference on drug trafficking and national security for the southern states, UTs in Bengaluru. Amit Shah will also lay the foundation stone of Shekhar Samruddhi Saud and inaugurate various development works of Cooperative Ministry in Bengaluru. Now, the Congress has called for an urgent meeting of its steering committee members, the PPCC presidents, CLP leaders and frontal organisation chiefs at the party headquarters in Delhi at 5 this evening. Party President Mallikarjun Kharge will preside over this meeting. After the Congress leader Rahul Gandhi was sentenced to 2 years imprisonment by a local court in Gujarat, Surat, in a criminal defamation case, Rahul Gandhi's legal team advised him not to attend Parliament. Congress Rajya Sabha MP Pramod Tiwari has submitted a suspension of business notice under Rule 267 in the Parliament to discuss the government's failure in constituting a JPC to investigate the Adani Group. Yesterday, the opposition leaders had marched to the Ambedkar statue demanding a probe into the matter. H.D. Kumaraswamy will be meeting West Bengal's Chief Minister Mamata Banerjee today, a week after her meeting with the Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav. The meeting will be held at Banerjee's residence in Bhawanipur at 4 this evening. The two leaders will discuss the present political situation in the country and the way forward to defeat the BJP in 2024. The court will hear former Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia's bail application today in connection with the Delhi excise policy case. In the last hearing, Sisodia had told the court that he had cooperated with the CBI's investigation into the excise scam case, and none of the searches had revealed any incriminating evidence against him. The SIT investigating into the TSPSC exam paper leak case has issued notices to the BJP state president Bandi Sanjay. Bandi Sanjay had alleged that several leaders of the ruling BRS are involved in the TPSC's exam paper leak case that took place over a week ago. The SIT has summoned the BJP leader for questioning today.
The Union Finance Minister Nirmala Siddaramaiah is set to move the Finance Bill 23 in the Lok Sabha today. The move will give effect to the financial proposals of the central government for the financial year 23-24 to be taken into consideration. Indigo Airlines, in a statement on Thursday, expressed their regret for the inconvenience caused to other passengers after 2 passengers were booked for being drunk and misbehaving with the crew. Now, amid the massive crackdown on the Varanasi Punjab, the chief Amritpal Singh, Khalistan sympathizers have staged protests in 4 countries. In response, India dealt with the situation with a series of powerful moves as they continued to fight back. A sweeping crackdown against Khalistan ideologue Amritpal Singh and his aides began on March 18. The very next day, Khalistani elements in the UK, US, Canada and Australia hit the streets to protest against the crackdown. In London, a Khalistani mob went all out, from smashing windows at the Indian High Commission to targeting Indian flag. They did it all. The same Khalistani mob went on a rampage on Wednesday. But Indian citizens fought back. Several Indian diaspora groups gathered for a festive demonstration outside the India House to show solidarity with the Indian mission. Indian flags could be seen waved about as around hundreds of Indian origin people chanted slogans such as Bharat Mata Ki Jai and danced to popular Indian tunes Jai Ho and Rang De Basanti at We Stand By High Commission of India demonstration. It's my duty to come in support of India and the Indian government of what happened last Sunday. I think it's very important that we express our disappointment and anger at the insult of our union flag, and also it's a real, because this is the Indian flag is in our heart, and to insult it in the way it was done last Sunday, that's the reason why I'm here, to express my disappointment and anger at what's going on. And we all stand united under this flag. The US and UK issued assurances to provide safety to Indian missions and the diplomats posted there. But will they fulfill their promise is what remains to be seen. Bureau Report, Republic TV. You are watching Republic TV. We slip into a very short break. On the other side, we bring you more news, including the Congress party, of course, will be holding a series of meetings with opposition leaders. And at the UN, India shows Pakistan the mirror, warns against its Kashmir propaganda. Eleven associates of Amritpal are to be produced here at Baba Bakara Court Complex here in the Amritsar district. Several of them have been arrested under the Arms Act, while 4 others are facing the different charges. They were sent to 4 and 3 days custody. The anti-riot police along with the rapid action force have been deployed here at the court complex to ensure that there is no law and order situation emerging out of it. एक बात बताइए ना, इतने माउंटेन्स आपने चढ़े, इतने कॉन्टिनेंट्स पे इंक्लूडिंग एवरेस्ट, सबसे मुश्किल कौन सा था ये बताइए? Sir, I would say Everest is always the difficult one. हालांकि lot of people say sir, Everest में आजकल हर कोई चढ़ रहा है, but let me tell you sir, Everest remains Everest. Everest is the highest mountain in the world and it will remain so. And I have find Everest to be the most difficult. Most difficult. Most difficult sir. Ultimately crevasses उस खुम्बू ग्लेशियर में आपको क्रॉस करने हैं. Ultimately वो लोत्से फेस में जो 70 डिग्री की वॉल है वो आपको चढ़नी है. डर लगा कभी? सर, I think डरना भी जरूरी है सर, बिकॉज डर जब आपको लगता है आप सतर्क रहते हैं. The opinion about Israel within the Indian population is much more favorable vis-a-vis how Israel is seen, for example, even in the United States.
There is a known phenomena here that Israelis after military service, they choose to come to India, what I call a full immersion visit. So they don't come five-star hotels. They go backpackers, they want to live, they go to Vipassana, and they want to be part, I think, and parcel of the culture, to live like Indians. 30, 40 years, Israelis have been doing it. Now it's the second generation. I see the parents here coming and bringing their teenager children to show them their experience from India when they were after military service. आपने कर्नल जमाल कौन कौन से माउंटेन्स क्लाइंब करे ये बताइए। एवरेस्ट आप 3 बार चढ़ चुके हैं? यस। अब आप मुझे कॉन्टिनेंट वाइज बताइए कौन से कॉन्टिनेंट की टॉलेस्ट पीक थी जो आपने चढ़ी? Climbed sir Kilimanjaro, that is Africa's highest mountain. That was my first mountain. Then obviously sir I went to Elbrus, that was Russia sir. That is highest mountain of Europe sir. That is Mount Elbrus. So then I went to Aconcagua, that is the highest mountain of South American continent. Then I went to Carsten's Pyramid, that is Australasian continental shelf. So we went and climbed that. It is supposed to be the Australian highest mountain. And उसके पहले Welcome back. Now, it's been over 150 hours since the Punjab police have been looking for Amritpal Singh. The police now suspect that he could have moved to near the Nepal border, even though a high alert has been sounded in Uttarakhand. Here's a detailed report on the measures that the police have undertaken now to try and track Amritpal Singh. Khalistani fugitive who is still on the run from 18th of March. Now his posters and his photographs has been pasted at Nepal borders in Uttar Pradesh and Uttarakhand. Uttarakhand police and Uttar Pradesh police have sounded a high alert at the Nepal border villages and pressed the police force on the ground with the photographs and the posters of Amritpal Singh to make him identified by the local villagers. Meanwhile, these posters and the photographs has also been pasted at the international border with Nepal and even shared with the SSB also to identify Amritpal Singh, just because last location has been tracked in Haryana's Shahbad, and after that he was remain escaped. And in fact the last location that was tracked by Punjab police was of 20th of March. That means 2 days after he escaped from the police net. But what after that? There are strong apprehensions that he might fled or he tried to fled from Uttarakhand or Uttar Pradesh to Nepal, just because there are strong connections of Amritpal Singh in Nepal that are providing them all kind of support. So posters and the photographs has been pasted at international border in Nepal. The police is in high alert of Uttarakhand and Uttar Pradesh. And still to come at the UN, India shows Pakistan the mirror warns against its Kashmir propaganda. एक बात बताइए ना, इतने माउंटेन्स आपने चढ़े, इतने कॉन्टिनेंट्स पे इंक्लूडिंग एवरेस्ट, सबसे मुश्किल कौन सा था ये बताइए? सर आई वुड से एवरेस्ट इज ऑलवेज द डिफिकल्ट वन. हालांकि लॉट ऑफ पीपल से सर एवरेस्ट में आजकल हर कोई चढ़ रहा है, बट लेट मी टेल यू सर, एवरेस्ट रिमेन्स एवरेस्ट. Everest is the highest mountain in the world and it will remain so. And I have find Everest to be the most difficult. Most difficult. Most difficult sir. Ultimately crevasses उस खुम्बू ग्लेशियर में आपको क्रॉस करने हैं. Ultimately वो लोत्से फेस में जो 70 डिग्री की वॉल है वो आपको चढ़नी है. डर लगा कभी? सर आई थिंक डरना भी जरूरी है सर, बिकॉज डर जब आपको लगता है आप सतर्क रहते हैं. The opinion about Israel within the Indian population is much more favorable vis-a-vis how Israel is seen, for example, even in the United States. There is a known phenomena here that Israelis after military service, they choose to come to India, what I call a full immersion visit. So they don't come five-star hotels. They go backpackers, they want to live, they go to Vipassana, and they want to be part, I think, and parcel of the culture, to live like Indians. 30, 40 years, Israelis have been doing it. Now it's the second generation. I see the parents here coming and bringing their teenager children to show them their experience from India when they were after military service. आपने कर्नल जमाल कौन कौन से माउंटेन्स क्लाइंब करे ये बताइए। एवरेस्ट आप 3 बार चढ़ चुके हैं? यस। अब आप मुझे कॉन्टिनेंट वाइज बताइए कौन से कॉन्टिनेंट की टॉलेस्ट पीक थी जो आपने चढ़ी? Climbed sir Kilimanjaro, that is Africa's highest mountain. That was my first mountain. Then obviously sir I went to Elbrus, that was Russia sir. That is highest mountain of Europe sir. That is Mount Elbrus. So then I went to Aconcagua, that is the highest mountain of South American continent. Then I went to Carsten's Pyramid, that is Australasian continental shelf. So we went and climbed that. It is supposed to be the Australian highest mountain. And उसके पहले एवरेस्ट तो मैं चढ़ ही
चुका था. Then I went and climbed the highest mountain of North American continent, that is Alaska. That name is Mount Denali. So then last was Vinson Massif, that was in Antarctica. Antarctica's highest mountain, because it's a 7th continent. So the highest mountain is Vinson Massif. Armed struggle is the only way. Investing in armed struggle and destabilizing in India with, you know, how they've been operating for the last 30 years. Thank you for tuning in to Friday's edition of Live and Breaking. It's 10:30. I'm Samiksha Srivastava. We'll get you all the top stories over the next half an hour, starting first with the top headlines. नीतिक मुकाबला भी है, इसको हम सीधा मुकाबला करेंगे, हम पीछे हटेंगे नहीं. From opposition meet to pan-India protest, Vadra Congress in complete denial as Rahul is convicted. Vadra Congress in huddle mode is set to appeal to higher court as Rahul goes into hiding. Amidst infighting rumors, Amit Shah at Yediyurappa's residence discuss poll strategy ahead. Akhilesh Yadav first, then Naveen Patnaik, and now it's Kumaraswamy, big buzz of Mamta's series of meetings. Prime Minister Modi heads to Varanasi, set to inaugurate a plethora of projects. It's a big embarrassment for Pakistan. National interrupts discussion on Kashmir at United States asked to leave. All right, to the big focus this morning, Prime Minister Modi would be in home turf today. In fact, we're given to understand that Prime Minister Modi has already arrived in Varanasi, where he would be inaugurating plethora of projects amounting to more than 1,700 crore rupees. So all eyes on Prime Minister Modi's visit to his home turf, Varanasi. We're given to understand that he would be inaugurating several projects as well. Let's go across to Anamika from Bharat, who's there at the venue where Prime Minister would be dedicating a lot of projects. Anamika, take us through what exactly is expected today at Prime Minister's home turf in Varanasi. बिल्कुल समीक्षा, देखिए यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी नवरात्र के मौके पर तोहफों की बारिश करने वाले हैं काशी के ऊपर, और 1780 करोड़ की जो 28 परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण शिलान्यास पीएम मोदी की ओर से किया जाएगा। पीएम मोदी वाराणसी पहुंच भी चुके हैं। फिलहाल जो उनके दो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, उसमें जो पहला कार्यक्रम है वो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में है, लिहाजा पीएम मोदी सबसे पहले वही पहुंचे हैं और वहां पर वो टीबी को लेकर जो एक सेमिनार है 3 दिवसीय, उसका आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ पीएम मोदी को करना है। लिहाजा पीएम मोदी की मौजूदगी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में हो गई है। 12 बजे के आसपास पीएम मोदी की मौजूदगी यहाँ पर होगी और पीएम मोदी यहाँ पर 1780 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे। और देखिए, आपको मंच की जो तस्वीरें दिखा दूं मैं आपको। इसके अलावा देखिए पूरा का पूरा जो पंडाल देख रहे हैं आप, यहाँ पर अभी से यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि पीएम मोदी की आगवानी करने के लिए काशीवासी पहले से ही यहाँ पर उनकी मौजूदगी है। 25,000 से ज्यादा लोग यहाँ पर मौजूद हैं। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का कैंपस है ये, जहाँ पे पीएम मोदी को लोगों को संबोधित कर रहा है। और सबसे ज्यादा बड़ी बात यहाँ पर ये कि पीएम मोदी नवरात्र के मौके पर काशी को रोपवे देने जा रहे हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि रोपवे दुनिया का तीसरा और देश का पहला ऐसा शहर काशी होगा जहाँ पे रोपवे का इस्तेमाल पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए किया जाएगा।
माना किया जाता है कि काशी में चूंकि ट्रैफिक को लेकर बहुत समस्याएं हैं, सकरी गलियां हैं, लिहाजा जो विदेशी पर्यटक आते हैं उनको बहुत दिक्कतें होती हैं। लिहाजा अब रोपवे बन जाने के बाद से उनको ये राहत मिले कि ट्रैफिक से उनको जूझना नहीं पड़ेगा। कहा जा रहा है कि मैक्सिमम कामकाज इसमें कर लिया गया, लेकिन अगले 2 साल में रोपवे बनकर तैयार हो जाएगा और रोपवे के जरिए लोग एक जगह से दूसरी जगह पे कम से कम ट्रैवल कर सकेंगे, समय कम लगेगा और उनके लिए एक अलग अनोखा आकर्षण का केंद्र भी होगा। एक बार तस्वीर एक बार और से दिखा दूं मैं आपको। देखिए मंच पर देखिए आपके जो काशी के स्थानीय जो नेता हैं उनकी मौजूदगी हो गई है। 1 घंटे के बाद पीएम मोदी भी यहाँ पर उनकी मौजूदगी होगी, पीएम मोदी का संबोधन भी होगा। यहाँ पर 9 परियोजनाएं ऐसी हैं जिनकी आधारशिला यहाँ पर रखी जाएगी, जबकि 20 परियोजनाएं ऐसी हैं 200 करोड़ की जिनका आज लोकार्पण किया जाएगा, यानी कि आज ये योजनाएं जनता के सुपुर्द कर दी जाएंगी, जनता के लिए लोकार्पित कर दी जाएंगी। शिलान्यास को लेकर जरूर कहा जा रहा है कि रोपवे के अलावा सिगरा स्टेडियम जो ऑलरेडी काशी में है उसके 2nd फेज का और 3rd फेज का आधारशिला पीएम मोदी की ओर से आज रखा जाएगा। यानी कि जिस तरीके से खेलों को लेकर के पीएम मोदी आज एक बड़ा सौगात देने वाले काशीवासियों को, उसको भी लेकर लोगों में काफी एक्साइटमेंट है। और देखिए यहाँ पे अभी से काफी संख्या में काशीवासियों की मौजूदगी यहाँ पर हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी पीएम मोदी के साथ है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आगवानी की है, पीएम मोदी के स्वागत किया है उनका। इसके बाद वो साथ में ही उनके, और कहा जा रहा है कि यहाँ पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन के बाद पीएम मोदी का संबोधन होगा। और देखिए एक एक करके जो यहाँ के जिले के अध्यक्ष है, बाकी जो क्षेत्रीय अध्यक्ष है, बाकी जो बीजेपी संगठन के तमाम लोग हैं, महिलाएं हैं, उनकी भी मौजूदगी यहाँ पर हो गई है। लेकिन सबसे ज्यादा एक्साइटेड है संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी के वो स्टूडेंट्स जिनके लिए यह ऐतिहासिक मौका होगा जब वो सामने से पीएम मोदी को न सिर्फ देख सकेंगे, सुन सकेंगे, बल्कि उन इंटरेक्शन का मौका मिलेगा। इसके अलावा अगर just stay with us, just to tell our viewers also, this is a convoy of Prime Minister that is just arriving in Varanasi. Shortly, in a while from now, Prime Minister would also be speaking, inaugurating a host of projects amounting to more than 1,700 crore rupees. So these are the first visuals that are just coming in of Prime Minister's convoy that is arriving as we speak. During this event, we understand Prime Minister would be launching various initiatives, which includes the TB Mukt Panchayat initiative, official pan-India rollout of shorter TB preventive treatment and family-centric care model for TB as well. So those are some of the initiatives by the central government. The Prime Minister there having arrived in Varanasi as we speak. Let's go back to Anamika. Anamika, give us a sense, if you can talk to the people around as well, how excited are they as Prime Minister is there at his home turf? बिल्कुल मैं कोशिश करूंगी समीक्षा की मैं बात करूं लोगों से और जानने की कोशिश करूं कि पीएम मोदी की मौजूदगी को लेकर क्या चल रहा है उनके मन में, और मैं उनसे बात करूंगी और जानने की कोशिश करूंगी कि क्या आज सोचते हैं वो पीएम मोदी को लेकर के। आज आप लोग पीएम मोदी को देखने सुनने के लिए आए हुए हैं, क्या चल रहा है आप लोग के मन में? अच्छा चल रहा है कि अच्छा ही देंगे काशी में, और जो भी उन्होंने काशी के लिए किया या भारत के लिए किया बहुत अच्छा किया, आगे भी वो बहुत अच्छा ही करेंगे। काशी को रोपवे मिलने वाला है, ये बड़ी सौगात है पीएम मोदी की ओर से। ये हम लोग के लिए बहुत ही बड़ा सम्मिलित सौगात है, जो हम लोगों ने भविष्य में नहीं सोचे थे कि कभी काशी में ऐसा होगा, पर इतना भी जरूर सोचे थे कि जहाँ मोदी रहेंगे सारा सब कुछ मुमकिन है। मतलब मोदी है तो मुमकिन है। मोदी, और क्या कहना आपको मोदी जी से? आज मोदी जी से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हमारे बनारस में हम लोग सोच भी नहीं सकते थे रोपो आएगा, आ गया, बड़ी खुशी का बात है। बहुत ये जितना काम उन्होंने किया है आज तक कोई सरकार किया नहीं है। हमेशा वो महिलाओं के पक्ष में हमेशा खड़े रहे हैं और आगे भी खड़े रहेंगे, क्योंकि हम लोगों ने समझ लीजिए उनका इतना उत्साह से इंतजार करते हैं। जैसे कहते हैं कि हम लोग अपने बेटे कहीं प्रदेश चले जाते हैं, बहुत सालों बाद आते हैं तो हम लोग इंतजार में आके गड़ाए रहते हैं, बस उसी तरह उल्लास में हम लोग बैठे हुए कि बस वो आए और समझ बस उनके एक झलक के लिए समझ लीजिए कि हम लोग दीवाने हैं। एक झलक के लिए दीवाने हैं काशीवासी पीएम मोदी के लिए, और जो खुशी एक्साइटमेंट है वो फेस पे दिखाई भी दे रहा है, सबके चेहरे पे मुस्कुराहट है। और कहना ये है कि जो तोहफे मिल रहे हैं वो तो है ही एक्स्ट्रा, लेकिन इस बीच बड़ी बात इनके लिए है कि आज उनको पीएम मोदी को देखने सुनने के लिए मिलेगा, ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है। Thank you for giving a sense of the excitement which is very much palpable as we speak. The people there anticipating a Prime Minister's visit to that particular location. The visuals there meanwhile coming on your screens are of Prime Minister's convoy that is seen arriving in Varanasi as we speak. So just a short while back, Prime Minister's chopper landed in Varanasi. The visuals there right now coming in of Prime Minister's convoy. So Prime Minister there who would be inaugurating a lot of projects. This summit we understand is being organized by the Ministry of Health and Family Welfare and Stop TB Partnership which
would be inaugurated by the Prime Minister. And among the host of projects that would be inaugurated also includes foundation stone of the passenger ropeway from Varanasi Kant station. The cost of the project, we understand, is estimated to be more than 600 crore rupees. The ropeway in itself would be more than 300 kilometers in length with 5 stations that would facilitate ease of movement for the tourists, pilgrims and residents of Varanasi. Prime Minister would also be inaugurating foundation stone of a sewage treatment plant that would be built at a cost of more than 300 crore rupees. So a passenger ropeway other than redevelopment work and foundation stone for LPG bottling plant as well. Going back to Anamika, once again take us through those projects that would be inaugurated by the Prime Minister, estimated to be around 1,780 crore rupees. और आप बताइए कि पीएम मोदी आज आ रहे हैं, क्या चल रहा है आपके मन में पीएम मोदी के लिए? मेरे मन में बहुत उत्साह चल रहा है। वो उनके आने का खुशी में हम लोग बहुत मतलब इच्छुक हैं और बहुत उनका इंतजार कर रहे हैं हम लोग कि वो आए हम लोग के बीच में और हमेशा आते रहें। ठीक है, बहुत सारी योजनाओं का तोहफा भी मिलने वाला काशी वासियों को, बहुत तोहफा मिलने वाला। हम लोग आशीर्वाद मोदी जी को हम लोग देखना चाह रहे हैं कि खुशी के बाद निरा रहा है। क्या चल रहा है मन में आज सौगातों को लेकर, क्योंकि आज तो एक बहुत सारी योजनाएं हैं जिसका लोकार्पण होगा, शिलान्यास होगा, और क्या चल रहा है आपके मन में पीएम मोदी के लिए, क्या कुछ कहना है? मन में चला कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो मोदी जी आज जो है आ रहे हैं अपने संसदीय क्षेत्र बनारस जो है, और जो भी योजना का उत्पादन करेंगे जो है वो सबके सामने जो शिलान्यास होगा। देखिए यहाँ पे जो लोग हैं इनके अंदर जो है उत्साह इस बात को लेकर पीएम मोदी को देखने सुनने को मिलेगा। आज सौगातों की बारिश हो रही नवरात्र के मौके पर पीएम मोदी की मौजूदगी में, क्या कहना है? मैं रत्नाकर राज स्वच्छता अभियान संयोजक हूँ और बड़े हर्ष से काशीवासी आज बहुत खुश हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी 1800 करोड़ की सौगात देने जा रहे हैं। पूरे भारत में कहीं भी रोपवे का शिलान्यास नहीं हुआ है। काशी के लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि ये रोपवे का जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज सेवा में उद्घाटन करेंगे। तो काशी के लिए सौभाग्य है ये, और कहा भी जा रहा है कि दरअसल ये जो रोपवे है ये दुनिया का तीसरा और देश का पहला। All right, so Anamika, they're reporting live from Varanasi as we speak. The visuals there beaming live on your screens right now of Prime Minister who's there in Varanasi, a big infra push in Varanasi as he would be inaugurating several projects amounting to more than 1,700 crore rupees, which includes a ropeway and a sewage plant as well. So plethora of projects which also includes foundation stone for phase 2 of the redevelopment work of a stadium that would be laid by the Prime Minister. तो उसमें भारत इससे मुक्त हो जाएगा और उसके लिए कई कदम उठाए गए हैं, कई नए इनोवेशन के साथ, नई इनिशिएटिव के साथ कदम उठाया गया था, जिसका असर अब दिख रहा है कि देश में इस वक्त 13 लाख टीबी के मरीज हैं। और एक निक्षय मित्र करके एक पहल शुरू की गई थी सितंबर से, तो उसमें ऐसा था कि कोई भी व्यक्ति हो या सिविल सोसाइटी या इंस्टीट्यूशन जो टीबी मरीज है उनको गोद ले सकता है, और करीब 74,000 निक्षय मित्र अब तक बन चुके हैं, और जो 10 लाख टीबी मरीज हैं उनको उन्होंने गोद लिया है। तो एक तरफ सरकार के साथ साथ जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, समाज भी आगे आया है, और उनकी भी जिम्मेदारी बनी है कि जो भारत टीबी मुक्त होगा तो उनकी भी भागीदारी हो। तो ये जन भागीदारी के तहत समाज को जोड़ा गया है। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री जो देख रहे थे, जो वहाँ पे स्टॉल लगा है, एग्जीबिशन लगा है, तो किस तरीके से कदम उठाए गए हैं। इसमें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का भी मॉडल है, क्योंकि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर देश में 1.5 लाख है, और वहाँ पर शुरुआती जांच में टीबी पकड़ में आता है। जो आसपास के गांव के लोग हैं वो अगर उनको संक्रमण दिखता है, तो लक्षण दिखता है, तो वो जाते हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में टेस्ट कराते हैं। इसके अलावा जो भी टेस्टिंग किट है, जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, उसकी भी प्रदर्शनी लगाई गई है, उसका भी अवलोकन प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और जो भी जन औषधि केंद्र है वहाँ पे जो सस्ती दवाइयाँ मिलती हैं उसके भी स्टॉल लगे हुए हैं। ये तमाम जो प्रदर्शनी है उसका अवलोकन प्रधानमंत्री कर रहे हैं, और उसके बाद उनको बताया जा रहा है हेल्थ सेक्रेटरी के जरिए कि कैसे कैसे जो टीबी के उन्मूलन के लिए जो कदम है उसको उठाया जा रहा है, उसमें टेक्नोलॉजी कितना बड़ा रोल है। तो निश्चित तौर पे जो भारत अभी जो पहल कर रहा है वो दुनिया भर के लिए रोल मॉडल है,
और उसका असर देखने को मिलेगा। अभी थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री जब पंचायतें को टीबी मुक्त होने का आह्वान करेंगे, उस पहल की शुरुआत करेंगे, तो एक बड़ा मैसेज आएगा कि सबसे पहले पंचायत अपने स्तर पर टीबी मुक्त होंगे और उसमें एक होड़ लगेगी कि दूसरे पंचायत भी उनसे प्रभावित होंगे। और इस तरीके से जिला स्तर पे, जिला के साथ साथ राज्य स्तर पे ये होगा कि टीबी मुक्त होने का एक होड़ लगेगा राज्यों के बीच भी। और इस तरीके से जो 2025 तक टारगेट रखा गया है उसको अचीव करने में मदद मिलेगी। तो इसके लिए जन भागीदारी, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच के तहत, जन भागीदारी के तहत ये कदम उठाया जा रहा है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इसका असर देखने को मिलेगा। मैंने कई जो विदेशी डेलीगेट हैं उनसे बात है, उनका ये कहना है कि जो भारत का रोल मॉडल है वो काफी सफल है और दुनिया के बाकी देश इससे सीखेंगे कि कैसे टीबी के उन्मूलन के लिए जो कदम है उसको उठाया जाए। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री को इस कुछ ही देर में टीबी मुक्त पंचायत पहल सहित विभिन्न पहलों का शुभारंभ करेंगे। और आज वर्ल्ड टीबी डे है और इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी विश्व टीबी शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करने जा रहे हैं। और हम देख सकते हैं कैसे साल 2001 में जब ये स्थापित हुआ था स्टॉप टीबी पार्टनरशिप संयुक्त, हम अपने सम्मानित प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति के लिए वास्तव में आभारी हैं। अन्य गणमान्य व्यक्ति विशेष जिनकी सम्माननीय उपस्थिति का लाभ हमें आज मिल रहा है वे हैं उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, स्टॉप टीबी पार्टनरशिप की कार्यकारी निदेशक डॉक्टर लुचिका डिटियो जी। इनके अलावा हमारे बीच उपस्थित हैं अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय अतिथिगण, राज्यों से आए हुए अधिकारीगण एवं अन्य टीबी हितधारक। इससे पहले कि आज हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करें, मैं माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी से हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वागत और अभिनंदन करने के लिए अनुरोध करता हूं। कृपया जोरदार तालियां बजाते रहें। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। अब मैं स्वागत संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री एवं स्टॉप टीबी पार्टनरशिप के अध्यक्ष डॉक्टर मनसुख मांडविया जी को। वसुधैव कुटुंबकम के संदेश को चरितार्थ करने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इस अवसर पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, स्टॉप टीबी बोर्ड की कार्यकारी निदेशक डॉक्टर लुचिका डिटियो जी, साथ ही वर्चुअल माध्यम से जुड़े राज्य के माननीय राज्यपाल एवं माननीय स्वास्थ्य मंत्रीगण, कजाकिस्तान के माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर अजहर गिनियत, ब्राजील के माननीय उप स्वास्थ्य मंत्री मिस एथेल लियोनोर नोका मैकियल, उपस्थित विशिष्ट जनों, दुनिया के अलग अलग देशों से आए प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों एवं देशवासियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी संस्कृति में
अतिथि देवो भव की बात की गई है। हमारे लिए मेहमान भगवान के समान है। मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूं। The opinion about Israel within the Indian population is much more favorable vis-a-vis how Israel is seen, for example, even in the United States. There is a known phenomena here that Israelis after military service, they choose to come to India, what I call a full immersion visit. So they don't come five-star hotels. They go backpackers, they want to live, they go to Vipassana, and they want to be part, I think, and parcel of the culture, to live like Indians. 30, 40 years, Israelis have been doing it. Now it's the second generation. I see the parents here coming and bringing their teenager children to show them their experience from India when they were after military service. आपने कर्नल जमाल कौन कौन से माउंटेन्स क्लाइम करे ये बताइए। एवरेस्ट आप 3 बार चढ़ चुके हैं? यस। अब आप मुझे कॉन्टिनेंट वाइज बताइए कौन से कॉन्टिनेंट की टॉलेस्ट पीक थी जो आपने चढ़ी? Climbed sir Kilimanjaro, that is Africa's highest mountain. That was my first mountain. Then obviously sir I went to Elbrus, that was Russia sir. That is highest mountain of Europe sir. That is Mount Elbrus. So then I went to Aconcagua, that is the highest mountain of South American continent sir. Then I went to Kassan's pyramid, that is Australasian continental shelf. So we went and climbed that. It is supposed to be the Australian highest mountain. And उसके पहले एवरेस्ट तो मैं चढ़ ही चुका था sir. Then I went and climbed the highest mountain of North American continent, that is Alaska. That name is Mount Denali. So then last was Vinson Massif, that was in Antarctica. Antarctica's highest mountain, because it's a 7th continent. So the highest mountain is Vinson Massif. Armed struggle is the only way. Investing in armed struggle and destabilizing in India with, how they've been operating for the last 30 years, assassinating Indian government officials, attacking military bases. Straight away cutting across to these visuals coming in of Congress workers who are seen marching towards the Raj Bhavan in Bengaluru demanding the SC/ST quota hike to be brought under Schedule 9. Let's go across to Prajwal who's there at the location. Prajwal, take it away. Give us a sense of what is happening on the ground. Audio check, audio check. Now, Samiksha, we are looking at hundreds of Congress workers who are marching in from the KPCC office on Queen's Road towards Raj Bhavan as well. And right now we are approaching, we are approaching a prominent circle nearby Vidhan Saudha, after which they will be taking a turn near the Capitol Hotel and will be moving towards, the Raj Bhavan to meet the governor as well. Now, these are visuals coming in from the Queen's Road in Bengaluru, where hundreds of workers are being led by KPCC President DK Shivkumar, leader of opposition Mr. Siddaramaiah, who are going on and making sure that they will approach the governor and demand that the SC/ST hike in act will be brought under Schedule 9, because this has been a long pending demand of the BJP, the Congress and the JDS as well. And recently we did see that in the month of October there was an ordinance which was promulgated and it was brought into being in December. But so far there has been no sort of development in terms of bringing it under Schedule 9, because technically under the legal gambit of the law there is protection for it legally, because the hike in the SC/ST reservation has now the total number of reservation has gone up to 56% as well. Therefore, as it has gone to 56%, it is now being understood that this will be a very tricky scenario for them to go ahead and make sure that the quota hike is in place for the SC/ST as well. So therefore now the Congress are going on and questioning the
fact as to why has there been no sort of action that has been put in place by the state government as well, because initially a proposal was supposed to be sent by the state government to the center to bring the SC/ST Act under Schedule 9, which gives it the legal, the legal protection. But so far, nothing has been done, and therefore, both the leader of the opposition and well as the KPCC president, Mr. D.K. Shivkumar, went on stated that the government will have to do this, otherwise they will go on and protest. And right now, their demands is that it should be brought under Schedule 9. Otherwise, the government of the government of Basuraj Bommai should be dissolved as well, is something which is now being stated in by the BJP leaders. And the demands are stated that this particular government, that is the double-engine government, is against the SC/STs, is against the Dalits as well, and they're not acting in the best interest of the people too. But all said and done, we will need to look at it as to how they will go on to approach the governor of Karnataka, Thawarchand Gehlot, and then submit a proposal as well. But all that we can say is that this particular march will continue, and the Congress have taken this particular march at a time when the Union Home Minister Amritsar is in the state of Karnataka. Right now he is heralding a meeting out there at the Taj West End now, and it is also being understood that the Congress will only go on and protest, and they will intensify their demands against the Basuraj Bommai-led government. All right, Prajwal, they're reporting live from the location where you see Shivakumar and Siddaramaiah leading that protest towards Raj Bhavan. Tracking that story very closely, slipping into a break for now, but we'll continue with our news breaks on the other side. आपने कर्नल जमाल कौन कौन से माउंटेन्स क्लाइम करे ये बताइए। एवरेस्ट आप 3 बार चढ़ चुके हैं? यस। अब आप मुझे कॉन्टिनेंट वाइज बताइए कौन से कॉन्टिनेंट की टॉलेस्ट पीक थी जो आपने चढ़ी? Climbed sir Kilimanjaro, that is Africa's highest mountain. That was my first mountain. Then obviously sir I went to Elbrus, that was Russia sir. That is highest mountain of Europe sir. That is Mount Elbrus. So then I went to Aconcagua, that is the highest mountain of South American continent sir. Then I went to Carsten's Pyramid, that is Australasian continental shelf. So we went and climbed that. It is supposed to be the Australian highest mountain. And उसके पहले एवरेस्ट तो मैं चढ़ ही चुका था sir. Then I went and climbed the highest mountain of North American continent, that is Alaska. That name is Mount Denali. So then last was Vinson Massif, that was in Antarctica. Antarctica's highest mountain, because it's a 7th continent. So the highest mountain is Vinson Massif. Armed struggle is the only way. Investing in armed struggle and destabilizing India with, how they've been operating for the last 30 years, assassinating Indian government officials, attacking military bases. कर्नल जमाल एक बात बताइए ना, आप वहां पे गए थे एवरेस्ट चढ़ने के लिए? बिल्कुल सर। आपका मिशन था एवरेस्ट चढ़ना? बिल्कुल सर। लेकिन बीच में अर्थक्वेक आ गया तो आप लोगों ने अपना मिशन चेंज कर दिया। आपने बोला कि एवरेस्ट तो ठीक है, अब बाद में चढ़ लेंगे। सबसे पहले लोगों की जान बचाओ। 2015 में when we went, earthquake happened. Then we changed our things to the rescue team and we were there in Everest base camp for around 15 days. हम लोग 45 दिन का हम लोग पूरा सामान लाए थे, राशन लेके गए थे, मेडिसिन लेके गए थे, इक्विपमेंट लेके गए थे। हमने Very good morning, you're watching Live and Breaking. I'm Suesha Sawant with you on the broadcast. We get you all the news and updates from across the country. First, we'll take a quick check of the headlines we're tracking at this hour. राजनीतिक मुकाबला भी है, इसको हम सीधा मुकाबला करेंगे, हम पीछे हटेंगे नहीं। From opposition meet to pan-India protest, Vadra Congress in complete denial as Rahul is convicted.
Badra Congress in huddle mode, set to appeal to higher court as Rahul goes into hiding. Amidst infighting rumours, Shah at Yerurappa residence to discuss poll strategy. Akhilesh Yadav first, then Naveen Patnaik, and now it is Kumaraswamy. Big buzz of Mamta's series of meetings. Prime Minister Modi heads to Varanasi, set to inaugurate a plethora of projects. Another embarrassment for Pakistan. Nationals interrupt discussion on Kashmir at US asked to leave. The whole audience has seen your real face today. What we are seeing in Kashmir, we saw in Washington today. And who sponsored that? How And first up, we get you breaking news that is just coming in after a Surat court yesterday had convicted Rahul Gandhi in the 2019 defamation case, where he has been given 2 years of imprisonment. Though he did get bail, 14 opposition parties have now moved the top court alleging misuse of law enforcement agencies by the central government. Supreme Court will hear the matter on the 5th of April, and this is exceedingly crucial because the opposition has been alleging this against the ruling party, where they have been calling several of these cases against them and the crackdown nothing but political vendetta, and also time and again making the same statement saying that it is the misuse of agencies. Now they've gone one step further as 14 opposition parties have come together. They've moved the top court alleging misuse of law enforcement agencies by the centre, and this matter will be heard in about 11 days from now. That is the 5th of April is when the Supreme Court will be hearing this matter. This, of course, is a catalyst of what we've seen yesterday, where a Surat court had convicted Rahul Gandhi in the 2019 criminal defamation case and also given him 2 years of imprisonment. Soon after, we had seen how the Congress had upped the ante, staging protests across several parts of the country, and many of those opposition parties who don't even support the Congress but came out in Rahul Gandhi's defense, saying that it is the centre misusing the agencies and also casting aspersions against the judiciary. Soon after, we saw those very many responses coming in. Now it has gone one step further. 14 opposition parties who have now come together, so much so that they moved the top court alleging misuse of law enforcement agencies by the central government, and the matter is all set to be heard on the 5th of April. Swapnil Kothari is with me on the phone line. Very good morning to you, Swapnil. How do you look at this development? Because as far as this allegation is concerned, time and again was being made by several opposition parties in isolation in reference to themselves, where they called it political vendetta and had been saying that the centre is misusing the agencies. But now we once again see how it has got them together. 14 parties, they have now taken this matter to the top court that will be heard on the 5th of April. People are entitled to invoke the jurisdiction of the courts for what they think is a violation of their rights, or if they feel that there is a central agency or any of those agencies are being misused. And this is what the opposition parties are doing, that the law is being misused. But they have to remember one thing in their mind, that even if the central agencies are misusing the law, let's take for an example, I'm not saying that they are, but hypothetically, even if they are doing, the judgment is passed by the courts. It is passed by the judiciary. It is not passed by the central agencies. So central agencies are only doing the jobs of presenting the case before the courts. It's the courts which are giving the decision. If a star son is being illegally or inappropriately arrested,
by a central agency. It is the court which is granting the custody, whether the police custody or the judicial custody. It is the court which is extending the custody. So that is where the marked difference lies in the thinking of the people. So every time when somebody who is prominent, whether it be in the field of Hollywood, whether it be in the field of politics, if that person gets a verdict against him or her, to say that this is political vendetta, to say that this is some sort of a witch hunt, to say that this is a misuse of central agencies, is an argument which doesn't work in a court of law. And to file a case on the basis of such a thing, and even to show some 15 cases which you think are a misuse of central agency, is going to be a tall order for the prosecution here, or should I say for the complainants here or the petitioners here, to show that the central agencies are misused, because they'll have to point out in each and every case as a proof to show that, look, this happened in this case and this is where the law was misused, or this particular section should not have been applied and where it was abused. So basically you'll have to show some 15, 16 instances rather than this just one instance of Mr. Gandhi being given a verdict for 2 years. So Suesha, the point is that it is not easy to prove something like this. In fact, it is virtually impossible to show that this is a misuse of central agency or misuse. You point out in this case what has happened, and then the court will say that, sorry, you have to go to the sessions court, not to us. Because that is one of the options I'm sure that they will explore, that is to go in appeal against yesterday's verdict. That's a separate issue. But to go in an omnibus fashion, in a blanket fashion like this, to say that this is a misuse, that means what you are trying to say is that the central agencies are all puppets of the government in power, that even after assuming that they are puppets for a second. Swapna, now that you make this point, I want to take this a step further with you to how you view the larger political landscape ahead of 2024, because the differences between these opposition parties is very, very clear. But once again, this is really becoming an example of how they are now becoming united because of the crackdown on them to target the ruling party. But how is this to be looked at given the charges against them individually, like you're pointing out? Well, the run-up to the 2024 elections is trying to show that there is some sort of a unity between the opposition. But even if there is a unity between the opposition, but it's only on certain issues. It is not on every single issue. Or it is not, there is not a marriage of thought or multiple thoughts which needs to be to prevent a proper opposition to the ruling party. So I don't see any change in the election results in 2024. It is going to be BJP straight ahead, because the opposition does not have a face, a credible face. And that is what is most important. You need a credible face. The credibility of each and every face in the opposition is being lost because of court cases against them, or should I say because of court verdicts against them. To say that the central agencies are misusing the law, that is one thing, but then what you are implying is that the entire judiciary is also against the opposition. Yes. सर, सूखा पड़े या बाढ़ आए, वो तो विधाता के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन जब हमारे हाथ में कुछ चीजें होती हैं, कम से कम उसमें तो हम सूखा ना पड़ने दें, देखिए उसमें तो बारिश आए। मैं माननीय सदस्यगण, ऐसा नहीं है कि मैं कोई शायर हूं, पर इतना मत बोलो कि लोग चुप होने का इंतजार करें। इतना बोलकर चुप हो कि लोग दोबारा बोलने का इंतजार करें। मैसेज फ्रॉम द लोकसभा सेक्रेटरी जनरल। Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on the 23rd March 2023 passed the Appropriation Bill 2023. The Speaker has certified that this bill is a money bill within the meaning of Article 110 of the Constitution of India. I lay a copy of the bill on the table. Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Commerce, Dr. Abhishek Manu Singhvi. Shri Dhananjay Bhimrao
महादिक। Respected Chairman Sir, with your kind permission, I rise to present the 176th, 177th, 178th, 179th and 180th reports in English and Hindi of the department-related Parliamentary Standing Committee on Commerce mentioned against my name in the list of business. Thank you. Reports of the department-related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture, जुगल सिंह लोखंडवाला जी। धन्यवाद माननीय महोदय। मैं विषय संबंधित परिवहन, पर्यटन और सांस्कृतिक संबंधित संसदीय स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन हिंदी अंग्रेजी में प्रस्तुत करता हूं। विदेश बाजारों में भारतीय पर्यटन का संवर्धन, विदेश पर्यटक कार्यालय और भारतीय दूतावासों की भूमिका विषय के संबंध में समिति के 313वें प्रतिवेदन, अंतर्राष्ट्रीय सिफारिश सहकार मुक्त द्वारा की गई कार्यवाही संबंधित 340वां प्रतिवेदन, सागरमाला परियोजना के 319 प्रतिवेदन, कार्यवाही संबंधित 345वां प्रतिवेदन, रेल सुरक्षा आयोग 313वां प्रतिवेदन संबंधित 346वां प्रतिवेदन, भारत पर्यटन के विकास के लिए 326वां प्रतिवेदन और 347वां प्रतिवेदन सभा पटल पे मैं रखता हूं। धन्यवाद। Statements of the Committee on Public Undertakings, Dr. अनिल जैन। धन्यवाद महोदय। मैं आज आपकी अनुमति से मेरे आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की गई कार्रवाई विवरणों के हिंदी और अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूं। Reports of the department related Parliamentary Standing Committee on Consumer Affairs, Food and Public Distribution, श्री बाबू राम निषाद। महोदय जी, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के समक्ष यथा सूचीबद्ध उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के 26वें प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण की प्रति सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। Reports of the Committee on the Welfare of Scheduled Caste and Scheduled Tribes, श्री कामाख्या प्रसाद तासा। सर महोदय मैं आज की कार्यसूची में अपने नाम के समक्ष सूचीबद्ध अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों की कल्याण संबंधी समिति 2022-2023 की। All right, so although the Lok Sabha has been adjourned, we are getting you those live proceedings from the Rajya Sabha as the big story we are tracking of how 14 opposition parties have now come together and moved to the top court alleging misuse of agencies by the centre. The matter is to be heard on the 5th of April. Tracking all the details on the ground and getting us more responses is my colleague Piyush, who's with us on the broadcast right now. Piyush, really to understand these 14 opposition parties, who all are they, and despite their differences, to fight on this, which they believe is a common point with all of them, they have now come together to take on the centre and move the top court. This despite how they continue to cast aspersions against the judiciary. All right, not too sure if Piyush is connected with us, but we are trying to get you those live pictures of Rahul Gandhi as he is making his way to the party headquarters. Those are the details we're picking up. He's making his way to the party headquarters. This, of course, as the Congress is in a huddle. They are deciding what the next step will be as far as the legal battle is concerned. Remember, a battery of lawyers fighting for Rahul Gandhi, all set to challenge the Surat Court's verdict in a higher court. And most importantly, at stake is Rahul Gandhi's Lok Sabha membership. I want to come to Piyush again. I believe he's with us now. Piyush, we stay with these pictures
But the question I was trying to ask you was who these 14 opposition parties are. Despite their differences, they are now coming together because they believe that it is this one common point. As they allege, the centre is misusing the agencies, which is now uniting them. And they've knocked the doors off the top court, this despite the aspersions they cast against the judiciary. Well, certainly this is what we are now given to understand is that now a joint opposition political parties have approached to Supreme Court raising their concerns over the alleged misuse of investigative agencies. And let us also tell to our viewers the names of these political parties. We have accessed the names of these political parties. This is not the first time when these opposition political parties have come on one front against the government. Earlier also they have come. So let us also tell to our viewers who these political parties are. One, Congress, Trinamool Congress, Aam Aadmi Party, Jharkhand Liberation Front, Janata Dal United, Bharatiya Rashtra Samiti, Rashtra Janata Dal, Samajwadi Party, Shiv Sena, Uddhav Faction, National Conference, Nationalist Congress Party, CPI, CPM, DMK. They all have filed a petition in the Supreme Court. Now we'll have to see how the Supreme Court will be looking into their petition. Earlier also we had seen as to how these political parties, these opposition political parties have been holding protests on various issues. In fact, they are the one who have been asking for a JPC to be formed into the Adani matter. And now on the alleged misuse of agencies, these opposition political parties have now come together once again requesting the Supreme Court to take cognizance of this. Also, it is important to highlight that the same group of opposition political parties is also creating ruckus in the House, seeking a JPC to be formed. On the other side, BJP continues to ask for an apology from Rahul Gandhi over his statements which he made there on the foreign land about the country. So the ruckus continues to take place in Parliament, but now opposition political parties have moved to Supreme Court. You would also remember that yesterday a meeting was called in by Sharad Pawar at his residence, and in that particular meeting these opposition political parties had taken part, and the main concerns of these parties was the EVM. Sharad Pawar, Digvijay Singh, Kapil Sibal, they all had come out and they had said that EVM is being tempered, and any EVM machine which faces any kind of error, it certainly suggests that the vote polled on using that EVM machine goes to BJP. So they had cast aspersions once again over the EVM. They had targeted Election Commission. They have also said that they will once again approach to the Election Commission seeking proper answers over the misuse of EVM, and if they do not get satisfactory answers, then they will form their own strategy after that particular reply coming in from Election Commission. So we have seen multiple issues on which these opposition political parties have come on one platform. Once again, we are now seeing these parties approaching to court, and this coming on the very next day when Rahul Gandhi has been convicted by Surat Court, and he continues to maintain that he is not going to apologize, even as he also faces a threat of losing his seat from Wayanad. Right, absolutely. And Piyush, we are picking up more responses on this. Let's listen in. No, I am asking them why they are holding protest, against whom they are. Are they holding the protest against the judiciary? It is the decision, it is the verdict of the judiciary. And many times in the court he has been asked, first of all he has insulted a OBC community, and after insulting the OBC community a case was filed by some individual, and during the course of inquiry he has been many times asked, are you going to apologize, so that probably case could have been closed. He has flatly denied, arrogantly denied that I am not going to ask for any apology. After saying this, how can he say that the court, why they are going against the court judgment? If they want appeal, let them appeal. We don't have any problem. And after all, against whom they are doing this? They are questioning the judiciary. Is it right? And system should not be spoiled, I am telling Mr. Mallikarjun Kharge. जी सर, सूरत कोर्ट ने फैसला दिया, लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी लगातार उसका विरोध भी कर रहे हैं और कह रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच का हवाला देते हुए भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट खड़े हैं। निर्णय का विरोध नहीं होता है, निर्णय की अपील होती है। कभी निर्णय का विरोध हुआ है? कोई पॉलिटिकल पार्टी कह सकती है कि हम कानून को नहीं मानेंगे? कानून का तो पालन किया ही जाता है।
कानून के रास्ते तय होते हैं, उन रास्तों पे आगे चला जाता है। तो इसमें तो वो गलत वही कर रहे हैं। लेकिन विरोध तो लगातार कर रहे हैं सर। जिस तरीके से मीटिंग्स पे मीटिंग्स बुलाई जा रही है, आज मार्च बुलाया है, विजय चौक तक मार्च करेंगे, ऑपोजिशन पार्टीज को साथ में बुला रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाया जाए। फ्रीडम ऑफ स्पीच में किसी भी ओबीसी समाज को गाली दोगे? फ्रीडम ऑफ स्पीच में किसी भी सरनेम को गाली दोगे? फ्रीडम ऑफ स्पीच में लंदन में जाकर भारत का लोकतंत्र का अपमान करोगे? फ्रीडम ऑफ स्पीच में अपशब्द करोगे? फ्रीडम ऑफ स्पीच में मर्यादा नहीं रखोगे? और उसके बाद न्यायिक निर्णय आएगा तो उसके खिलाफ, न्यायालय के खिलाफ बोलोगे? ये फ्रीडम ऑफ स्पीच इस देश में नहीं है। सेशन चल पाएगा? हम तो चाहते हैं सेशन चले, विपक्ष को चलने देना चाहिए। थैंक यू सो मच। And more breaking news just coming in. Delhi police has registered a case in connection with the protests in front of the Indian High Commission in London, which happened on the 19th of March 2023. The case that has been registered under appropriate sections of IPC, UAPA and PDPP Act. A case has been registered after the Ministry of Home Affairs asked the Delhi police to take appropriate legal action. This is the latest step that has been taken by India over what had happened in London and how the Indian flag was targeted at the Indian High Commission. This despite the UK government that has come under a lot of pressure, and how security has also been heightened, where the UK government has promised appropriate action. The next step from the Indian side on the direction of the Ministry of Home Affairs, where the Delhi police has now registered a case in connection with that protest, and most importantly how the tricolour was denigrated at the Indian High Commission in London on the 19th of March 2023. A case that has been registered under appropriate sections of IPC, UAPA and PDPP Act. A case that has been registered after the Ministry of Home Affairs asked the Delhi police to take appropriate legal action. In cognizance of the events that unfurled on the 19th of March in England, where the Indian flag that was flying high at the embassy, at the High Commission over there, was brought down by some Khalistani separatists. This cognizance has been taken by Ministry of Home Affairs and has directed the Delhi police officials to take serious action. And as you rightly pointed out, under UAPA sections have been slapped, and PDPP have also been slapped on this particular action that will be taken by Delhi police officials. MHA trying to send in a very, very strong message there, Swesha, to make sure that all said action be taken against such separatists who try to propagate their agenda on foreign grounds. However, we know that there as well the High Commission took serious cognizance and gave a befitting reply by putting out a much larger Indian flag over there, and also the Indian authorities here summoned the British envoy as well, who came and was sought a detailed response. And after that, we even saw that how the security detail was also increased there in front of the High Commission. So India going all out to take action against such separatists, and MHA taking serious cognizance, Suesha, by directing the Delhi police to take the matters in their hand and get justice done. Suesha. But Madhurima, I really also want to understand from you how the Delhi police can possibly impose any jurisdiction of what has happened at the Indian High Commission in London, and despite them imposing these sections, how exactly will this limitation have a bearing on how the tricolour was targeted in London? Well, Suresha, let me explain it to our viewers that, the sections like UAPA, and when the Delhi police will, of course, reach out to authorities over there and explain the seriousness of the sections that have been slammed over here, they will reach out to the authorities over there and, of course, seek action, because it has direct impact over there. And when it happens on the grounds of an embassy or a high commission, it gives the authority to the
Indian police officials as well to take cognizance of the crimes that are committed against their, because there are Indian citizens there as well, and to take cognizance of when the matter is of an Indian flag. So when such serious actions are slapped, when a detailed charge sheet will be filed, these charges will be then taken to the British authorities and further action will be taken. Swesha. All right, we'll track these developments very, very closely. Madhurima, I want to thank you for joining us. We move on to playing out this next 2-minute report as amid the massive crackdown on Varis Punjab, the chief Amritpal Singh, Khalistan sympathizers are staging protests in 4 countries. This in response as India dealt with the situation with a series of powerful moves as they continue to fight back. Getting you all the details. A sweeping crackdown against Khalistan ideologue Amritpal Singh and his aides began on March 18. The very next day, Khalistani elements in the UK, US, Canada and Australia hit the streets to protest against the crackdown. In London, a Khalistani mob went all out, from smashing windows at the Indian High Commission to targeting Indian flag. They did it all. The same Khalistani mob went on a rampage on Wednesday. But Indian citizens fought back. Several Indian diaspora groups gathered for a festive demonstration outside the India House to show solidarity with the Indian mission. Indian flags could be seen waved about as around hundreds of Indian origin people chanted slogans such as Bharat Mata Ki Jai and danced to popular Indian tunes Jai Ho and Rang De Basanti at We Stand By High Commission of India demonstration. It's my duty to come in support of India and the Indian government of what happened last Sunday. I think it's very important that we express our disappointment and anger at the insult of our Union flag, and also it's a real, because this is the Indian flag is in our heart, and to insult it in the way it was done last Sunday, that's the reason why I'm here, to express my disappointment and anger at what's going on. And we all stand united under this flag. The US and UK issued assurances to provide safety to Indian missions and the diplomats posted there. But will they fulfill their promise is what remains to be seen. Bureau Report, Republic TV. Bureau Report, Republic TV. With that, we slip into a short commercial break. On the other side, we also get you details of what is happening as far as Mamata Banerjee reaching out to other opposition leaders is concerned. It was first Akhilesh Yadav, then Naveen Patnaik, and now it is Kumaraswamy. Big buzz of the series of meetings that Mamata Banerjee is doing. Thank you very much. We have the freedom of speech. Don't say so cheap. God bless you. Don't God say so bless you. cheap. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. We still love you, sir. Also, another embarrassment for Pakistan. Nationals interrupt discussion on Kashmir at United States and they were asked to leave. The struggle is the only way. Investing in armed struggle and destabilizing India with, how they've been operating for the last 30 years, assassinating Indian government officials, attacking military bases.
कर्नल जमाल एक बात बताइए ना, आप वहाँ पे गए थे एवरेस्ट चढ़ने के लिए। बिल्कुल सर। आपका मिशन था एवरेस्ट चढ़ना। बिल्कुल सर। लेकिन बीच में अर्थक्वेक आ गया तो आप लोगों ने अपना मिशन चेंज कर दिया। आपने बोला कि एवरेस्ट तो ठीक है, बाद में चढ़ लेंगे। सर सबसे पहले लोगों की जान बचाओ। 2015 में when we went earthquake happened, then we changed our things to the rescue team and we were there in Everest base camp for around 15 days. हम लोग 45 दिन का हम लोग पूरा सामान लाए थे, राशन लेके गए थे, मेडिसिन लेके गए थे, इक्विपमेंट लेके गए थे। हमने फिर वो सारी चीजें पूरी जनता जो वहाँ पे थी, पूरे क्लाइंबर्स जो वहाँ पे थे उनके लिए खोल दिया। क्लाइंबिंग से ज्यादा नाम हमें जब हमने रेस्क्यू किया है उससे मिला, और वो एक शायद हमारा टाइम था जब हमने एवरेस्ट को या एवरेस्ट बेस कैंप में हमने वो वापस दिया है पहाड़ को। ये एक राजनीतिक मुकाबला भी है, इसको हम सीधा मुकाबला करेंगे, हम पीछे हटेंगे नहीं। From opposition meet to pan-India protest, Vadra Congress in complete denial as Rahul is convicted. Vadra Congress in huddle mode set to appeal to higher court as Rahul goes into hiding. Amidst infighting rumors, Amit Shah at Yediyurappa's residence discusses poll strategy. Akhilesh Yadav first, then Naveen Patnaik, and now it's Kumaraswamy, big buzz of Mamta's series of meetings. Prime Minister Modi heads to Varanasi set to inaugurate a plethora of projects in hometown. Thank you very much. We love the freedom of speech. Don't God, sound so cheap. God bless you. Don't God sound so bless you. cheap. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. We still love you, sir. Another embarrassment for Pakistan nationals interrupt discussion on Kashmir at US asked to leave. A very good morning. We are live and breaking. I'm Samiksha Srivastava. We are tracking all the latest on Amritpal Singh, who still remains untraceable. We're given to understand that an alert has been sounded in several districts of Uttarakhand, which includes Dehradun, Udham Singh Nagar as well. Meanwhile, posters have also been put up, not just in Uttarakhand, but near the Nepal border as well. This, of course, after officials say that there are speculations that Amritpal could have crossed over to Nepal. The visuals there on your screens right now are the exclusive visuals that we have received of the AKF members of Amritpal Singh, who are seen with bulletproof vest in the region. The youth armed were trained by Amritpal Singh in Jalupur Khera. All were trained for usage of weapons against the government. So the visuals there on your screens that we've accessed are the exclusive visuals of Amritpal Singh's aides, his supporters, who are seen holding arms and even practicing in Punjab's village where his ancestral home is located. So that is the location where the supporters of Amritpal Singh were given massive training. Let's go across to Amandeep first, who's joining us and getting us all those details. Amandeep, if you can put this into context, we've accessed those visuals of the members of Anandpur Khalsa Force of Amritpal Singh. What does this really indicate in terms of the kind of training that was given to the aides of Amritpal and the support which in all probability that he received from Pakistan ISI handlers? Well, Samiksha, these videos are the evident
evidence of that how AKF is preparing and be armed by the youth and getting practiced with the at a firing range in Jallupur Kheda itself, just because that turned out to be the headquarters of Anandpur Khalsa Fauj, and in fact how they are preparing themselves to fight against the system whenever it is required. Amritpal Singh has very clearly conveyed to the entire members of AKF that one day there has to be need, and one day the day is not far that you have to use the weapons against the system for your own to make your own Khalistan out of Punjab, and that is the reason they have set up a firing range inside Jallupur Kheda nearby a river, and in fact the practice was on, and this was the evidence of that entire practice, firing practice by the members of AKF. They all are close associates of Amritpal Singh. Slowly, gradually, he is indulging more and more youth into Anandpur Khalsa Fauj and handing over and putting weapons into their hands and putting him into the practice. They have a huge camp also. Yes, Samiksha. Amandeep, just a quick follow-up question. We understand that Amritpal Singh could have crossed over to Nepal as well. Is that a strong possibility that the Punjab police is looking at when we talk about the whereabouts of Amritpal Singh? Very high possibility, Samiksha, very high possibility. Just because during the course of investigation, Punjab police has received a very concrete evidence that Amritpal Singh is having very strong connections in Nepal, and that was provided by ISI. Some ISI agents are sitting in Nepal. They are providing all kind of assistance, including financial and manpower to Amritpal Singh. And in fact, that is on record, and that the police is having the evidence for that. And that is the reason the high possibility is that from Haryana, Amritpal might have moved towards the Nepal border to be into the safer zone to avoid the arrest of Punjab police. And in fact, that is the reason Punjab police has sounded the alert to Uttarakhand police and UP police, and further they have sounded the alert at all international borders of Nepal. And even the posters and the photographs of Amritpal Singh has been put out at the borders and distributed among the villages nearby Nepal, and also that photos and posters has been given to the SSP that is deployed at the Nepal border as well to verify the location of Amritpal Singh. The possibility is high that from Haryana he must have moved towards the Nepal border. Yes. Amandeep, thank you for those leads. So, Amandeep getting us all those leads on Amritpal Singh. We understand that he could have crossed over to Nepal. This, of course, posters have also been put out, not just at the Nepal border, but in several districts of Uttarakhand as well. But Republic has an exclusive clincher there on the leads on Amritpal Singh. We've accessed, in fact, the audio tape of Amritpal Singh's uncle, who's heard speaking to Amritpal Singh's supporters, saying that Amritpal Singh must surrender before the cops. Now, this audio tape that we've accessed is from the intervening night of March 19th or the March 20th, when Amritpal's uncle surrendered before the Punjab police. कपल जी एक काम करो, मेरा इरादा वा भी मैं ते ना अज रात नूं जां सवेरे गिरफ्तारी दे देनी आ, ते मैं लगा फोन करन, ते मैं IG साहब जिहड़े भार्गव जी ने उन्हां नाल भी गल करन लगा, ते मेरा इरादा वा भी मतलब मैं गिरफ्तारी दे दां ते मीडिया दे सामने दईए, क्योंकि मैं अज ना न्यूज़ ते सुण रिहा सां भी मतलब जिहड़ा ना बिट्टू ने बेनते का वो बहुत बकवास मारन दिया है जी। वो कहता मैं गिरफ्तारी देनी, मैं भज मतलब हुण भज्जा फिरदा वा, तो इहो जिहियां गल्लां लोकां दे विच भी जाणियां वा, ते मेरा इरादा वा भी आपां भज्जीए ना इह गल तो, क्योंकि गिरफ्तारी अज नहीं कल नूं आपां देनी पऊगी, जे कल नूं किते उन्हां ने उदां फड़ लिया तो फिर अपनी बेइज्जती हो इस गल दे विच है। इह करके आपां योधियां अगों गिरफ्तारी दईए जिद्दां देण दा हक हुंदा वा, ते लोकां दे भी मूँह बंद हो जाणगे। गिरफ्तारी तो सिर्फ अपना मकसद उदण इह सी, गिरफ्तारी आपां उदण भी दे सकदे सां, उदण जे अपना वहीर ते जाण दा प्रोग्राम ना हुंदा, हुण वहीर ते अपने को जाया नहीं जाना, वहीर ते आलमोस्ट कैंसल ही हो गया काम, इस करके जो अपने को वहीर ते जाया ही नहीं जाना तो गिरफ्तारी आपां दईए, सारे ने मीडिया नूं सद लईए टौर दे नाल, क्योंकि ये गल जिहड़ी है ज़्यादा दिन भज्या नहीं जाना इत्थों, कैमरे कुमरे 4 बने लगे आ, तो इस करके मेरी तो तुहानूं ये बेनती आ भी भाई साहब तेरे नाल ही होने, पहले उन्होंने भी सुनी लैनी तेरी गल, तो इस करके मेरा वीर जिहड़ा वा इहदे ते गौर करो, ठीक है। All right, so there you heard that clincher audio tape that we've accessed, in which we can hear Amritpal's uncle, also an aide of Amritpal, who's also a Khalistani supporter, speaking to Amritpal Singh, saying that he must surrender before the Punjab police. And moving on to the other big story we've been tracking, this one that's coming from the US, where
Pakistanis were seen interrupting a discussion on the transformation of Kashmir in Washington DC's National Press Club on Thursday. In a video that we've accessed, a visibly agitated Pakistani official appears to be yelling at the speaker during the discussion, after which he was escorted out. At that time, another Pakistani was seen also being escorted out, shouting freedom of speech. Now, the Pakistani gentleman was then promptly escorted out as well. Notably, the International Center for Peace Studies hosted a panel discussion which was titled Kashmir from Turmoil to Transformation. So the visuals there on your screens where you see how the Pakistani was seen trying to interrupt that conversation which was taking place, a conversation that was happening on the Kashmir matter. Let's take a closer look at this visual that we've accessed, and then we go across to a key attendee from that event. Thank you very much. We have the freedom of speech. Don't say so cheap. God bless you. Don't say so cheap. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. We still love you, sir. Thank you. Thank you. God bless you. The whole audience has seen your real face today. What we have seen in Kashmir, we saw in Washington today. And Who sponsored that? how cruel, how people are. Hindu, Indian. All right, so there you heard how this Pakistani official was seen interrupting that discussion which was happening. We are being joined by Sapna Raina. She was present at this event. She's joining us live from Washington, D.C. Firstly, thank you for speaking to us. For our viewers, if you can once again tell us what was this event exactly all about and what really transpired just moments after it started? Yeah, good morning. The event was basically just informing and talking about the transformation in Kashmir from turmoil to where we are now, all the development that has happened. And the key speakers, Tausif Rana and Mir Junaid, who had come from Kashmir, so they were going to let the audience know first-hand information as to what the developments in Kashmir have been like, what the, what has happened post-abrogation of Article 370, what the current situation is like, and what they were aspiring and would like to see in Kashmir. Essentially, that's what the event was all about, is just getting the true story out and letting the world know what is happening at the present moment, present time in Kashmir. So we understand it was a positive discussion which was happening, which talked about abrogation of Article 370. But tell us, what was this Pakistani official was trying to portray in this event, and how exactly did he try to interrupt that discussion that was happening? So as expected on any event that is organized here, as we always expect some kind of, there'll be some kind of interruption, some kind of sabotage, there'll be people there who would try to create a ruckus there. So essentially the only agenda, which was like crystal clear to me, is they just wanted to sabotage the event. They just wanted to create hue and cry there and not let the event be completed and the true story be, let the world know about the true story, what's happening in Kashmir, the jihad, how the minorities were targeted and people of different faith, what all they had to face. So what the agenda is better known to them, but what it felt like to us, to the agenda, is that they just wanted to disrupt the event and not let it, finish, and not let the true story come out, and for people, world press, to know what exactly was and actually was happening in Kashmir, not the false narrative that has been circulated time and again over the decades around the world. Yes. So we understand that this happened at the National Press Club, where we understand proper time would have been given to this Pakistan official as well to talk what he wanted to speak, of course. But if you can help us understand the kind of narrative that he was trying to peddle at this event, did you sense something that there was a negative portrait that he was trying to put out when we talk about the situation in J&K? That is what it clearly looked like, right? So when we walked in, and just before the speakers started, speaking, the moderator set the house rules and made it very crystal clear that we should all be courteous and respectful to the speakers, as they were here to let us know their first-hand, knowledge and impression and what exactly was happening in Kashmir. And the moderator made it very clear that we understand there'll be questions, but we'll be taking handwritten questions, and we will make sure that every one of them, time permitting, will be addressed. So
I'm told that they were like Pakistani nationals, but they were definitely not pro-India or in favor of what was happening or liking what was being said there. They were just initially just trying to cause disruption when they were given a couple of polite warnings that they should not be making side talks, and they'll be given an opportunity to ask a question by putting it on a piece of paper, just like any other member in the audience was. But all of a sudden, when the speaker started talking about how, you know, the minorities have been killed, there's been, because of faith, and how cross-border terrorism is also coming through, and kind of what it has resulted in Kashmir, all the jihad and terrorism. That is when these gentlemen got up and got abusive and started using like shame on you, and then pointing at at essentially us and other Indians in the room, like you Hindu from India, things like that, that the freedom of speech and, you know, and certain verbiage or words that they use that I cannot repeat. Even the 4-letter words were being, you know, spewed upon the audience, and when the security had to come in and escort them out of the room. All right. So you're saying that this Pakistani national was also heard hurling abuses. Also tell us, how did the other officials from different countries respond to such unruly behavior by this Pakistan national? Everyone was in shock. You know, you are at an event where you are expected to have a courteous mannerism there, be respectful to everybody, and all of a sudden, out of nowhere, somebody is standing up and shouting and yelling. Everybody was perturbed, to say the least. But I have to make a note that both speakers, they handled it in a very graceful and in a poised manner, and they actually even made a comment, if I can recollect very clearly, that this is exactly what's been happening every time somebody stands up and tries to speak the truth. That's how their voices are muffled and silenced. It has happened back in Kashmir for decades now, and you're seeing it happening right here in Washington, D.C. So that's true. And they were very gracious, and then they're asking them, you know, God bless you. And if you had asked a question, we would have answered it. But that's not what they wanted or what their agenda was. All right. Sapna Rainey, appreciate you speaking to us. So Sapna Rainey there joining us live from Washington, D.C. She also attended that particular event where we saw how this Pakistani national was escorted out of the event. But cutting across to the live visuals coming in right now of Prime Minister there in his home turf, Varanasi. खुशी की बात है कि वन वर्ल्ड टीबी समिट काशी में हो रही है। सौभाग्य से मैं काशी का सांसद भी हूं। काशी नगरी वो शाश्वत धारा है जो हजारों वर्षों से मानवता के प्रयासों और परिश्रम की साक्षी रही है। काशी इस बात की गवाही देती है कि चुनौती चाहे कितनी ही बड़ी क्यों न हो, जब सबका प्रयास होता है तो नया रास्ता भी निकलता है। मुझे विश्वास है टीबी जैसी बीमारी के खिलाफ हमारे वैश्विक संकल्प को काशी एक नई ऊर्जा देगी। मैं वन वर्ल्ड टीबी समिट में देश विदेश से काशी आए सभी अतिथियों का भी हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। साथियों, एक देश के तौर पर भारत की विचारधारा का प्रतिबिंब वसुधैव कुटुंबकम यानी होल वर्ल्ड इज वन फैमिली की भावना में झलकता है। ये प्राचीन विचार आज आधुनिक विश्व को
इंटीग्रेटेड विजन दे रहा है, इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस दे रहा है। इसलिए ही प्रेसिडेंट के तौर पर भारत ने G20 समिट की भी थीम रखी है, वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये थीम एक परिवार के रूप में पूरे विश्व के साझा भविष्य का संकल्प है। अभी कुछ समय पहले ही भारत ने वन अर्थ, वन हेल्थ के विजन को भी आगे बढ़ाने की पहल की है और अब वन वर्ल्ड टीबी समिट के जरिए भारत ग्लोबल गुड के एक और संकल्प को पूरा कर रहा है। साथियों, 2014 के बाद से भारत ने जिस नई सोच और अप्रोच के साथ टीबी के खिलाफ काम करना शुरू किया, वो वाकई अभूतपूर्व है। भारत के ये प्रयास आज पूरे विश्व को इसलिए भी जानने चाहिए क्योंकि ये टीबी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का एक नया मॉडल है। बीते 9 वर्षों में भारत ने टीबी के खिलाफ इस लड़ाई में अनेक मोर्चों पर एक साथ काम किया है, जैसे पीपल्स पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी, एनहेंसिंग न्यूट्रिशन, पोषण के लिए विशेष अभियान, ट्रीटमेंट इनोवेशन, इलाज के लिए नई रणनीति, टेक इंटीग्रेशन, तकनीक का भरपूर इस्तेमाल और वेलनेस एंड प्रिवेंशन, अच्छी हेल्थ को बढ़ावा देने वाले फिट इंडिया, खेलो इंडिया, योग जैसे अभियान। साथियों, टीबी के खिलाफ लड़ाई में भारत ने जो बहुत बड़ा काम किया है वो है पीपल्स पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी। एक अभियान चलाया, ये जानना विदेश से आए हमारे अतिथियों के लिए बहुत दिलचस्प होगा। फ्रेंड्स, हमने टीबी मुक्त भारत के अभियान से जुड़ने के लिए देश के लोगों से निक्षय मित्र बनाने का आह्वान किया था। कर्नल जमाल, एक बात बताइए ना, आप वहां पे गए थे एवरेस्ट चढ़ने के लिए। बिल्कुल सर। आपका मिशन था एवरेस्ट चढ़ना। बिल्कुल सर। लेकिन बीच में अर्थक्वेक आ गया तो आप लोगों ने अपना मिशन चेंज कर दिया। आपने बोला कि एवरेस्ट तो ठीक है, बाद में चढ़ लेंगे, सबसे पहले लोगों की जान बचाओ। 2015 में when we went, earthquake happened. Then we changed our things to the rescue team and we were there in Everest base camp for around 15 days. हम लोग 45 दिन का हम लोग पूरा सामान लाए थे, राशन लेके गए थे, मेडिसिन लेके गए थे, इक्विपमेंट लेके गए थे। हमने फिर वो सारी चीजें, पूरी जनता जो वहाँ पे थी, पूरे क्लाइंबर्स जो वहाँ पे थे, उनके लिए खोल दिया। क्लाइंबिंग से ज्यादा नाम हमें जब हमने रेस्क्यू किया है उससे मिला, और वो एक शायद हमारा टाइम था जब हमने एवरेस्ट को या एवरेस्ट बेस कैंप में हमने वो वापस दिया है पहाड़ को। There is this 26/11 incident, terror attack on Mumbai, and both nations suffered together. Do you think in that backdrop, post that there is coming together
of the two governments and the people to make sure that incidents like that do not happen again. No doubt. I think that challenges, fears of people are pushing them to work together, and I think that the concern, mutual concern of terrorism, especially when in Mumbai they also मरीजों की बहुत मदद की है। ये चैलेंज है टीबी के मरीजों का पोषण, उनका न्यूट्रिशन। इसे देखते हुए ही 2018 में हमने टीबी मरीजों के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की घोषणा की थी। तब से अब तक टीबी पेशेंट्स के लिए करीब 2000 करोड़ रुपए सीधे उनके बैंक खातों में भेजे गए हैं। करीब 75 लाख मरीजों को इसका लाभ हुआ है। अब निक्षय मित्रों से मिली शक्ति टीबी के मरीजों को नई ऊर्जा दे रही है। साथियों, पुरानी अप्रोच के साथ चलते हुए नए नतीजे पाना मुश्किल होता है। कोई भी टीबी मरीज इलाज से छूटे नहीं, इसके लिए हमने नई रणनीति पर काम किया। टीबी के मरीजों की स्क्रीनिंग के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए हमने आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा है। टीबी की मुफ्त जांच के लिए हमने देश भर में लैब्स की संख्या बढ़ाई है। ऐसे स्थान जहां टीबी के मरीज ज्यादा है, वहां पर हम विशेष फोकस के रूप में कार्य योजना बनाते हैं। There is this 26/11 incident, terror attack on Mumbai, and both nations suffered together. Do you think in that backdrop, post that, there is coming together of the two governments and the people to make sure that incidents like that do not happen again? no doubt. I think that challenges, fears of people are pushing them to work together, and I think that the concern, mutual concern of terrorism, especially when in Mumbai they also went after Jewish community, Israelis, of course in the Chabad house. So I think that our cooperation is also based a lot on counter-terrorism. We have to be much tougher as a nation. If a state government does not defend national interest and national security, then the center has to immediately step in. We cannot be so soft and so indecisive that a person like Amritpal and nobody first becomes a national security threat, then becomes so out of control that he organizes a private fully armed battalion around him, attacks state policemen. When the state wakes up, this man Amritpal vamooses and organizes a car chase with thousands of security forces in Punjab. Now we know that drug प्रयासों की वजह से आज भारत में टीबी के मरीजों की संख्या कम हो रही है। यहां कर्नाटका और जम्मू कश्मीर को टीबी फ्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जिला स्तर पर भी बेहतरीन कार्य के लिए अवार्ड दिए गए हैं। मैं इस सफलता को प्राप्त करने वाले सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ऐसे ही नतीजों से प्रेरणा लेते हुए भारत ने एक बड़ा संकल्प लिया है।
टीबी खत्म करने का ग्लोबल टारगेट 2030 है। There is this 26/11 incident, terror attack on Mumbai, and both nations suffered together. You think in that backdrop, post that, there is coming together of the two governments and the people to make sure that incidents like that do not happen again? No doubt. I think that challenges, fears of people are pushing them to work together, and I think that the mutual concern of terrorism, especially when in Mumbai they also went after Jewish community, Israelis, of course in the Chabad house. So I think that our cooperation is also based a lot on counterterrorism. We have to be much tougher as a nation. If a state government does not defend national interest and national security, then the center has to immediately step in. We cannot be so soft and so indecisive that a person like Amritpal and nobody first becomes a national security threat, then becomes so out of control that he organizes a private fully armed battalion around him, attacks state policemen. When the state wakes up, this man Amritpal vamooses and organizes a car chase with thousands of security forces in Punjab. Now we know that drug dealers are giving Amritpal Mercedes SUVs to drive around in. Why? Didn't the security agencies not know about all this till now, or did they allow? If a state government does not defend national interest, then the center has to step in, whether people like it or not. These are not legal matters. These are matters of national security. The United Kingdom is officially telling the people of India, the government of India, that it couldn't care less. The United Kingdom is telling the government of India. NTV. टीवी हारेगा, भारत जीतेगा। और जैसा आपने कहा, टीवी हारेगा, दुनिया जीतेगी। साथियों, आपसे बात करते हुए मुझे एक बरसों पुराना वाकया भी याद आ रहा है। मैं आप सभी के साथ इसे शेयर करना चाहता हूं। आप सब जानते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने लेप्रेसी को समाप्त करने के लिए बहुत काम किया था। और जब वो साबरमती आश्रम में रहते थे, एक बार उन्हें अहमदाबाद के एक लेप्रेसी हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के लिए बुलाया गया। गांधी जी ने तब लोगों से कहा कि मैं उद्घाटन के लिए नहीं आऊंगा। गांधी जी की अपनी एक विशेषता थी। बोले मैं उद्घाटन के लिए नहीं आऊंगा। बोले मुझे तो खुशी तब होगी जब आप उस लेप्रेसी हॉस्पिटल को ताला लगाने के लिए मुझे बुलाएंगे, तब मुझे आनंद होगा। यानी वो लेप्रेसी को समाप्त करके उस अस्पताल को ही बंद करना चाहते थे। गांधी जी के निधन के बाद भी वो अस्पताल दशकों तक ऐसे ही चलता रहा। साल 2001 में जब गुजरात के लोगों ने मुझे सेवा का अवसर दिया, तो मेरे मन में था कि गांधी जी का एक काम रह गया है, ताला लगाने का। चलिए मैं कुछ कोशिश करूं। तो लेप्रेसी के खिलाफ अभियान को नई गति दी गई और नतीजा क्या हुआ? गुजरात में लेप्रेसी का रेट
23% से घट करके 1% से भी कम हो गया। All right, so that is the Prime Minister speaking in Varanasi. This is the World TB Summit that he is addressing. आगे अंकित दस्तावेजों आज संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 6 पर अंकित है। आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 7 डॉक्टर भारती पवार जी। With your permission, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name at serial number 7 in today's revised list of business. Thank you. आइटम नंबर 8 डॉक्टर मुंजुपरा महेंद्र भाई। Honorable Speaker sir, with your kind permission, I wish to lay on the table of the House papers mentioned serial number 8 against my name in today's revised list of business. Thank you, sir. Item number 8A, Shri Mahasachiv ji. Sir, I have to report a message from Rajya Sabha that the Rajya Sabha has elected 10 members to associate with the committee on the welfare of scheduled castes and scheduled tribes. Item number 9, Shri Nihal Chandra Chauhan ji. सूची में मैं अपने नाम के सम्मुख तथा सूचीबद्ध इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति का मूल्यांकन विषय पर एस्टिमेट कमेटी का 26वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी में प्रस्तुत करता हूं। श्री संतोष गंगवार जी। धन्यवाद आदरणीय सभापति जी। मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख सूचीबद्ध सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की गई कार्रवाई विवरण की हिंदी और अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 11 श्री हरीश द्विवेदी जी। श्री ब्रजेंद्र सिंह जी। Sir, I am to present the 42nd, 43rd, 44th, 45th, 46th, 47th and 48th reports, Hindi and English versions of the Committee on Petitions as listed against my name at serial number 11 in today's order paper. 12 श्री किरीट भाई सोलंकी जी। माननीय सभापति जी, मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 12 पर अपने नाम के समक्ष सूचीबद्ध अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जातियां के कल्याण संबंधी समिति 2022-23 के 22वें, 23वें और 24वें प्रतिवेदनों की एक प्रति हिंदी और अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूँ। आइटम नंबर 13 श्री सुनील कुमार सिंह जी। आदरणीय सभापति जी, मैं आज के कार्यसूची में मेरे नाम के समक्ष अंकित 13 नंबर पर विशेषाधिकार समिति का 5वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूँ। धन्यवाद। आइटम नंबर 14 श्रीमती लॉकेट चटर्जी। धन्यवाद स्पीकर महोदय। I beg to present the 26th report, Hindi and English versions of the Standing Committee on Consumer Affairs, Food and Public Distribution as listed against my name in today's list of business. Thank you. Item 15, Dr. Nishikant Dubey ji. मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 15 में मेरे नाम के समक्ष यथा सूचीबद्ध वाणिज्य संबंधी अस्थायी समिति के 176 में, 77 में, 78 में, 79 में, 80 में प्रतिवेदनों की हिंदी और अंग्रेजी प्रति को सभा पटल पर रखता हूँ। 16 श्री तापिर गाव जी। Thank you, Chairman, sir. I raise to lay on the table a copy each of the 344, 345, 346 and 347 report of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture listed against my name at serial number 16 in today's order paper. Thank you. In A, Shri Balashwari Vallabh Nani ji. Sir, I raise to present the 26th, 27th, 28th and 29th reports of the Committee on Subordinated Legislation, Hindi and English version as listed against my name in today's revised list of business. Shri Arjun Ram Meghwal ji. Honorable Chairman, sir, with your permission,
I rise to announce the government business for the remaining part of the 11th session of 17th Lok Sabha will consist of, number 1, consideration of any item of government business carried over from today's order paper. It contains consideration and passing of Finance Bill 2023 and consideration and passing of repealing and amending Bill 2022. Number 2, passing of the following bills. Number 1, the Competition Amendment Bill 2022. Number 2, the Biological Diversity Amendment Bill 2022. And 3rd, the Inter-Services Organization Command, Control and Discipline Bill 2023. Number 3, consideration and passing of the Multi-State Cooperative Societies Amendment Bill 2022 as reported by Joint Committee. Thank you. जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने मामलों के अनुमोदित पाठ 20 मिनट के अंदर व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दें। आइटम नंबर 19, फाइनेंस बिल। माननीय मंत्री जी। Sir, I rise to move that the bill to give effect to the financial proposals of the central government for the financial year 23-24 be taken into consideration. जो सदस्य इसके जी बोलना चाहते हैं, बोले जी। Thank you for giving me this opportunity. I just want to draw and put it into the honourable members' consideration 2 or 3 things which are important. The finance bill actually brought in 10 main provisions which are helpful for the middle class and for the communities as a whole and to do ease of business. 10 of them. But the 11th one, which 11 new ones are being brought in now after the stakeholder consultations, which has helped to improve that the finance bill represents better our society. One amendment is for the GST Council, which is establishing the tribunal. So I want to make sure that is all recorded for the House. But more importantly, 2 things which I want to draw the honourable members' attention is representations have been received that the national pension system for government employees needs to be improved. I propose to set up a committee under the Finance Secretary to look into this issue of pensions and evolve an approach which addresses the needs of the employees while maintaining fiscal prudence to protect the common citizens. The approach will be designed for adoption by both central and state governments. Sir, there is one more thing. It has been represented that payments for foreign tours through credit cards are not being captured under the liberalized remittance scheme, the LRS, and such payments escape tax collection at source. The Reserve Bank is being requested to look into this with a view to bring credit card payments for foreign tours within the ambit of LRS and tax collection at source thereon. Sir, there are many more things which I would like to talk, but I certainly don't want to take you more time. Thank you for giving me this opportunity. प्रश्न है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ, विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 2, 3 और 4, 2, 3 and 4। प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन 2, 3 और 4 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ, संशोधन स्वीकृत हुए। प्रश्न है कि खंड 2 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ, खंड 2 यथा संशोधित
विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 5 प्रश्न है कि मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 5 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 3 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 3 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 4 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 4 विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 6 to 10 प्रश्न है कि मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 6 से 10 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। संशोधन स्वीकृत हुए। प्रश्न है कि खंड 5 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 5 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 6 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 6 विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 11 to 13 प्रश्न है कि मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 11 से 13 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। संशोधन स्वीकृत हुए। प्रश्न है कि खंड 7 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 7 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 8 से 20 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 8 से 20 विधेयक का अंग बने। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 14 to 16 Sir, I move the amendments 14, 15 and 16, sir. प्रश्न है कि वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 14 से 16 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। संशोधन स्वीकृत हुए। प्रश्न है कि खंड 21 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 21 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन 17 और 18 So I move the amendments number 17 and 18. प्रश्न है कि मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन 17 और 18 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। संशोधन स्वीकृत हुए। प्रश्न है कि खंड 22 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 22 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 19 Sir, I move the amendment number 19. प्रश्न है कि मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 19 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ, हवालों के पक्ष में हुआ। संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 23 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ, हवालों के पक्ष में हुआ। खंड 23 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 20 से 23 So I move the amendments number 20, 21, 22 and 23. प्रश्न है कि मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 20 to 23 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ, हवालों के पक्ष में हुआ। संशोधन स्वीकृत हुए। प्रश्न है कि खंड 24 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें,
जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ, हवालों के पक्ष में हुआ। खंड 24 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 25 से 31 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ, हवालों के पक्ष में हुआ। खंड 25 से 31 विधेयक का अंग बने। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 24 प्रश्न है कि मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 24 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ, हवालों के पक्ष में हुआ। संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 32 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ, हवालों के पक्ष में हुआ। खंड 32 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 33 से 41 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ, हवालों के पक्ष में हुआ। खंड 33 से 41 विधेयक के अंग बने। माननीय मंत्री जी, प्रस्ताव प्रस्तुत करें। Sir, I beg to move the motion. प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ, हवालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय मंत्री जी, अब संशोधन संख्या 25 प्रस्तुत करें। Sir, I move the amendment number 25. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 25 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ, हवालों के पक्ष में हुआ। संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि नया खंड 41A विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ, हवालों के पक्ष में हुआ। नया खंड 41A विधेयक में जोड़ दिया गया है। प्रश्न है कि खंड 42 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ, हवालों के पक्ष में हुआ। खंड 42 विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 26। Sir, I move the amendment number 26. प्रश्न है कि मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 26 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ, हवालों के पक्ष में हुआ। संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 43 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ, हवालों के पक्ष में हुआ। खंड 43 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 44 to 49 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ, हवालों के पक्ष में हुआ। खंड 44 to 49 विधेयक का अंग बने। माननीय मंत्री जी, प्रस्ताव प्रस्तुत करें। I beg to move the motion number 66. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ, हवालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय मंत्री जी, अब संशोधन संख्या 27 प्रस्तुत करें। 27। Sir, I move the amendment number 27. प्रश्न है कि मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 27 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ, हवालों के पक्ष में हुआ। संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि नया खंड 49A विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ, हवालों के पक्ष में हुआ। नया खंड 49A विधेयक में जोड़ दिया गया है। प्रश्न है कि खंड 50 to 57 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ, हवालों के पक्ष में हुआ। खंड 50 to 57 विधेयक का अंग बने। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 28। Sir, move the amendment number 28. प्रश्न है कि मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 28 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ, हवालों के पक्ष में हुआ।
संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 58 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 58 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 59 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 59 विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी प्रस्ताव प्रस्तुत करें। Sir, I beg to move the motion 67. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय मंत्री जी अब संशोधन संख्या 29 प्रस्तुत Sir, I move the amendment 29. प्रश्न है कि मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 29 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि नया खंड 59A विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। नया खंड 59A विधेयक में जोड़ दिया गया है। प्रश्न है कि खंड 60 to 80 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 60 to 80 विधेयक का अंग बने। माननीय मंत्री जी संशोधन संख्या 30। Sir, I move the amendment number 30. प्रश्न है कि मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 30 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 81 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 81 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी संशोधन संख्या 31 और 32। Sir, I move the amendments 31 and 32. प्रश्न है कि मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 31 32 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 82 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 82 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी संशोधन संख्या 33। Sir, I move the amendment 33. प्रश्न है कि मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 33 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 83 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 83 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 84 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 84 विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी प्रस्ताव प्रस्तुत करें। So I beg to move the motion 68. प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत किया। माननीय मंत्री जी संशोधन संख्या 34। Move the amendment 34. प्रश्न है कि मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 34 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि नया खंड 84A विधेयक का अंग बना। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। नया खंड 84A विधेयक में जोड़ दिया गया है। प्रश्न है कि खंड 85 to 88 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में वो ना कहें।
मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ, हवालों के पक्ष में हुआ। खंड 85 से 88 विधेयकांग बने। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 35। Sir, I move the amendment number 35. प्रश्न है कि मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 35 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि खंड 89 यथा संशोधित विधेयकांग बने। जो सदस्य के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 89 यथा संशोधित विधेयकांग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 36 and 37। Sir, I move the amendment 36 and 37. प्रश्न है कि मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 36 और 37 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। संशोधन स्वीकृत हुए। प्रश्न है कि खंड 90 यथा संशोधित विधेयकांग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 90 यथा संशोधित विधेयकांग बना। माननीय मंत्री जी, प्रस्ताव प्रस्तुत करें। Sir, I beg to move motion number 69. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 38। Sir, I move the amendment number 38. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 38 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि नया खंड 90A विधेयकांग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। नया खंड 90A विधेयक में जोड़ दिया गया है। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 39। Sir, I move the amendment number 39. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 39 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 91 यथा संशोधित विधेयकांग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 91 यथा संशोधित विधेयकांग बना। प्रश्न है कि खंड 92-123 विधेयकांग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 92-123 विधेयकांग बने। माननीय मंत्री जी, प्रस्ताव प्रस्तुत करें। I beg to move the motion number 70. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 40। Sir, I rest to move the amendment number 40. प्रश्न है कि मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 40 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि नए खंड 123A 123B विधेयकांग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। नए खंड 123E 123B विधेयक में जोड़ दिए गए। प्रश्न है कि खंड 124 विधेयकांग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 124 विधेयकांग बना। माननीय मंत्री जी, प्रस्ताव प्रस्तुत करें। So I beg to move the motion number 71. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें।
मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ, हवालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 41। I move the amendment number 41. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 41 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष हुआ, संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि नए खंड 124A 124B विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ, हवालों के पक्ष में हुआ। नए खंड 124A 124B विधेयक में जोड़ दिए गए। प्रश्न है कि खंड 125 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ, हवालों के पक्ष में हुआ। खंड 125 विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 42। Sir, I move the amendment number 42. प्रश्न है कि मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 42 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ, हवालों के पक्ष में हुआ। संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 126 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ, हवालों के पक्ष में हुआ। खंड 126 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 127 से 130 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ, हवालों के पक्ष में हुआ। खंड 127 to 130 विधेयक का अंग बने। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 43। So I move the amendment 43. प्रश्न है कि मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 43 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ, हवालों के पक्ष में हुआ। संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 131 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ, हवालों के पक्ष में हुआ। खंड 131 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, प्रस्ताव प्रस्तुत करें। So I move the motion number 72. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ, हवालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 44। I move the amendment number 44. प्रश्न है कि मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 44 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ, हवालों के पक्ष में हुआ। संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि नया खंड 131A विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ, हवालों के पक्ष में हुआ। नया खंड 131 से विधेयक में जोड़ दिया गया। प्रश्न है कि खंड 132 से 133 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके विरोध पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ, हवालों के पक्ष में हुआ। खंड 132 to 137 विधेयक का अंग बने। माननीय मंत्री जी, प्रस्ताव प्रस्तुत। So I beg to move the motion number 73. प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ, हवालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 45। So I move the amendment number 45. प्रश्न है कि मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 45 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ, हवालों के पक्ष में हुआ। संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि नए खंड 137A 137B 137C 137D 137E 137F 137G विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ,
हवालों के पक्ष में हुआ। नए खंड 137A, 137B, 137C, 137D, 137E, 137F और 137G विधेयक में जोड़ दिए गए। प्रश्न की खंड 138 से 144 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ। हवालों के पक्ष में हुआ। खंड 138 से 144 विधेयक का अंग बने। माननीय मंत्री जी प्रस्ताव प्रस्तुत करें। मोशन नंबर 74। प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ। हवालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय मंत्री जी संशोधन संख्या 46। So I move the amendment number 46. प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 46 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ। हवालों के पक्ष में हुआ। संशोधन स्वीकृत हुए। प्रश्न है कि नए खंड 144A, 144B विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ। हवालों के पक्ष में हुआ। नए खंड 144A, 144B विधेयक में जोड़ दिए गए। And even as the opposition continues to create a ruckus in Lok Sabha, where you saw the kind of chaos that is unfolding, the opposition upping the ante and also all set to stage a march in the national capital. But what really is happening, as we saw after a Surat court convicted Rahul Gandhi yesterday in the 2019 defamation case, we see 14 opposition parties who are now coming together. They've moved the top court alleging misuse of law enforcement agencies by the central government. Supreme Court is all set to hear the matter on the 5th of April. But the opposition leaving no stone unturned, as they are also demanding the formation of a JPC in the Adani issue, for which they are also staging a protest march in the Parliament complex in the national capital today. We got you those pictures just a short while ago, and we'll continue to get you the latest of what is happening in New Delhi. However, these are the scenes unfolding from the Parliament in the Lok Sabha, where you see how the opposition entered into the well of the House and continued to create ruckus, once again affecting day-to-day business in the Parliament. And pictures just a short while from now of the protest that they are staging in the national capital. In the meanwhile, several responses coming in from both sides. Let's listen in. No, I am asking them why they are holding protest, against whom they are. Are they holding the protest against the judiciary? It is the decision, it is the verdict of the judiciary. And many times in the court he has been asked. First of all, he has insulted a OBC community. And after insulting the OBC community, a case was filed by some individual. And during the course of inquiry, he has been many times asked, are you going to apologize? So that probably case could have been closed. He has flatly denied, arrogantly denied that I am not going to ask for any apology. After saying this, how can he say that the court, why they are going against the court judgment? If they want appeal, let them appeal. We don't have any problem. And after all, against whom they are doing this? They are questioning the judiciary. Is it right? And system should not be spoiled. I am telling Mr. Mallikarjun Kharge. जी सर, सूरत कोर्ट ने फैसला दिया, लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी लगातार उसका विरोध भी कर रहे हैं और कह रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच का हवाला देते हुए भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट खड़े हैं। निर्णय का विरोध नहीं होता है, निर्णय की अपील होती है। कभी निर्णय का विरोध हुआ है? कोई पॉलिटिकल पार्टी कह सकती है कि हम कानून को नहीं मानेंगे? कानून का तो पालन किया ही जाता है। कानून के रास्ते तय होते हैं, उन रास्तों पे आगे चला जाता है। तो इसमें तो वो गलत वही कर रहा है। लेकिन विरोध
तो लगातार कर रहे हैं और जिस तरीके से मीटिंग्स पे मीटिंग्स बुलाई जा रही है, आज मार्च बुलाया है, विजय चौक तक मार्च करेंगे, ऑपोजिशन पार्टीज को साथ में बुला रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाया जाए। फ्रीडम ऑफ स्पीच में किसी भी ओबीसी समाज को गाली दोगे? फ्रीडम ऑफ स्पीच में किसी भी सरनेम को गाली दोगे? फ्रीडम ऑफ स्पीच में लंदन में जाकर भारत का लोकतंत्र का अपमान करोगे? फ्रीडम ऑफ स्पीच में अपशब्द करोगे? फ्रीडम ऑफ स्पीच में मर्यादा नहीं रखोगे और उसके बाद न्यायिक निर्णय आएगा तो उसके खिलाफ न्यायालय के खिलाफ बोलोगे? ये फ्रीडम ऑफ स्पीच इस देश में नहीं है। सेशन चल पाएगा? हम तो चाहते हैं सेशन चले, विपक्ष को चलने देना चाहिए। थैंक यू सो मच। Well, that is what the ruling party has to say. The Congress, on the other hand, is defiant, continues to cry foul at one end, absolutely refusing that Rahul Gandhi will apologize for denigrating India on foreign soil. On the other hand, also raising the formation of JPC on the Adani issue. But most importantly, the conviction of Rahul Gandhi, which has now become the biggest face-off of the opposition with the ruling party. Here's how the Congress is reacting. ये देखो, लोगों को मुद्दे से भटकाने के लिए ऐसी बातें वो कर रहे हैं। पहले आओ ना, कौन इस देश के पैसे लेके भाग गए और कौन LIC और SBI के पैसे लेकर अमीर बने और 2.5 साल में 12 लाख रुपए किसने कमाया, किसकी संपत्ति बढ़ी, इसका जवाब दो। हम इसकी कोशिश कर रहे हैं, आप मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं और बैकवर्ड क्लास का इंसेंट। कांग्रेस पार्टी ने जो बैकवर्ड के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, माइनॉरिटीज के लिए एक हमेशा उनके साथ खड़ी हुई है, उनके साथ लड़ी है। और ये लोग जो मनु के विचार में और विचारधारा में विश्वास रखते हैं, वो क्या बैकवर्ड क्लास के वेलफेयर की बात करते हैं। चलिए। Congress President has convened a meeting of senior leaders. We already analyzed the situations already. Congress President also given his speech. Certainly the verdict was so unfortunate as far as Congress Party is concerned. Definitely we are doing maximum solidarity marches all over India in favor of Rahul Gandhi. No, actually we are seeking an appointment with the President. I think our communication chief will tell the details. That you people can understand that day one onwards, when Rahul Gandhi raised the issue of Adani, the purposeful motive movement from the government India side came to stop anything from Rahul Gandhi's mouth. क्रमांकन कर लिया जाए और जहां जहां अपेक्षित हो विधेयक में परिणामी परिवर्तन कर लिया जाए। सभा की कार्यवाही सोमवार दिनांक 27 मार्च 2023 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। QS and THE, the world's foremost university rankings organizations, have ranked Amity amongst the top 3% universities globally, making it among the very few Indian universities to be included in both rankings. Yet another top ranking for Amity University. We have to be much tougher as a nation. If a state government does not defend national interest and national security, then the centre has to immediately step in. We cannot be so soft and so indecisive that a person like Amritpal and nobody first becomes a national security threat, then becomes so out of control that he organizes a private fully armed battalion around him, attacks state policemen. When the state wakes up, this man Amritpal vamooses and organizes a car chase with thousands of security forces in Punjab. Now we know that drug dealers are giving Amritpal Mercedes SUVs to drive around in. Why? Didn't the security agencies not know about all this till now, or did they allow? If a state government does not defend national interest, then the centre has to step in, whether people like it or not. These are not legal matters. These are matters of national security.
the United Kingdom is officially telling the people of India and the government of India that it couldn't care less. The United Kingdom is telling the government of India that it wants to do business with India, but it will do nothing to defend Indian interests. The London Metropolitan Police says it is continuing with inquiries. On the ground, the reality is the Khalistanis have a free reign. Today, Rishi Sunak and his cabinet must decide and pick a side. They cannot appease Khalistanis on their soil and hope to forge ties with India. They cannot act on every other separatist movement and in fact do everything possible to make sure that the United Kingdom is the center of anti-India activity. The United Kingdom is allowing terrorist groups who target India to run full. And on to international updates now. A Chinese delegation led by Vice Foreign Minister Sun Weidong held further talks in Manila with Philippine counterparts led by Foreign Under-Secretary Lazaro to review overall relations. After a smear campaign against Pakistan's Chief of Army Staff, General Asim Munir, authorities sprung into action and picked up ousted Prime Minister Imran Khan's focal person on social media, Azhar Mashwani. The Federal Investigation Agency, in collaboration with the intelligence agencies and police, have launched a countrywide operation against those social media activists, especially of Khan's Pakistan Tehreek-e-Insaf, following an online campaign against General Musharraf. CCP government and President Xi Jinping are now moving to tighten their grip on the data and capitalize on economically as part of an overhaul of state and party institutions that is likely to change the way China operates for the foreseeable future. Voters in Berlin go to the polls to decide on a proposal that would force the city government to drastically ramp up the city's climate goals. The referendum calls for Berlin to become climate neutral by 2030. This means that within less than 8 years, the city would not be allowed to contribute further to global warming. Police exchanged fire with assailants when they raided one of Rio de Janeiro's favelas to arrest alleged drug traffickers. Reports said as many as 11 people were killed in the violence, but authorities did not immediately confirm any casualties. Raid was tied to drug traffickers originally from the northern state of Para, where more than 40 police officers have been killed since 2021. North Korean state television showed images of missile launches, reporting that they took place earlier this week from 21 to 23 March. That coincides with the last time South Korean authorities said they detected the North launching missile. A 3-day strike by workers in LA Unified School District was scheduled to wrap up, but it wasn't immediately clear if any progress was made in negotiations for higher pay for teachers, aides, bus drivers, custodians, and other support staff in the nation's second largest school system. Police clashed with protesters on Thursday in Paris, where large crowds took to the streets in the first mass demonstration since President Emmanuel Macron inflamed public anger by forcing a higher retirement age bill through Parliament without a vote. The Interior Ministry said the march in the French capital, marred by violence as were numerous marches elsewhere, drew 119,000 people, which was a record for the capital during the pension protests. Chaotic scenes were reported outside Buenos Aires' El Monumental Stadium, where World Cup winners Argentina were facing Panama in a friendly soccer match. Reports suggested soccer fans who had been unable to secure a ticket to the game tried to gain access. Crowd control barriers were seen overturned amid a heavy police presence before kickoff. समय
में से कुछ वक्त निकाला है जिनमें लाभार्थियों से मुलाकात कर रहे हैं और वो वास्तविक लाभार्थी जिनके लिए योजना बनाई गई थी, जिनके लिए योजना धरातल पर पहुंची, उन योजनाओं को उन्होंने स्वीकार करके उनके साथ काम किया योजनाओं और क्या कुछ उनको उसका लाभ मिला, कितना इम्पैक्ट आया है, इसकी जो है ग्राउंड रिपोर्ट जो है प्रधानमंत्री लेते हैं। और यही कारण है कि अभी मंच पर आने से पहले वो लाभार्थियों के विभिन्न समूहों से, विभिन्न प्रकार की योजनाओं से आच्छादित जो लाभार्थी हैं उन समूहों से मुलाकात कर रहे हैं और उनसे सीधे इंटरेक्शन कर रहे हैं। और यही खूबी है कि जो भारत सरकार योजना लेकर के आती है उसका सीधा असर जो गरीबों को से जुड़ता है। गरीब जब उन योजनाओं से जुड़ते हैं, चाहे वो मुद्रा योजना हो, चाहे कर्ज की बात हो, तमाम सारी वो योजनाएं जो समृद्ध रूप करने के लिए काशी को और काशी के लोगों को प्रधानमंत्री। अच्छा आशुतोष, अगर हम अपने दर्शकों को बताएं, स्वस्थ दृष्टि समृद्ध काशी ये जो अभियान है, इसके माध्यम से जो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, यहाँ 500 से अधिक लोगों का मोतियाबिंद का सफल ऑपरेशन हुआ है और काशी वासी इसके लिए ही प्रधानमंत्री के जिस तरह से ये पूरे इस अभियान को सफलतापूर्वक चलाया गया है उसके लिए अभिभूत हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही पहल पर मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश में ही चित्रकूट एक ऐसा स्थान है जहां पर बहुत बड़ा नेत्र चिकित्सालय है। वहां पर संपर्क करके वहां से जो सैटेलाइट तमाम सारे केंद्र यहाँ पर खोले गए, उन केंद्रों के माध्यम से उन मोतियाबिंद के रोगियों का जो है आंखों का ऑपरेशन कराया गया और उसके बाद उन्हें चश्मे आज भी वितरित करेंगे प्रधानमंत्री। और ये एक मुफ्त योजना थी उन गरीबों के लिए जिनकी आंखों में परेशानी है, कैटरेक्ट है, मोतियाबिंद है, लेकिन वो पैसे के अभाव में करा नहीं पाते थे, या कि उन जगहों ऐसे लोगों को जो है पहचान की गई, खोजा गया, उनके दरवाजे से, उनके घर से, मोहल्लों से खोजा गया। उस खोज के बाद जो है उनका निःशुल्क ऑपरेशन करके उन्हें एक नई जीवन ज्योति जो है दी गई, उनकी आंखों में प्रकाश दिया गया। और निश्चित रूप से जब आप किसी की आंखों में रोशनी देते हैं तो आपके अभिभूत होने का मौका जरूर होता है और वही अभिभूत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी है। और सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि ये जो पूरा अभियान चलाया गया आशुतोष, इसमें घर घर जाकर 1 साल पहले इसका एक प्रारूप तैयार किया गया कि कैसे जो ये संसदीय क्षेत्र है उसमें लोगों के घर जा जाकर आंखों की जांच की गई, जिनको चश्मे की जरूरत थी उन्हें चश्मा दिलवाया गया और जिन्हें मोतियाबिंद के अंतर्गत फ्री सर्जरी देनी थी उनकी फ्री सर्जरी भी कराई गई अपने आप। The United Kingdom is officially telling the people of India and the government of India that it couldn't care less. The United Kingdom is telling the government of India that it wants to do business with India, but it will do nothing to defend Indian interests. The London Metropolitan Police says it is continuing with inquiries. On the ground, the reality is the Khalistanis have a free rein. Today, Rishi Sunak and his cabinet must decide and pick a side. They cannot appease Khalistanis on their soil and hope to forge ties with India. They cannot act on every other separatist movement and in fact do everything possible to make sure that the United Kingdom is the center of anti-India activity. The United Kingdom is allowing terrorist groups to target India to run full corporate type offices on British soil. This is payback time. Last week in the UK there were celebrations when it was reported that the economy might grow by 0.4%. If we give the British access to the Indian market by signing the free trade agreement with them, then their GDP will go up by 0.25% additionally. This is huge. Britain cannot be allowed to lecture us on fake liberalism and continue to justify terrorism as dissent. I say I disagree with the way in which Britain is continuing to hurt India's national interests repeatedly. This is the time that we finally and completely realign the relationship to let the British know where the power balance will rest. Eleven associates of Amritpal are to be produced here at Baba Bakara Court Complex here in the Amritsar district. Several of them have been arrested under the Arms Act while 4 others are facing the different charges. They were sent to 4 and 3 days custody. The anti-riot police along with the rapid action force have been deployed here at the court complex to ensure that there is no law and order situation emerging out of it.
एक बात बताइए ना, इतने माउंटेन्स आपने चढ़े, इतने कॉन्टिनेंट्स पे इंक्लूडिंग एवरेस्ट, सबसे मुश्किल कौन सा था ये बताइए। सर, आई वुड से एवरेस्ट इज ऑलवेज। And more breaking news coming in. Another trouble for Rahul Gandhi as Delhi High Court has sought a reply from NCPCR on a petition that was filed against Rahul Gandhi when he had revealed the identity of a rape victim by posting a picture of the rape victim on Twitter. Trouble mounting for Rahul Gandhi as the Delhi court has now sought a reply from NCPCR on the very same of the petition that was filed against Rahul Gandhi. We are slipping into a very short commercial break. We'll be back on the other side. A quick check of the big stories we are tracking for you this afternoon as amidst infighting. Amritsar was at Yediyurappa's residence this morning. He had breakfast with him and he was there to strategize on the Karnataka polls. The United Kingdom is allowing terrorist groups to target India to run full corporate type offices on British soil. This is payback time. Last week in the UK there were celebrations when it was reported that the economy might grow by 0.4%. If we give the British access to the Indian market by signing the free trade agreement with them, then their GDP will go up by 0.25% additionally. This is huge. Britain cannot be allowed to lecture us on fake liberalism and continue to justify terrorism as dissent. I say I disagree with the way in which Britain is continuing to hurt India's national interests repeatedly. This is the time that we finally and completely realign the relationship to let the British know where the power balance will rest. 11 associates of Amritpal are to be produced here at Baba Bakara Court Complex here in the Amritsar district. Several of them have been arrested under the Arms Act while 4 others are facing the different charges. They were sent to 4 and 3 days custody. The anti-riot police along with the rapid action force have been deployed here at the court complex to ensure that there is no law and order situation emerging out of it. एक बात बताइए ना, इतने माउंटेन्स आपने चढ़े, इतने कॉन्टिनेंट्स पे इंक्लूडिंग एवरेस्ट, सबसे मुश्किल कौन सा था ये बताइए। सर, आई वुड से एवरेस्ट इज ऑलवेज द डिफिकल्ट वन। हालांकि लॉट ऑफ पीपल से एवरेस्ट में आजकल हर कोई चढ़ रहा है, बट लेट मी टेल यू सर, एवरेस्ट रिमेन्स एवरेस्ट. Everest is the highest mountain in the world and it will remain so. And I have find Everest to be the most difficult. Most difficult. Most difficult. Ultimately crevasses उस खुम्बू ग्लेशियर में आपको क्रॉस करने हैं. Ultimately वो लोत्से फेस में जो 70 डिग्री की वॉल है वो आपको चढ़नी है. डर लगा कभी? सर, आई थिंक डरना भी जरूरी है, बिकॉज डर जब आपको लगता है आप सतर्क रहते हैं. Top headlines at 1 p.m. from opposition meet to pan-India protest. Vadra Congress in a huddle as Rahul faces disqualification. Uproar in Parliament as government leads charge against Rahul Gandhi. Amritpal Singh still on the run, but Republic accesses clincher videos of his private army. Amid infighting rumours, Amit Shah at Yediyurappa's residence to strategize Karnataka polls. Prime Minister Modi in Varanasi set to inaugurate a plethora of projects today. Discussion on Kashmir transformation irks Pakistan nationals kicked out of event for creating ruckus in the session.
A very good afternoon. Thank you for staying tuned to this edition of Live and Breaking. I'm Samiksha Srivastava. We are tracking all the latest on Amritpal Singh, for whom the massive manhunt continues. The latest that's coming in from Uttarakhand, where we understand that several posters of Amritpal Singh have been pasted across the city, across the state in several districts, including Udham Singh Nagar as well. We are also given to understand that there are sources telling us that Amritpal Singh could very well have crossed the border and could be in Nepal as we speak. Cut across to these visuals right now coming in of the opposition protest march which has begun from the Parliament. So opposition there united as they staged this protest march from the Parliament. So security, of course, that's been heightened as the opposition is carrying out this protest march. We'll go across to Anuj, who's there at the protest location. But there you see Mallikarjun Kharge, who's there with other leaders of the party. Adhiranjan Chaudhary, who's also there with Mallikarjun Kharge as they carry out their protest march against the central government. Remember, this comes a day after the Surat Court found Rahul Gandhi guilty of the remarks that he'd made way back in 2019 in Karnataka. And a 30-day grace time is also that's been given by the court to appeal to higher court by the Surat Court. So the visuals there coming in right now of the Congress workers who are staging a protest. Let's go across to Anuj as well. Anuj, if you could give us more details, which are the opposition parties who are part of this protest march that is being carried out? Members of opposition parties, as you can see, this is the opposition party protesting right outside the Parliament. We can see Sanjay Singh of the Aam Aadmi Party. We can see the BRS leadership there. We can see Mallikarjun Kharge, KC Venugopal, Priyanka Chaturvedi. So the numbers of leaders, the opposition parties trying to show their unity. We have seen the uproar inside the house. The houses had been already adjourned, but the leadership is now moving ahead. And there you can see the kind of arrangement that has been done of the security also. The opposition leaders trying to show their unity. They are going to give a media bite. What I have been told, Mallikarjun Kharge will be speaking, but there the police is continuously making the announcement that this is 144 which has been already imposed, and they are having a big banner in their hand on which it is written democracy is in danger. They are saying democracy is in danger. And the live images is from Vijay Chowk. Live images is from right outside the Parliament. We have seen a uproar inside the Parliament. We do know that these are the 14 parties of opposition who has already given a notice in the Supreme Court also. We'll go ahead to get a more clear picture of the leadership. There they are going to speak now. They are going to speak now. So we are going to take a media bite over there. What exactly they will have to say. And as you can see, the number of leadership at this point in time, right outside the Parliament, as I was telling it earlier, that 14 parties, opposition parties, has already approached the Supreme Court. And there they are saying that talking about the misuse of the agencies. On the other hand, they are also talking about Rahul Gandhi's punishment which has been given by the Surat Court yesterday. We are just trying to... These are the opposition party leadership. Mallikarjun Kharge could be clearly seen. Sanjay Singh, I can see Priyanka Chaturvedi there. I can see Raghav Chadda, KC Venugopal. So these are all the leadership of the opposition parties. We have continuously seen the ruckus, has continuously seen the uproar in the Parliament as the House has been already adjourned till Monday. But this is the opposition leadership who is at this point in time protesting right outside the Parliament. As you can see the kind of arrangement that has been done, as you can see the security which has been deployed. This is heavy security which has been deployed over here. We can see the forces, RAF. We are just trying to get in bite also, but till now these are the live images. We are getting the visuals, the live images from the Vijay Chowk. I've been told that they will be talking. Yes, they are going to give a media bite. We will be tracking the frame. They are going to give a media bite and they will be talking. Although let me also remind you that they also sought, the opposition parties also sought the time from the president, although this has not been given yet. But on the other hand,
These are the live images from right outside the parliament where the opposition parties trying to show their unity once again. We have seen the uproar in the parliament, the demand, and I ask my video journalist if we can give you a sense of this particular poster. On this very poster, it is written, "Democracy is in danger." They were holding this particular long banner on which it is written that democracy is in danger. We fought British, we will fight RSS Modi. That's something the placard says in their hand. So this is all what they are saying today. Democracy is in danger. We fought British, we will. Lord leaders, हमारी जो डिमांड जेपीसी का था और है, उस डिमांड को लेकर हम सभी लोग आज फिर एक बार यहाँ विजय चौक पे प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बात तो इससे साफ और जाहिर होता है कि मोदी जी जनता से कुछ छुपाना चाहते हैं। हालांकि नीरव मोदी, चौकसी, ललित मोदी, मल्ल्या ऐसे लोग करोड़ों, हजारों करोड़ रुपए सरकार से लूट के बाहर चले गए, लेकिन उनके बारे में मोदी जी मुंह नहीं खोल रहे और हमेशा दूसरों को टीका करने में वो बहुत अच्छा समझते हैं। आज मैंने बीजेपी का एक कमेंट सुना कि कांग्रेस और अपोजिशन के लोग बैकवर्ड क्लास के खिलाफ बात कर रहे हैं। अरे भाई, बैकवर्ड क्लास जो चोरी करके भाग गए वो बैकवर्ड क्लास के हैं? बताओ मेरे को कोई बैकवर्ड क्लास का आदमी हजारों करोड़ लेके चले गया, घपला किया और 12 लाख 2.5 साल में अगर किसी ने कमाया है तो अदानी ने कमाया है। वो कमाने के लिए अगर कोई मदद किया है तो मोदी जी ने किया है। हम अदानी की बात कर रहे हैं तो ये बीच में झगड़ा लगाने के लिए बैकवर्ड क्लास, फॉरवर्ड क्लास बोल रहे हैं। अरे पैसे जो हड़प कर रहे हैं उसके लिए हम तो जेपीसी चाहते हैं। यहाँ पर बैकवर्ड फॉरवर्ड का सवाल कहाँ आ गया? ये एक तरफ, और दूसरी तरफ जो हमारा एक ही मुद्दा है, जनता का पैसा, LIC का, आपका। All right, Kharge, they're speaking as the opposition holds that march, saying that democracy is in danger. Meanwhile, the TMC, BJD, YSRCP and TDP that have decided to give the opposition protest a miss. कितनी उनकी असेट है उसका कोई ब्यौरा उन्होंने नहीं लिया। जैसा पूछते गए वैसा देते गए और आज उनका जो शेयर वैल्यू भी गिर रहा है, तो हमारे पैसे जो LIC के उसमें है उसका भी वो भी कमज़ोर हो रहा है, बैंक्स कमज़ोर हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें बाहर आने दो, इसीलिए हम जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी चाहते हैं और इसी मुद्दे पे हम लड़ रहे हैं 4 महीने से, लेकिन सरकार सुनना नहीं चाहती। उनको क्या दिक्कत है? क्योंकि जेपीसी में तो उनके मेंबर ज़्यादा होते हैं, उनका तो 2/3 मेजॉरिटी है। इसके बावजूद वो डर रहे हैं। क्यों? इसीलिए डर रहे हैं कुछ गलती है, दाल में काला है, तो इसीलिए वो डर रहे हैं। और हम ये लड़ते रहेंगे, एकजुट होकर लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। उसके अलावा राहुल गांधी जी जो सच बोल रहे हैं और उन्होंने पार्लियामेंट में अपनी बात को सच्चाई से रखी, बहुत से मुद्दे उन्होंने वहां जो रखा कि अदानी को किसने लेके गया था विदेशों में, और जब प्रधानमंत्री जी विदेश गए थे उस वक्त कहां पर अदानी उनको मिले, ये सारी चीजें उन्होंने पूछी। क्या ये गलत है? पार्लियामेंट में इंफॉर्मेशन लेना गलत है? और इसलिए वो आज राहुल जी को भी बोलने नहीं दे रहे
और उनके लिए उनको एक्सप्लेन करने के लिए भी वो नहीं दे रहे। इसका मतलब क्या है कि हम लूटते रहेंगे, तुम मुंह बंद करके रहो, ये उनकी चाल है। और अब आज भी कोशिश की है राहुल गांधी जी बोलने के लिए, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी और 3 दिन पहले भी उन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि मुझे बोलने के लिए आप परमिशन दीजिए। मेरे खिलाफ 4 मिनिस्टर्स पार्लियामेंट में बोले हैं, मुझे भी वही हक दो जो जिस मेंबर्स को या जिस मिनिस्टर को आपने हक दिया है। तो फिर भी उन्होंने माना नहीं। इससे ये जाहिर होता है कि डेमोक्रेसी को ख़त्म करने का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को ख़त्म करने का, फ्रीडम ऑफ स्पीच को ख़त्म करने का, और आगे एक दिन ऐसा आएगा अगर यही चाल से वो चले और चल रहे हैं जिस राह से, तो इस देश में ऑटोक्रेसी आएगी, डिक्टेटरशिप आएगी और सबके बंद हो जाएंगे। हम बोलने वालों का भी बंद हो जाएगा मुंह। आप जो आज रिकॉर्डिंग करके सो टीवी में दिखाते हैं, लिखते हैं, वो भी बंद हो जाएगा। तो इसीलिए सबके लिए लड़ रहे हैं हम, जमहूरियत को टिकाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को बचाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और जो सच बोलते हैं उनको जेल में डालने की कोशिश वो करते हैं। सिर्फ एक ही पार्टी का नहीं, कांग्रेस का मैं बोल रहा हूँ, सभी पार्टी के लोग आज जितने भी अपोजिशन पार्टीज है जो सच बोल रहे हैं, ठीक ढंग से है, उनको भी सताने का काम कर रहे हैं। तो एक पार्टी सभी पार्टियों को वो अपना डंडा चला रहे हैं। तो ईडी का धमकी दे रहे हैं, सीबीआई का धमकी दे रहे हैं, और ये धमकियां जो वो लोग दे रहे हैं इसलिए दे रहे हैं कि डेमोक्रेसी में कोई बात न करे और उनके खिलाफ कोई बात न करे। ये उनकी मंशा है, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। हम अपनी बात को रखते जाएंगे, लड़ते जाएंगे और देश बचाने के लिए, डेमोक्रेसी बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए पूरी कोशिश हम सभी लोग मिलकर करेंगे। डीएमके से राजा बात करेंगे। अरे हाँ ठीक है। ಕನ್ನಡದಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆನಲ್ಲ, ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ। संजय सिंह जी आम आदमी पार्टी से बात रखेंगे। माननीय खड़गे साहब ने जो कहा कि सारे विपक्ष को खत्म करना भारतीय जनता पार्टी का मकसद है, मोदी जी का नारा है विपक्ष को खत्म करो और अपने भाइयों को बचाओ। आज कई दिनों आवाज लगा रही हैं कि लाखों करोड़ के घोटाले पर जेपीसी बनाओ। जेपीसी बनाने के लिए आप तैयार नहीं। इसका मतलब ये पूरी की पूरी सरकार मोदी जी की ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार में शामिल है और देश के प्रधानमंत्री का हाथ इस घोटाले के जांच में है, इसलिए वो जेपीसी से भाग रहे हैं। हमारी लड़ाई जारी रहेगी। कल जिस प्रकार से राहुल गांधी जी के एक चुनावी भाषण कर्नाटक में हुए, उस पर मुकदमा गुजरात में हुआ। मुकदमा करने वाला भारतीय जनता पार्टी का कैबिनेट मंत्री है और कभी आपने नहीं सुना होगा डिफेमेशन में 2 साल की सजा हो जाए, 2 साल की सजा भी हो जाती है। इसका मतलब सारे विपक्ष के नेताओं को ऐसे ही फंसाकर ईडी, सीबीआई तमाम जांचों में न्यायालयों से सजा कराकर उनको अयोग्य घोषित कराना है। उनकी राजनीतिक All right, so Sanjay Singh, they're speaking, saying that the voices are being stifled of the opposition, even in fact questioning the judiciary. You're listening. आजादी से बोल भी नहीं सकते तो फिर लोकतंत्र और संविधान का क्या मतलब होगा? राजा, ये राजा जी फ्रॉम डीएमके,
the country. Try to get that audio back, but there you heard the opposition leaders, including the likes of Sanjay Singh and Mallikarjun Kharge, speaking at the protest site. The lawlessness. Today, country witnessing a government which is having no accountability towards the parliament, where the 140 crore people aspiration is going to be reflected. So complete lawlessness, complete darkness, unless and until democracy is restored, until the lawlessness is removed, our united fight will continue. Thank you. Priyanka Chaturvedi ji from Shiv Sena. मैं बस यहाँ पर ये कहना चाहते हैं, हम सब जो रोज मांग कर रहे हैं कि एक जेपीसी का गठन हो, उसको अवॉइड करने के लिए धन्ना सेठों को बचाओ और विपक्ष को इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के माध्यम से फंसाओ योजना जो भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, उसकी हम निंदा करते हैं और हम सब एकजुट होकर यही मांग कर रहे हैं कि प्रजातंत्र का हनन कर संविधान को खत्म करने का जो काम चल रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और ये जेपीसी की जो हमारी मांग है वो जायज़ मांग है। और जब ये लोग विपक्ष में होते थे, जेपीसी की मांग दिन रात करते थे, पार्लियामेंट को रोकते थे, और हमारी जो मांग है वो उस आधार पे है क्योंकि एक देश का सबसे बड़ा फाइनेंशियल घोटाला सामने आया है और ये लोग उनको बचाने में लगे हैं। Anil Egde from JDU. On the issue of money laundering and corrupt practices of the Adani Group, the entire opposition has been demanding JPC. We have been demanding discussion in the parliament, but the BJP, the ruling party is running away from discussion. On behalf of my party, the Janata Dal United, my party is solidly with the entire opposition in demanding the JPC. Thank you. All right, so the opposition there again calling for a JPC inquiry into the Adani Hindenburg matter. But let's cut across to Chief Minister Yogi Adityanath speaking right now. वैश्विक रूप में मान्यता मिले, पिछले 9 वर्षों के अंदर काशी वासियों ने देखा है। काशी के माध्यम से न केवल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत कि ये लोग वैश्विक स्तर पर पहुंचे, यह हर काशीवासी, हर उत्तर प्रदेश वासी अनुभव कर रहा है। और काशी भौतिक विकास की एक नई प्रतिमान स्थापित करे, आज का एक कार्यक्रम उसकी एक मिसाल फिर बनने जा रही है। विगत 9 वर्षों के अंदर अकेले काशी के अंदर ही 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं या तो अब तक पूरी हुई हैं या उनका आज लोकार्पण होने जा रहा है या वे चालू स्थिति में हैं, जो बहुत शीघ्र जिन्हें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अगले विजिट के दौरान काशी वासियों को, प्रदेशवासियों को यहां पर समर्पित आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से करने में सफलता प्राप्त होगी। भाइयों बहनों, एक और विकास की नई आभा के साथ नव्य और भव्य काशी के साथ साथ उत्तर प्रदेश और देश दुनिया के अंदर अपनी एक नई पहचान बना रहा है। और इससे बड़ी गौरव की बात क्या हो सकती है कि आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भारत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दुनिया के सबसे बड़े उन 20 बड़े देशों का G20 के देशों के समूह की अध्यक्षता भी कर रहा है, जो भारत की नई ताकत का एहसास वैश्विक स्तर पर कराता है। एक तरफ हर एक क्षेत्र में, चाहे वह भौतिक विकास के नए प्रतिमान स्थापित करना हो, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मान्यता प्रदान करना हो, विगत 9 वर्षों के अंदर की इस यात्रा को पूरा देश ही नहीं आज पूरी दुनिया महसूस कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में आज भारत
दुनिया के सामने एक मिसाल बना है। लेकिन भाइयों बहनों, जहां एक और भारत की प्रगति पर, भारत की विरासत पर आज पूरी दुनिया गौरव की अनुभूति करती है, पूरी दुनिया भारत की तरफ आकर्षित होती है, भारत के लोकतंत्र को आज दुनिया अंगीकार करने के लिए लालायित दिखाई दे रही है, वहीं कुछ लोग हैं जो भाइयों बहनों, जो उत्तर प्रदेश में जब आते हैं तो उत्तर प्रदेश में भले ही उनकी कई पीढ़ियों को नेतृत्व दिया हो उत्तर प्रदेश ने, लेकिन उत्तर प्रदेश के बाहर जाएंगे तो उत्तर प्रदेश की निंदा करेंगे, देश के बाहर जाएंगे तो भारत के लोकतंत्र को कटघरे में खड़ा करेंगे। और जिन लोगों को 2004 और 2009 में ईवीएम के माध्यम से सरकार बनाने का अवसर प्राप्त हुआ था, आज जब वे लोग अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं तो वे आज ईवीएम को कटघरे में खड़ा करके संवैधानिक संस्थाओं को भी कटघरे में खड़ा करने का कुत्सित प्रयास करते हैं। भाइयों बहनों, ये वे लोग हैं जिन्हें भारत का विकास अच्छा नहीं लग रहा है, जिन्हें भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में ही नहीं बल्कि भारत लोकतंत्र की जननी के रूप में स्थापित करने के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रवर्तमान अभियान में हर स्तर पर बैरियर खड़ा करना है, वे लोग आज भारत को बदनाम करने में कहीं नहीं चूक रहे हैं। और कल का दृश्य तो सबने देखा है, सबने देखा है कैसे देश की सबसे पुरानी राजनीतिक दल के रूप में कांग्रेस के नेताओं के द्वारा कैसे माननीय न्यायालय की अवमानना करने वाले वक्तव्य दिए जा रहे हैं, कैसे उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के अवमानना से युक्त वक्तव्य देकर के इस प्रकार की बातें की जा रही हैं जैसे कि वो देश की संवैधानिक संस्थाओं को ये लोग कटघरे में खड़ा करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। इन लोगों ने कभी भी देश के विकास के बारे में नहीं सोचा। जब आवश्यकता पड़ी तो जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर देश को अलग अलग खेमों में विभाजित करने और वादों के नाम पर विभाजित करने का प्रयास किया। जब इन्हें अवसर प्राप्त हुआ तो इन लोगों ने देश में अपने स्वार्थ के लिए नक्सलवाद और आतंकवाद को बढ़ावा दिया, और जब इन्हें अवसर प्राप्त हुआ तो इन्होंने विकास को भी खेमों में बांटने का कुत्सित प्रयास करके अपने कार्यकाल के अंदर भ्रष्टाचार के नए नए प्रतिमान स्थापित किए। लेकिन आज जब भारत विकास की एक नई आभा के साथ वैश्विक मंच पर पूरी तरह छाता हुआ दिखाई दे रहा है, तब इन्हें भारत का विकास अच्छा नहीं लग रहा है। तब ये लोग भारत को हर दिशा में बदनाम करके भारत की इस प्रगति में रोड़ा बनना चाहते हैं। और भाइयों बहनों, कल के दृश्य को पूरी दुनिया ने देखा है, कैसे जब न्यायालय के द्वारा यह भी कहा गया, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा के एक सांसद श्री राहुल गांधी जी को कहा गया कि आप माफी मांगिए अपने वक्तव्य के लिए, तो उनके द्वारा कहा जाता कि नहीं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। यानी एक पिछड़ी जाति के प्रति किस प्रकार के अनर्गल बयान देकर के एक सामान्य संसदीय शिष्टाचार का भी सामान्य पालन करने का जिन लोगों ने कभी अपने जीवन में उसको अपने जीवन का हिस्सा न बनाया हो, और इसी के लिए कहा गया है, जाके प्रभु दारुण दुख दीना ताके मति पहले हर लीना। और उनकी मति को प्रभु ने किस रूप में हरने का कार्य किया, वह दृश्य कल पूरे देश ने देखा है, जब एक माननीय न्यायालय ने उनके कृत्यों के लिए उन्हें सजा सुनाई और कहा कि नहीं, आपका यह वक्तव्य सामान्य संसदीय परंपराओं के विरुद्ध भी है, शिष्टाचार के विरुद्ध भी है, और एक सांसद को इस प्रकार के वक्तव्य कभी शोभा नहीं दे सकते हैं। तब भी कांग्रेस के नेताओं के बयान भाइयों बहनों किस रूप में थे, वह किसी से छुपा हुआ नहीं है।
आज मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहूंगा, एक तरफ जाति के नाम पर उस जातीय वैमनस्यता को अपने जीवन का हिस्सा बनाने वाली कांग्रेस है, जिन्होंने सदैव समाज को विभाजित किया है, अलग अलग खेमों में बांटने का कार्य किया है। और दूसरी तरफ विगत 9 वर्षों के अंदर आपने भारत के अंदर देखा होगा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के इन भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत आज दुनिया के अंदर किस रूप में गरीब कल्याण का कार्य बिना भेदभाव के सबको आवास की सुविधा, करोड़ों लोगों को आवास की सुविधा देना, करोड़ों लोगों को शौचालय की सुविधा का लाभ देना, करोड़ों लोगों को बिना भेदभाव के उज्ज्वला योजना में रसोई गैस का कनेक्शन देना, करोड़ों लोगों के घरों में बिजली के कनेक्शन उपलब्ध करवाने का कार्य करना और करोड़ों लोगों के जीवन की वे सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, चाहे वह आयुष्मान भारत की योजना हो या फिर विकास की उन सभी बुनियादी सुविधाओं का लाभ बिना भेदभाव के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने का एक कार्यक्रम। एक तरफ विगत 9 वर्षों के अंदर आपने सबका साथ और सबके विकास के इस नारे के साथ जमीनी धरातल पर, व्यवहारिक धरातल पर इन सभी संकल्पों को उतरते हुए देखा है। और दूसरी तरफ वे लोग हैं जो इस देश के अंदर एक गरीब के बेटे को जब देश के सर्वोच्च पद पर जाने का अवसर प्राप्त होता है, इनको फूटी आंखों भी यह सब दिखाई, ये सब अच्छा नहीं लगता है। और कांग्रेस पार्टी का ये बयान और राहुल गांधी का ये बयान इस बात को एक बार फिर से प्रदर्शित करता है कि न तो गरीब के बेटे को, वंचित और पिछड़े के बेटे को देश के सर्वोच्च पद पर जाना भी अच्छा नहीं लगा और देश की प्रगति और देश के लोकतंत्र के फलते फूलते इस स्वरूप को भी इन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे लगता है भाइयों बहनों, यह देश की जनता गरीबों, दलितों, वंचितों, पिछड़ों और समाज और देश की संवैधानिक संस्थाओं के अपमान का बदला कांग्रेस से जरूर लेगी, उन लोगों से जरूर लेगी जो लोग भारत को अनजाने में कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें देश की जनता से अवश्य माफी मांगनी चाहिए, अन्यथा आने वाले समय में देश कभी भी ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं करेगा। आज एक बार फिर से नव्य और भव्य काशी को एक नया स्वरूप प्रदान करने के लिए, अनेक योजनाओं की सौगात देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपनी काशी में आए हैं। काशी के प्रति उनका आत्मिक लगाव है। काशी जैसे उनके रग रग में बसी है। काशी में उनकी उपस्थिति प्रत्येक जनप्रतिनिधि को जनता के प्रति संवेदनशील और विकास के कार्य के प्रति अपने अपने संसदीय क्षेत्र और अपने अपनी विधानसभाओं में कैसे कार्य किया जाना चाहिए, इसके प्रति भी सचेत करती है। आज एक बार फिर से आपकी उपस्थिति हम सब के लिए प्रेरणादायी होगी। मैं एक बार फिर से काशी वासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश के वासियों की ओर से आपका बाबा विश्वनाथ की पावन धरा पर हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब वाराणसी शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एक अनुपम एवं सुविधाजनक रूप देने हेतु कैंट स्टेशन से गुदोलिया चौराहे तक यात्री रोपवे का शिलान्यास आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी के शुभ कर कमलों से किया जाएगा। आइए देखते हैं उसी पर एक फिल्म। विगत 9 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के गतिशील और दूरदर्शी विजन के कारण भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है। अगले 25 साल के अमृतकाल के विजन को साकार करने के लिए
देश भर में पुराने धार्मिक और ऐतिहासिक शहरों के भीतर कनेक्टिविटी में सुधार करने की अनूठी पहल की जा रही है। इसी विजन को मूर्त रूप देने के लिए उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया है, जिसके तहत भगवान शिव की नगरी वाराणसी में भारत के पहले अर्बन रोपवे का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों आज किया जा रहा है। रोपवे का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनना शुरू हो चुका है। ये रोपवे ने खंबे, तार, अंदर बैठने के लिए कार इतना मात्र नहीं है। ये रोपवे तेज गति से आपको बाबा के पास ले जाएगा इतना नहीं है। इसके होने से, इस पे काम करने वाले लोगों से आप कल्पना नहीं कर सकते हैं मेरे देश के 130 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद उन पर बरसने वाले हैं। इतिहास से पुरातन एक युवाओं का शहर जो स्वयं भगवान शिव की नगरी है, ऐसे दिव्य अनंत को प्राप्त वाराणसी शहर में जब देश दुनिया से आए श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है, तब संकरे रास्तों और पतली गलियों से गुजरकर भगवान के मंदिर तक पहुंचना एक मुश्किल कार्य बन जाता है। विश्व के इस प्राचीनतम शहर में आधुनिक आवागमन के लिए 3.85 किलोमीटर रोपवे वाराणसी कैंट से काशी विद्यापीठ, रथ यात्रा और गिरिजा घर होते हुए गोदौलिया चौक तक प्रस्तावित है, जो भविष्य की विश्व स्तरीय कनेक्टिविटी की जरूरत को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इस रोपवे में कुल 153 गोंडोला आवागमन के लिए उपलब्ध होंगे, जिसमें प्रत्येक गोंडोला में 10 यात्री और लगभग 1 लाख यात्रियों को दोनों दिशा में प्रतिदिन कम समय में सुरक्षित परिवहन का विकल्प प्रदान करेगा, जिससे वर्तमान में कैंट स्टेशन से मंदिर तक पहुंचने में 40 से 50 मिनट तक लगने वाले समय को मात्र 15 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। बुजुर्गों और दिव्यांगों के अनुकूल ये रोपवे विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ वाला रोपवे न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा देगा, बल्कि क्षेत्र के आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के अवसर भी उपलब्ध होंगे और समाज समृद्धि की ओर अग्रसर होगा। प्रधानमंत्री जी का यही मानना है कि तकनीकी और आस्था का अनूठा सामंजस्य एक महत्वपूर्ण कदम है आत्मनिर्भर भारत की ओर। बहुत बहुत बधाई काशीवासियों को। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा अनेकानेक जन कल्याणकारी कार्यक्रमों की कड़ी में स्वस्थ दृष्टि समृद्धि काशी कार्यक्रम काशीवासियों को नेत्र ज्योति प्रदान कर उनके चेहरों में मुस्कान बिखेर रहा है। आपके इस वृहत कार्यक्रम पर एक छोटी सी फिल्म आइए देखते हैं। And we are getting out those pictures as Prime Minister Narendra Modi to lay the foundation of Kashi ropeway. Extremely important as he is to inaugurate a slew of development projects as he is in Varanasi. Meanwhile, you just heard from UP Chief Minister Yogi Adityanath, who in a full frontal attack at the opposition went on to speak about appeasement politics and also targeted the Congress of how they questioned the judiciary. Meanwhile, Prime Minister Modi marking the adoption of a new mode of public transport, while other gifts as it is a boost to education sector, health services, sports facilities, Make in India and Ganga cleaning initiatives. That is the aim of both the UP government and working in tandem with the centre. We're slipping into a short break, but before that, we also get to the top stories that we are tracking this afternoon. 14 political parties, including the Congress, Aam Aadmi Party and Shiv Sena, who moved the top court against alleged arbitrary use of central investigating agencies like the Enforcement Directorate and CBI in arresting opposition leaders, is why they have now moved to the top court.
Hundreds of Congress workers marched towards Raj Bhavan in Bengaluru demanding SC/ST quota hike to be brought under Schedule 9. The protest was led by D.K. Shivakumar and Siddaramaiah. Rahul Gandhi's conviction row now reached Jammu and Kashmir, where the Pradesh Congress held a protest at Shahidi Chowk, Jammu, in favor of Rahul Gandhi. JKPCC working president Raman Bhalla and Wakar Rasool were also leading the protest. BJP ups the ante against Rahul Gandhi on conviction. BJP to run a campaign from 6th April to 14th April targeting 1 lakh houses and 1 crore people, speaking all about the intentions of Rahul Gandhi against OBC Samaj. Finance Bill 2023 was tabled by Union Finance Minister Nirmala Sitharaman in Lok Sabha amid sloganeering by opposition MPs demanding a JPC inquiry into the Adani Group issue. The bill was later passed in Lok Sabha. Delhi Police registered a case in connection with the protest held outside the Indian High Commission in London on March 19. The case was registered by the special cell under IPC, UAPA and PDPP, as it involves unlawful activities carried out by certain people holding Indian nationality abroad. Uttarakhand Police announces NSA against a person harbouring Amritpal. Police clearly mentioned that if anyone provides shelter to Amritpal or any of his aides, action will be taken against that person. Meanwhile, the police also announced a reward for providing information about Amritpal. PM Modi launching various initiatives including the TB Mukt Panchayat initiative, official pan-India rollout of a shorter TB preventive treatment, family-centric care model for TB and release of India's annual TB report 2023 at One World TB Summit in Varanasi. Tamil Nadu Tourism Minister Ramachandran inaugurated the works of state's first floating restaurant, which is to be located at Muttukadu Boat House. On the budget of 5 crores, Tamil Nadu Tourism Department will introduce floating restaurant ship to be designed with 125 feet length and 25 feet wide. Stepping into a short commercial break, on the other side, amidst infighting, Amritsar was at Yediyurappa's residence to strategize Karnataka polls. And a discussion of Kashmir transformation that irked Pak nationals who were kicked out of the event for creating ruckus. 11 associates of Amritpal are to be produced here at Baba Bakara Court Complex here in the Amritsar district. Several of them have been arrested under the Arms Act, while 4 others are facing the different charges. They were sent to 4 and 3 days custody. The anti-riot police along with the rapid action force have been deployed here at the court complex to ensure that there is no law and order situation emerging out of it. एक बात बताइए ना, इतने माउंटेन्स आपने चढ़े, इतने कॉन्टिनेंट्स पे इंक्लूडिंग एवरेस्ट, सबसे मुश्किल कौन सा था ये बताइए? सर, आई वुड से एवरेस्ट इज ऑलवेज द डिफिकल्ट वन. हालांकि लॉट ऑफ पीपल सेज एवरेस्ट में आजकल हर कोई चढ़ रहा है, बट लेट मी टेल यू सर, एवरेस्ट रिमेन्स एवरेस्ट. Everest is the highest mountain in the world and it will remain so. And I have find Everest to be the most difficult. Most difficult. Most difficult. Ultimately crevasses उस खुम्बू ग्लेशियर में आपको क्रॉस करने हैं. Ultimately वो लोत्से फेस में जो 70 डिग्री की वॉल है वो आपको चढ़नी है. डर लगा कभी? सर, आई थिंक डरना भी जरूरी है सर, बिकॉज डर जब आपको लगता है आप सतर्क रहते हैं. The opinion about Israel within the Indian population is much more favorable vis-a-vis how Israel is seen, for example, even in the United States. There is a known phenomena here that Israelis after military service, they choose to come to India, what I call a full immersion visit. So they don't come 5-star hotels. They go backpackers, they want to live, they go to Vipassana, and they want to be part, I think, and parcel of the culture, to live like Indians. 30-40 years, Israelis have been doing it. Now it's the second generation. I see the parents here coming and bringing their
teenager children to show them their experience from India when they were after military service. आपने कर्नल जमाल कौन कौन से माउंटेन्स क्लाइम करे ये बताइए। एवरेस्ट आप 3 बार चढ़ चुके हैं। यस। अब आप मुझे कॉन्टिनेंट वाइज बताइए कौन से कॉन्टिनेंट की टॉलेस्ट पीक थी जो आपने चढ़ी। Climbed sir Kilimanjaro, that is Africa's highest mountain. That was my first mountain. Then obviously sir I went to Elbrus, that was Russia sir. That is highest mountain of Europe sir. That is Mount Elbrus. So then I went to Aconcagua, that is the highest mountain of South American continent. Then I went to Carsten's Pyramid, that is Australasian continental shelf. So we went and climbed that. It is supposed to be the Australian highest mountain. And उसके पहले एवरेस्ट तो मैं चढ़ ही चुका था। Then I went and climbed the highest mountain of North American continent, that is Alaska. That name is Mount Denali. So then last was Vinson Massif, that was in Antarctica. Antarctica's highest mountain, because it's a 7th continent. So the highest mountain is Vinson Massif. The opinion about Israel within the Indian population is much more favorable vis-a-vis how Israel is seen, for example, even in the United States. There is a known phenomena here that Israelis after military service, they choose to come to India, what I call a full immersion visit. So they don't come 5-star hotels. They go backpackers, they want to live, they go to Vipassana, and they want to be part, I think, and parcel of the culture, to live like Indians. 30, 40 years, Israelis have been doing it. Now it's the second generation. I see the parents here coming and bringing their teenager children to show them their experience from India when they were after military service. And we cut across to more breaking news coming in. It is a shocking case of VVIP arrogance. Senior Congress leader Siddaramaiah was seen snapping a Congress worker from Harihara Assembly constituency. The workers were chanting anti-Siddaramaiah slogans. When a miffed Siddaramaiah asked them to be silent, they did not listen to him. Then Siddaramaiah lost his cool and slapped a supporter of MLA Ramappa. The entire incident was caught on camera. There you see what exactly happened, and a lot of criticism coming Siddaramaiah's way. I also want to cut across to my colleague Prajwal, who's joining us live. Prajwal, what got Siddaramaiah so irritated that he went on to slap this MLA? And how are the local workers, the party workers, reacting to this? Slap a party worker, but not the MLA in this case. And this particular party worker was somebody who was considered to be very close to the Harihara MLA from Harihara Assembly constituency, Ramappa. And initially now there has been a fight among ticket aspirants in the Congress stating that a ticket will have to be given to their respective candidates as well. And there has been many factions within the Congress too, where we have seen a lot of infighting within the Congress party as well. And today there were around workers from around 6 to 7 constituency, and there were mainly 3 factions when it came to the Harihara Assembly constituency itself, outside the residence of Siddaramaiah near Kumarakripa. And initially when he was heading off for the protest, a few of the angry workers stated that they had been waiting for him since morning to put in a word, but Siddaramaiah would not listen to them. At which point of time we can see that one of the supporters of this MLA, Ramappa, has gone on to shout, stating that why are the Congress leaders not giving them time, especially during the elections as well, and what has Ramappa not done for the party, because he's always been a very prominent leader, especially in the Davangere region as well, and why is he not being given a party? And there were slogans which was called out against Siddaramaiah, and also slogans which was called in for Ramappa, which irked Siddaramaiah. Initially he's heard shouting at the workers to give him space, and when they have not listened to him, he slapped him right in front of the other party workers too. And this has left many of them shocked, and many of the Congress workers themselves in the party are now very angry with Mr. Siddaramaiah, stating that how can he go on and display such arrogance when the party workers are asking as well, and they have told that they would be teaching him a beat-fitting lesson as well. So absolutely something which is shocking as well. And when we did go on and try to ask Siddaramaiah, he dismissed this entire issue and stated that it just happened in the heat of the moment. But, Prajwal, this will certainly send a very negative message to the grassroots level workers. And ahead of the polls in Karnataka, this is a risk that the leadership in Congress certainly cannot afford.
S. Prakash from the BJP is also joining us on the broadcast. S. Prakash, such arrogance by a top leader in Karnataka of the Congress party, Siddaramaiah, is certainly very, very upsetting for the grassroots level workers, and not just that, even to the vote bank by and large sends across a negative message. No, it's very unfortunate. Mr. Siddaramaiah is repeatedly indulging in clapping his own Karyakartas who stand by him, who are supporting him, who raise slogans in favor of him. The Congress workers have to take his frustration, anger over them. Mr. Siddaramaiah, who is not able to find a seat in Karnataka for the ensuing election, I feel he is frustrated about it, and he is displaying his frustration over his own workers who are with him. This is not the first time. He is a repeated and serial offender. And largely there is a sense of disappointment that those working at the grassroots level are feeling, that even at this point the leadership is not giving them enough time or indulging them right when the state is to see polls very soon. And this is once again quite the sentiment across the party, even nationally, is a message that is going in the poll-bound state in the Congress party. No, any worker is clapped publicly by his own leader. It will demoralize other workers who will be working for any party. And when Siddaramaiah is committing that offence, is very serious because he's the senior most leader in the party. And I feel Mr. D.K. Sharma should give a dressing down to Mr. Siddaramaiah over his behavior and ask him to mend it. All right, S. Prakash, many thanks for speaking to Republic this afternoon. Prajwal, I want to come back to you because such controversies against Siddaramaiah are coming out too frequently, where he has been caught on camera, be it the display of VVIP arrogance, of losing his temper, or even having caught off guard when he's having these conversations with his colleagues, but obviously being the public personality that he is and a top name in the Congress party in the state of Karnataka, all this could well form a very negative image of him and damage his reputation in that sense, and not something that they would want ahead of the polls. Absolutely, it is demoralizing for any party worker to be hit by the most top leader of his or her party as well. And this is not the first time too. Initially, when the leaders as well as workers from the Kolar Assembly constituency too came in, Siddaramaiah did not give in to their demands as well. And he remains brazen about it and unabashed about this entire issue as well. So this is something which needs to be, which needs to be addressed immediately by the Congress top management as well. And now the BJP is latching on to it and stating that he is a serial offender, he's a serial slapper, he's been caught on camera many times going on to assault party workers, misbehaving with them and speaking to them in tones and language which is unfit for a politician as well. This is something which the BJP is lashing out against Siddaramaiah now, and this comes at a time when Siddaramaiah himself does not have an assembly constituency to contest from, because he's in a dilemma, he's in a confusion. The Congress party in itself is in a confusion, and they are backing, they are falling back on the party. Oh yes, a lot of confusion over who will fight from Kolar and what Siddaramaiah will choose. But Republic has also pulled out that image from 2019, a repeat of the exact same action where he was seen slapping a worker on the ground. And like we are saying, Ujjwal, not something that will be perceived correctly. But we leave it at that. Thank you for joining us with all these details. चंद्र घंटा की पूजा का दिन है। ये मेरा सौभाग्य है कि इस पावन अवसर पर आज मैं काशी की धरती पर आप सबके बीच हूं। मां चंद्र घंटा के आशीर्वाद से आज बनारस की सुख समृद्धि में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज यहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे का शिलान्यास किया गया है।
बनारस के चौतरफा विकास से जुड़े सैकड़ों करोड़ रुपए के दूसरे प्रोजेक्ट्स का भी लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। इनमें पीने का पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, गंगा जी की साफ सफाई, बाढ़ नियंत्रण, पुलिस सुविधा, खेल सुविधा, ऐसे अनेक प्रोजेक्ट शामिल हैं। आज यहां IITU BHU में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन मशीन टूल्स डिजाइन का शिलान्यास भी हुआ है। यानी बनारस को एक और विश्व स्तरीय संस्थान मिलने जा रहा है। इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए बनारस के लोगों को, पूर्वांचल के लोगों को बहुत बहुत बधाई। भाइयों और बहनों, काशी के विकास की चर्चा आज पूरे देश और दुनिया में हो रही है। जो भी काशी आ रहा है वो यहां से नई ऊर्जा लेकर जा रहा है। आप याद कीजिए, 8-9 वर्ष पहले जब काशी के लोगों ने अपने शहर के कायाकल्प का संकल्प लिया था तो बहुत लोग ऐसे थे जिनको आशंकाएं थी। कई लोगों को लगता था कि बनारस में कुछ बदलाव नहीं हो पाएगा, काशी के लोग सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन काशी के लोगों ने, आप सबने आज अपनी मेहनत से हर आशंका को गलत साबित कर दिया। साथियों, आज काशी में पुरातन और नूतन दोनों स्वरूपों के दर्शन एक साथ हो रहे हैं। मुझे देश विदेश में मिलने वाले लोग बताते हैं कि वो किस तरह विश्वनाथ धाम के पुनर्निर्माण से मंत्रमुग्ध है। लोग गंगा घाट पर हुए काम से प्रभावित है। हाल ही में जब दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज हमारी काशी से चला, उसकी भी बहुत चर्चा हुई है। एक समय था जब गंगा जी में इसके बारे में सोचना भी असंभव था, लेकिन बनारस के लोगों ने ये भी करके दिखाया। आप लोगों के इन्हीं प्रयासों की वजह से एक साल के भीतर 7 करोड़ से अधिक पर्यटक काशी आए। और आप मुझे बताइए, ये जो 7 करोड़ लोग यहां आ रहे हैं वो बनारस में ही तो ठहर रहे हैं। वो कभी पूड़ी कचौड़ी खा रहे हैं, कभी जलेबी लौंगलता का आनंद ले रहे हैं, वो कभी लस्सी का पान ले रहे हैं, तो कभी ठंडई का मजा लिया जा रहा है। और अपना बनारसी पान, यहाँ के लकड़ी के खिलौने, ये बनारसी साड़ी, कालीन का काम, इन सब के लिए हर महीने 50 लाख से ज्यादा लोग बनारस आ रहे हैं। महादेव के आशीर्वाद से ये बहुत बड़ा काम हुआ है। बनारस आने वाले ये लोग
अपने साथ बनारस के हर परिवार के लिए आय के साधन ला रहे हैं। यहां आने वाले पर्यटक रोजगार के, स्वरोजगार के नए अवसर बना रहे हैं। साथियों, 8-9 वर्षों के विकास कार्यों के बाद जिस तेजी से बनारस का विकास हो रहा है, अब उसे नई गति देने का भी समय आ गया है। आज यहां टूरिज्म से जुड़े, शहर के सुंदरीकरण से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। रोड हो, पुल हो, रेल हो, एयरपोर्ट हो, कनेक्टिविटी के तमाम नए साधनों ने काशी आना जाना बहुत आसान कर दिया है। लेकिन अब हमें एक कदम और आगे बढ़ना है। अब जो ये रोपवे यहां बन रहा है, इससे काशी की सुविधा और काशी का आकर्षण दोनों बढ़ेगा। रोपवे बनने के बाद बनारस कैंट रेलवे स्टेशन और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बीच की दूरी बस कुछ मिनटों में ही रह जाएगी। इससे बनारस के लोगों की सुविधा और बढ़ जाएगी। इससे कैंट स्टेशन से गदौलिया के बीच ट्रैफिक जाम की समस्या भी बहुत कम हो जाएगी। साथियों, वाराणसी में आसपास के शहरों से, दूसरे राज्यों से लोग अलग अलग काम से भी आते हैं। वर्षों से वो वाराणसी किसी एक इलाके में आते हैं, काम खत्म करके रेलवे या बस स्टैंड चले जाते हैं। उनका मन होता है बनारस घूमने का, लेकिन सोचते हैं इतना जाम है, कौन जाएगा। वो बचा हुआ समय स्टेशन पर ही बिताना पसंद करते हैं। इस रोपवे से ऐसे लोगों को भी बहुत फायदा होगा। भाई और बहनों, ये रोपवे प्रोजेक्ट सिर्फ आवाजाही का प्रोजेक्ट भर नहीं है। कैंट रेलवे स्टेशन के ऊपर ही रोपवे का स्टेशन बनेगा, ताकि आप लोग इसका सीधा लाभ ले सके। ऑटोमेटिक सीढ़ियां, लिफ्ट, व्हीलचेयर रैंप, रेस्ट रूम और पार्किंग जैसी सुविधाएं भी वहीं उपलब्ध हो जाएगी। रोपवे स्टेशनों में खाने पीने की सुविधा, खरीदारी की सुविधा भी होगी। ये काशी में बिजनेस और रोजगार के एक और सेंटर के रूप में विकसित होंगे। साथियों, आज बनारस की एयर कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में भी बड़ा काम हुआ है। बाबतपुर हवाई अड्डे में आज नए एटीसी टावर का लोकार्पण हुआ है। अभी तक यहां देश दुनिया से आने वाले 50 से अधिक विमानों को हैंडल किया जाता है। नया एटीसी टावर बनने से ये क्षमता बढ़ जाएगी। इससे भविष्य में एयरपोर्ट का विस्तार करना आसान होगा। भाइयों और बहनों, काशी में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जो काम हो रहा है, उनसे भी सुविधाएं बढ़ेगी और आने जाने के साधन बेहतर हो जाएंगे। काशी में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की छोटी छोटी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही
फ्लोटिंग जेटी का निर्माण किया जा रहा है। नमामि गंगे मिशन के तहत गंगा किनारे के शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट का एक बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार हुआ है। पिछले 8-9 वर्षों में आप गंगा के बदले हुए घाटों के साक्षी बने हैं। अब गंगा के दोनों तरफ पर्यावरण से जुड़ा बड़ा अभियान शुरू होने वाला है। सरकार का प्रयास है कि गंगा के दोनों तरफ 5 किलोमीटर के हिस्से में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए इस वर्ष के बजट में भी ऐलान किए गए हैं, चाहे खाद हो या फिर प्राकृतिक खेती से जुड़ी दूसरी मदद, इसके लिए नए केंद्र बनाए जा रहे हैं। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि बनारस के साथ पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश कृषि और कृषि निर्यात का एक बड़ा सेंटर बन रहा है। आज वाराणसी में फल सब्जियों की प्रोसेसिंग से लेकर भंडारण और ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी कई आधुनिक सुविधाएं तैयार हुई है। आज बनारस का लंगड़ा आम, गाजीपुर की भिंडी और हरी मिर्च, जौनपुर की मूली और खरबूजे विदेश के बाजारों तक पहुंचने लगे हैं। इन छोटे शहरों में उगाई गई फल सब्जियां लंदन और दुबई के बाजारों तक पहुंच रही है। और हम सब जानते हैं, जितना ज्यादा एक्सपोर्ट होता है उतना ही अधिक पैसा किसान तक पहुंचता है। अब करखियाओं फूड पार्क में जो इंटीग्रेटेड पैक हाउस बना है, उससे किसानों, बागवानों को बहुत मदद मिलने जा रही है। आज यहां पुलिस फोर्स से जुड़े प्रोजेक्ट्स का भी लोकार्पण हुआ है। मुझे विश्वास है कि इससे पुलिस बल का आत्मविश्वास बढ़ेगा, कानून व्यवस्था और बेहतर होगी। साथियों, विकास का जो रास्ता हमने चुना है उसमें सुविधा भी है और संवेदना भी है। इस क्षेत्र में एक चुनौती पीने के पानी की रही है। आज यहां पीने के पानी से जुड़ी अनेक परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ है और नई परियोजनाओं पर काम भी शुरू हुआ है। गरीब की परेशानी कम करने के लिए ही हमारी सरकार हर घर नल से जल अभियान चला रही है। बीते 3 साल में देश भर के 8 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचना शुरू हुआ है। यहां काशी और आसपास के गांव में भी हजारों लोगों को इसका लाभ मिला है। उज्ज्वला योजना का भी बहुत लाभ बनारस के लोगों को हुआ है। सेवापुरी में नया बॉटलिंग प्लांट इस योजना के लाभार्थियों की भी मदद करेगा। इससे पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में गैस सिलेंडर की आपूर्ति सुगम होगी। साथियों, आज केंद्र में जो सरकार है, यहां यूपी में जो सरकार है, वो गरीब की चिंता करने वाली सरकार है, गरीब की सेवा करने वाली सरकार है। और आप लोग भले प्रधानमंत्री बोले, सरकार बोले, लेकिन मोदी तो खुद को आपका सेवक ही मानता है। इसी सेवा भाव से
मैं काशी की, देश की, यूपी की सेवा कर रहा हूं। थोड़ी देर पहले मेरी सरकार की अनेक योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत हुई है। किसी को आंखों की रोशनी मिली तो किसी को सरकारी मदद से अपनी रोजी रोटी कमाने में मदद मिली। स्वस्थ दृष्टि समृद्ध काशी अभियान, और अभी मैं एक सज्जन से मिला तो वो कह रहे थे, साहब स्वस्थ दृष्टि दूरदृष्टि। करीब 1000 लोगों का मोतियाबिंद का मुफ्त इलाज हुआ है। मुझे संतोष है कि आज बनारस के हजारों लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। आप याद कीजिए 2014 से पहले के वो दिन जब बैंकों में खाता खोलने में भी पसीने छूट जाते थे। बैंकों से ऋण लेना, इसके बारे में तो सामान्य परिवार सोच भी नहीं सकता था। आज गरीब से गरीब के परिवार के पास भी जनधन बैंक खाता है। उसके हक का पैसा, सरकारी मदद आज सीधे उसके बैंक खाते में आता है। आज छोटा किसान हो, छोटा व्यवसायी हो, हमारी बहनों के स्वयं सहायता समूह हो, सबको मुद्रा जैसी योजनाओं के तहत आसानी से ऋण मिलते हैं। हमने पशुपालकों और मछली पालकों को भी किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ा है। रेहड़ी पटरी फुटपाथ पर काम करने वाले हमारे साथियों को भी पहली बार पीएम स्वनिधि योजना से बैंकों से ऋण मिलना शुरू हुआ है। इस वर्ष के बजट में विश्वकर्मा साथियों की मदद के लिए भी पीएम विश्वकर्मा योजना लेकर आए हैं। प्रयास यही है कि अमृत काल में विकसित भारत के निर्माण में हर भारतीय का योगदान हो, कोई भी पीछे ना छूटे। भाइयों और बहनों, अब से कुछ देर पहले मेरी खेलो बनारस प्रतियोगिता के विजेताओं से भी बात हुई। इसमें 1 लाख से अधिक युवाओं ने अलग अलग खेलों में हिस्सा लिया। सिर्फ ये अपने बनारस संसदीय क्षेत्र में। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। बनारस के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा खेलने का मौका मिले, इसके लिए यहां पर नई सुविधाएं भी विकसित की जा रही है। पिछले वर्ष सीगरा स्टेडियम के पुनर्विकास का फेज 1 शुरू हुआ। आज फेज 2 और फेज 3 का भी शिलान्यास किया गया है। इससे यहां अब अलग अलग खेलों की, हॉस्टल की आधुनिक सुविधाएं विकसित होगी। अब तो वाराणसी में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी बनने जा रहा है। जब स्टेडियम बनकर तैयार होगा तो एक और आकर्षण काशी में भी जुड़ जाएगा। भाइयों और बहनों, आज यूपी विकास के हर क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है। कल यानी 25 मार्च को योगी जी की दूसरी पारी का 1 वर्ष पूरा हो रहा है। 2-3 दिन पहले योगी जी ने लगातार सबसे ज्यादा समय तक यूपी के मुख्यमंत्री होने का रिकॉर्ड भी बनाया है। निराशा की पुरानी छवि से बाहर निकलकर यूपी आशा और आकांक्षा की नई दिशा में बढ़ चला है।
सुरक्षा और सुविधा जहां बढ़ती है वहां समृद्धि आना तय है। यही आज उत्तर प्रदेश में होता हुआ दिख रहा है। आज जो ये नए प्रोजेक्ट्स यहां जमीन पर उतरे हैं, ये भी समृद्धि के रास्तों को सशक्त करते हैं। एक बार फिर आप सभी को विकास के इन अनेक कामों के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन और बहुमूल्य सुझावों के लिए, हम सभी का मार्ग प्रशस्त करने के लिए। साथियों, आप सभी से निवेदन है कि अभी आप थोड़ी देर अपने स्थान पर बैठे रहें। विकास की एक और नई अविरल धारा प्रवाहित हो गई। काशी वासियों को आज 1800 करोड़ की All right, viewers, so we just saw the Prime Minister speak there in Varanasi, and many important points. A short while back, the Prime Minister also inaugurated and launched 28 development projects worth over 1,780 crores in Varanasi. A lot of emphasis on the development work which is happening in Varanasi, and also saying that the speed of which Varanasi is developing, that is something the nation should watch. Also talking about the industry there, the wooden toys, the saris, and many more. Many more things are getting famous among the tourists visiting the city. That was also something which he highlighted, the Prime Minister there. In fact, let's move ahead, viewers. We keep continuing to get you the latest updates which are coming in at this point of time. All right, viewers, so right now we can see the Prime Minister there. You can see how many people have come out today to watch him and hear his address as he's waving to the crowds there in Varanasi. Okay, we're getting some breaking news coming in right now. Let's go ahead. We're getting some big breaking coming in. This is massive. Big breaking coming in. Rahul Gandhi has been disqualified. Viewers, getting these back-to-back updates coming in. Rahul Gandhi stands disqualified, and this is a very, very big news because there was a big demand being raised for his disqualification yesterday, and we are breaking this first on Republic, where we are learning that Rahul Gandhi has been disqualified. He has been disqualified from the membership of Lok Sabha from the date of his conviction, that is 23rd March 2023, in terms of the provisions of Article 102. 1E of the Constitution of India, with Section 8 of the Representation of the People Act 1951. This is a very big development coming in right now, viewers. This is a massive setback coming in for Rahul Gandhi as well. Big news coming in right now. Rahul Gandhi has been disqualified, and we're still waiting for more updates. But Ashurya Kapoor is joining us. Ashurya, very big development. It's a big breaking first in Republic. Rahul Gandhi has been disqualified. Well, absolutely. That's the breaking news coming in, and that's exactly what the Congress party was saying, that it can happen, and it has happened. Rahul Gandhi, yes, Rahul Gandhi has been disqualified as a member of parliament. Rahul Gandhi is no more a member of parliament after he was sentenced to 2 years in a criminal defamation case. Rahul Gandhi is no more a member of parliament. Rahul, it's a big jolt to Rahul Gandhi and to the Congress party. Rahul Gandhi's membership to Lok Sabha has been termed as beg your pardon, he has been disqualified by the Lok Sabha Speaker's office. Rahul Gandhi, it's a big jolt to Rahul Gandhi. His membership of the lower house of Lok Sabha has been disqualified. Yeah. Right,
Aishwarya, this is the very big news coming in, and this is under the Representation of the People Act, RPA, 1951. And this law clearly says and provides disqualification for conviction in criminal cases. I'll come back to you, Aishwarya. I'm just going across to Tom Vadakar of the BJP is joining us. Big news coming in. Tom Vadakar, your first reaction. There was a huge demand yesterday itself, which was raised that he should be disqualified because his conviction is something which comes under the Representation of the People's Act, where disqualification will happen of a MP for conviction in criminal cases. Well, this was bound to happen. It was something that is within the purview of the law, and it has happened. This gentleman has crossed all limits in his speeches or whatever interaction or interfaces that he has both in India and abroad. Now, it is time the law will catch up with him. I should also, at this point, point out it is the same ordinance that he tore during the Manmohan Singh period, which would have given him some reprieve. But the grave that you dig for others is incidentally, prepared for your own burial. This is precisely what happened when he tore those ordinances at that period of time. His intention was to fix Lalu Prasad ji, and now he's facing the same music. And if that perhaps that ordinance existed, he might have got some reprieve. But the reality is that this man has been defaming the nation, defaming the parliamentary structure. He has been defaming democratic temples of democracy. So I think it is a natural, it's poetic justice catching up with him. Right. And Tom Vadakar, thank you for joining us here on Republic TV, BJP spokesperson. Massive setback for Rahul Gandhi, and viewers, the law has caught up. The law has caught up to Rahul Gandhi. It's a disqualification after the conviction of Rahul, because no matter whoever sits in the parliament, they will be disqualified as per the constitution. Samiksha is joining us live. From the Mumbai newsroom. Samiksha, I'm coming across to you. This is a very big story and a big broken first in Republic TV. Massive. Rahul Gandhi is no longer an MP in the Lok Sabha. Well, that's right, Shivangi, and this is clearly on the expected lines. Remember, yesterday, Mahesh Jethmalani also, while speaking to Republic, said exactly the same thing, that Rahul Gandhi, in all likelihood, would be disqualified. Reading this notification also, which says, consequent upon his conviction by the Court of Chief Judicial Magistrate, Surat, Rahul Gandhi, member of Lok Sabha representing the Wayanad Parliamentary constituency of Kerala, stands disqualified from the membership of Lok Sabha from the date of his conviction, which was on Thursday in this case, in terms of the provisions of Article 102 of the Indian Constitution with Section 8 of the Representation of the People Act 1951. Copy has already been forwarded to Rahul Gandhi, who is now the ex-MP, Shivangi, and copy has also been forwarded to President's Secretariat, Prime Minister's Secretariat, along with the Rajya Sabha Secretariat, Election Commission of India, all ministries, departments of Government of India. So everyone have been notified. The copies have also been sent to Rahul Gandhi also, who's here been addressed as ex-MP. So it's with immediate effect that Rahul Gandhi is no more the Lok Sabha MP who represented earlier the Wayanad constituency of Kerala, Shivangi. All right, Samiksha is getting us the latest details right now, and we're seeing that the disqualification. All right, so that's a big setback of sort coming in for Rahul Gandhi, who's no longer
the Lok Sabha MP. This is the notification, the full notice that we've accessed, which again I'm going to read out for our viewers. Consequent upon his conviction by the Court of Chief Judicial Magistrate, Rahul Gandhi, member of Lok Sabha representing the Wayanad Parliamentary constituency of Kerala, stands disqualified from the membership of Lok Sabha from the date of conviction, which was Thursday in this case, in terms of the provisions of the Article 102 of the Constitution of India, read with Section 8 of the Representation of the People Act 1951. Now remember, Shivangi, he has 30 days time has been given by the Surat Court to seek, further recourse. He could be approaching a higher court in all likelihood. Remains to be seen whether in this case it's going to be the appellate court or the Supreme Court. But yes, he has that 30 days of time. This, of course, after the court found him guilty of his earlier remarks he made way back in 2019, just ahead of the Lok Sabha polls in the Kolar constituency of Karnataka. Now, this copy has already been sent to Rahul Gandhi, who's been addressed as ex-MP here. The copy has also been forwarded to the President's Secretariat, Prime Minister's Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, along with the Election Commission of India, all ministries, departments of Government of India, the Chief Electoral Officer of Thiruvananthapuram. This, of course, as Rahul Gandhi represents the Wayanad constituency of Kerala, who is no longer an MP, of course, and also other officers in this case. In fact, all officers and branches of Lok Sabha Secretariat have also been sent this copy, which mentions that Rahul Gandhi no longer is the Lok Sabha MP as he was earlier. Of course, we await a remark, any reaction to come in from the Congress. A setback definitely for Rahul Gandhi as we speak, Shivangi. Remains to be seen the further course of action that is taken by the Grand Old Party in this case. Right. Samiksha, this is very, very big development coming in. And Samiksha, like you were saying, we still have to wait for the Congress to really react to this, because yesterday, even after that conviction had come in, the Varma Congress had jumped into denial mode once again. They were standing up for Rahul Gandhi, even though the court had clearly convicted Rahul Gandhi, sentenced him to 2 years in jail by a Surat court in a 2019 defamation case. The conviction had come over his remarks about the Modi surname. So yesterday we saw the Varma Congress jump in defense of him. Today, once again, the opposition was bringing up the Adani Hindenburg issue once again, creating ruckus. A big ruckus was created today in the parliament, but there was no response coming in from them apart from defending Rahul Gandhi yesterday. Now we have to wait and watch, of course, to see what the Congress has to say about this big disqualification after the conviction of Rahul. And the law is the same for everybody. This has happened under the Constitution. There are three provisions in the Constitution for a lawmaker to be disqualified. The first being holding an office of profit, being of unsound mind or insolvent or not having valid citizenship. Second one is disqualification in the 10th schedule of the Constitution. And third is what has been the provision for Rahul Gandhi for his disqualification, which is the RPA, the People Act 1951, the Representation of the People Act. Ashwarya Kapoor is joining us back, our Executive Editor of Politics. Ashwarya, now this is a very big development, and it also says that the law is the same. Everyone is equal in the eyes of the law, Ashwarya. Well, absolutely, but it's high time for the Congress party, Shivangi, to now understand and also realize that it's high time for them to look over and beyond the Gandhi family, over and beyond the tag name Gandhi. They need to really look and promote those leaders who can bring back the Congress into fight, who can bring back the Congress party in fight against the BJP, who can get back their lost bastions. They have given their regional players like the Aam Aadmi Party, like the TMC, full field to play. So they need to get back their regional strength back. They need to rally behind the leaders who can get Congress back to its old glory. A Congress is no more a serious player nationally. The regional players have stopped taking Congress party even as a strong contender for opposition. So the reality is, rather than rallying around the tag name Gandhi, they need to rally behind a leader who can really lead the Congress party. And now with Rahul Gandhi being an ex-MP, former MP, it's
All right, Ashurya Kapoor, executive editor, politics, is helping us understand also the implication of this. Like Ashurya Kapoor is saying that still waiting for a reaction to come in from the Vadra Congress, from the Congress, because this is a very big story. While they were hyping up the Adani Hindenburg issue, even completely ignoring what was happening with Rahul Gandhi, completely ignoring the conviction, completely ignoring that he has been sentenced to 2 years in jail for a defamation case, and jumping in defense of him again and again. But then again, like we have been reporting here, Republic TV, the law is the same for everyone. Everyone is equal in the eyes of the law, and the Constitution applies to everybody. Now, under the Constitution, there are 3 provisions in which lawmaker can get disqualified, and this is the 3rd provision, which is a representation of the People's Act. That is the provision where Rahul Gandhi has been disqualified as an MP, so he's no longer a Lok Sabha MP. Now Rahul Gandhi is an ex-MP. I repeat, Rahul Gandhi is an ex-MP, viewers. This is the big news coming in right now on Republic TV, viewers, and this is in connection, remember, to that case, the defamation case. Rahul Gandhi was held guilty and sentenced to 2 years in jail by Surat Court in a 2019 defamation case. The conviction came over his remarks about the Modi surname, and the conviction had triggered the process of his disqualification as a lawmaker. Many calls were made yesterday itself that Rahul Gandhi should be disqualified as per law, and after that ruling, we see that the disqualification has happened just today. And Ashurya Kapoor is joining us back right now. Ashurya, like you were saying and telling our viewers, now what can we expect next? Still, complete silence from the Congress. Still. No, absolutely, Shivangi. And we need to understand that the Congress party, right now as we speak, Priyanka Gandhi, sister of Rahul Gandhi, is meeting Rahul. But the only Gandhi as a member of parliament is Sonia Gandhi now. So it is high time, once again I repeat, the directionlessness which is prevailing in the Congress party should end. The leaderlessness which is prevailing in the Congress party should end. Mallikarjun Kharge should act as a real national president, or no more just a rubber stamp. Because till now, Mallikarjun Kharge, no leader, Kharge even seriously. And that's the reality, Shivan. No one. Everyone only used to go to Rahul Gandhi, but after Rahul Gandhi now being disqualified, it's high time that the true leadership in the Congress party comes out. There are the leaders who can really lead from front, the leaders who can get the cadre together, the leaders who can get Congress back to its past glory can come back. There is no dearth of caliber of leaders in Congress party. But the only irony is that the coterie has made it such that the Congress will only survive till the rally behind Gandhi. And now, after Rahul Gandhi being disqualified as a member of parliament and him being an ex-MP, and it's going to be very interesting, viewers, that whether there is going to be an election. Is the election commission going to call for an election in Wayanad, Kerala or not? If yes, then it's going to be very, very interesting. But as far as the future of Congress party is concerned, there is a parallel meeting which our colleague Anuj is just flashing, that Priyanka Gandhi is meeting Rahul Gandhi. We will get those live visuals in front very, very soon. But at this point of time, what is happening is that this is a time of churn. Let's accept it. This is the real time of churn in the Congress party. The Congress party really needs to, the leaders, the true leaders, the leaders who represent the people, the masses in the Congress party need to come out in the open and say, it's been high time after Rahul Gandhi's disqualification. Now it's time for the true leaders to come out in the Congress party and lead from the front. Because if they don't do now, and they still rally behind the Gandhi, then there is no saving the Congress party. Shivangi. Right, and we know a key meeting has been called today. Emergency meeting of the steering committee has been called. It looks like that the Congress is calling a key meeting. Any details coming on that, Ashurya? What can we expect next? We know that Mallikarjun Kharge will be presiding over that meeting. वो राहुल जी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए सारे प्रयास किए हैं और सच बोलने वालों को
लोकतंत्र के उसूलों के अनुसार और संविधान के तहत और उसकी रक्षा के लिए और जनता के हकूक के लिए लड़ने वालों का मुंह बंद करने के लिए उनको सदन से बाहर डाला गया है। और ऐसी कौन सा बड़ी अपराध थी कि डिफेमेशन केस में जिस व्यक्ति को कोई संबंध नहीं है और वो व्यक्ति कोई बैकवर्ड क्लास का फॉरवर्ड क्लास का ये क्वेश्चन भी नहीं है, लेकिन जो लोग यहाँ पर से पैसे लेके भागे, जो नीरव मोदी होंदे हो, ललित मोदी होंदे हो, मल्ल्या होंदे हो, वो क्या बैकवर्ड क्लास के थे क्या? तो ये जब ये ऐसा एक परसेप्शन बना रहे हैं कि राहुल जी बैकवर्ड क्लास के खिलाफ बोले, और राहुल जी जो सच्चाई देश के सामने रखना चाहते थे और रख रहे हैं वो उनको जच रहा नहीं। तो इसीलिए वो अगर राहुल जी को बाहर डाले तो उनकी समस्या खत्म होती है, ऐसा उनके समझ में आता होगा, लेकिन उनकी समस्या खत्म होने वाले नहीं। ये जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का डिमांड है, जेपीसी का डिमांड है, हम रखेंगे, लड़ते रहेंगे और डेमोक्रेसी की हिफाजत के लिए हमको जेल भी जाना पड़े हम जाएंगे। हमारी पूरी पार्टी तैयार है। अब कम से कम हमारे 100-125 लोग भी जेल गए हैं, अब लड़ते रहेंगे। सर, आगे की रणनीति क्या होगी? आज 5 अरे सुनो तो भाई, एकदम तुम ही हमारा मीटिंग 5 बजे कांग्रेस ऑफिस में हमने बुलाया है। सभी सीनियर लीडर्स को वहां पर बुलाकर किस ढंग से, किस तरीके से इस लड़ाई को आगे लेके चलना, ये रणनीति हम तय करेंगे। कोर्ट का रास्ता भी खुला हुआ है आपके लिए? रणनीति बोले तो सब आ गया उसमें। जिस तरह से लेकिन मेंबरशिप गई है, इस तात्कालिक कार्रवाई पर क्या कहेंगे सर? अरे ये हमने तो कहा कि उनको सच बोलने वालों को सदन के अंदर रखना नहीं है, इसीलिए सदन के बाहर डाल रहे हैं। लेकिन सदन के बाहर भी हम बोलेंगे, सदन के अंदर भी बोलेंगे, और कहीं भी अगर ये जो पब्लिक मीटिंग होते हैं उसमें भी हम बोलते रहेंगे। ठीक है, तो सुना आपने आदर्श कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे All right, so we heard Mallikarjun Kharge once again jumping into the defense of Rahul Gandhi, even though the law clearly says that anyone under the RPA, if you fall under the RPA, there's a criminal conviction or a case, this leads to disqualification. Shazia Ilmi joining us on the phone line. A very good afternoon to you too. Right now, this is a very big story. Congress once again calling it a political vendetta, when on the other hand, everyone knows it's a constitution of India where disqualification will happen no matter what if it falls under the RPA Act. Hello. Shazia, can you hear me? Yes, I think this is a huge setback for the Congress party, and I think it's pointless for them to cry political vendetta when we all know that the due judicial process has been followed. So I think Rahul Gandhi will be, as you know, that for the next few years we won't be allowed to contest. That's one. And according to the law, Rahul Gandhi would lose his Lok Sabha seat. And disqualification also means that he won't be able to contest elections for 8 years. 2 years running with the sentence and 6 years under the Representation of the People Act 1951. So the court had made it very clear that sending a lesser punishment will send a wrong message to the public. And the purpose of defamation would not have been achieved. These are the exact words. So I think it's very clear that Rahul Gandhi would have to, mend his ways and recognize the serious mistake he made
and he was not apologetic about it. Let's see where it goes next. But I think it's been it's been made very clear, and it's a huge setback for not just Rahul Gandhi, but for his entire party. But Shahzad, we just heard Mallikarjun Kharge, where once again he is saying it's political vendetta. Congress has been saying this again and again, multiple times. But this time it is a Constitution of India. It's a Constitution of India, Shazia. I just want to go across to Amit Malviya. Amit Malviya joining on the phone line from the BJP. Amit Malviya, this is a very big development coming in where Rahul Gandhi can no longer call himself a Lok Sabha MP. He can no longer call himself a Lok Sabha MP, and still we are seeing the Congress is deciding the next move it will make at a strategy meet. And they're still defending Rahul Gandhi. Well, they can defend Rahul Gandhi till the cows come home, but the fact is that this is as per law. This is the provision in Constitution read in conjunction with the People's Representation Act that any legislator, once convicted for 2 years or more, stands to be automatically disqualified, whether he's a member of parliament or a member of legislative assemblies. Now, there have been several precedents, and Rahul Gandhi can't be above law. The truth is that he has been convicted by a court, and therefore, in the normal course, he stands disqualified. And the Congress lawyers, including senior lawyers like Abhishek Manu Singhvi, know about this. He conceded this in a media interaction yesterday. So where is the problem? Why is the Congress not willing to accept that the Gandhis are not above law? Absolutely, Amit Malviya, and that is what is very, very important to note, that everyone is equal before the law. Amit Malviya, also I would like to ask you this: how do you see things? How do you see things in the future, right, in the next few days? Because now we are seeing that it's very, very clear that if Congress has been defending Rahul Gandhi for so long, they might try another route. Do you think this might become a legal fight? Yeah, nice. All right, Amit Malviya of the BJP was joining us here. So, viewers, big details coming in right now that the Congress once again goes in a huddle. It's calling for a meet. Mallikarjun Kharge saying that it's political vendetta, that Rahul Gandhi has been helping the people, and because of the great work that Rahul Gandhi has been doing, the centre and the BJP is targeting him. Once more, a targeting jibe coming in from the Congress, even though he has been disqualified under the Constitution of India. Now we have to wait and watch exactly what will happen next, because there are some legal routes that Rahul Gandhi can take next. Of course, our colleagues will tell us more about that. और वो एविडेंस नहीं दे पाए, उस पे ये सजा होती है. राहुल गांधी जी किया है. राहुल गांधी संसद पहुंचे हैं. कल ही सूरत की अदालत से उन्हें मानहानि के मामले में 2 साल की सजा सुनाई है. उनकी सदस्यता को लेकर राहुल गांधी जी जेपी नड्डा कह रहे हैं कि आपने ओबीसी समाज का अपमान किया है. राहुल जी, एनी कमेंट सर? राहुल जी All right, viewers, so this is a big story. Rahul Gandhi has been disqualified from the Lok Sabha, and this is the news, the breaking update that we broke first on Republic TV today. Shortly, the Congress will go into a huddle meet around 5 p.m. Mallikarjun Kharge also once again saying that political vendetta, the same narrative from the Congress coming in. Let's go straight to Rakshita from our Delhi studios. Rakshita, I'm coming across to you. This is a very big story which has been broken first on Republic TV, and this also has many political and legal implications which we can expect in the next few days. Rakshita.
Absolutely, absolutely. Massive setback this for the Congress party and for Rahul Gandhi, of course. On your screens, viewers, you can see how it was Rahul Gandhi himself in 2013 who was actually backing this sort of disqualification. And you just see the turn of fate today. He is disqualified as a lawmaker because of this very ordinance that he tore. He was against, and today he stands disqualified from the Lok Sabha. So massive political, we can see drama that is of course set to now pan out. Congress is in a huddle. Already the Congress has been struggling to revive its fate. There was a Bharat Jodo Yatra we saw a few days back, and it was seen as a kind of a new revival for Rahul Gandhi, becoming the face yet again for the Congress party. After that, we saw how what happened in UK and the backlash that he has faced, and on top of it, the trouble is just only mounting for Rahul Gandhi. Now he is disqualified. The Lok Sabha Speaker has taken his decision. Viewers, let us remind you that it was this yesterday that a Surat court had convicted him in a criminal defamation case where he had made some controversial remarks. Aishwarya Kapoor, our executive editor for politics, is joining us on the phone line. Aishwarya, we were just talking about how the Congress has been struggling to keep its house together, to revive itself in the country as a political party. And after Bharat Jodo Yatra, we have seen that there are numerous occasions where Rahul Gandhi's gimmicks are only backlashing, are only failing him even further. Well, at this point of time, we just need to see there. You are going to see a surge in meetings. You are going to see surge of these protests. You are going to see Congress hitting the roads. You are going to see Congress party trying to rally behind Rahul Gandhi, trying to show that they're all so loyal to the Gandhi. But at the end of the day, will someone at the end of the day really think about the Congress party? Will someone really think from where to where Congress party has been brought just because they want to rally behind one family? Just for one point will they think that Rahul Gandhi has been disqualified as a member of parliament? Disqualified on rules. They cannot term political vendetta. The courts, are they saying that the courts are also working on the behest of the government? Is that the allegation of the Congress party? Then they need to stand in front of the courts and say that. Can they? No. It's only in the media they come out and they hold the similar posture of political vendetta every time there is something to do with Rahul Gandhi, but this time we need to see he has been disqualified. I would urge, if we can put that notification back on, you read. He is no more a member of parliament. He is an ex-MP. He is an ex-MP now. The Congress party should get up and smell the coffee. Yeah, we have K.C. Venugopal speaking. K.C. Venugopal, National General Secretary, Congress. Rahul Gandhi as a parliament member. The day when Rahul Gandhi raised question on Adani against the Prime Minister, that point of time they start this type of conspiracy to silence the voice of Rahul Gandhi. The ministers of Modi government several times, when a false allegation against Rahul Gandhi inside the house, the Lok Sabha, as per the tradition and the rules, there is a custom to give the concerned member for a clarification statement. That also they never allowed to speak out. This is a clear case of anti-democratic dictatorship attitude of BJP Sarkar. They are now putting Rahul Gandhi as like Abhimanyu. Four corner they are cornering with conspiracy. Once they sent Congress reactions coming in.
from over Rahul Gandhi being disqualified as a lawmaker, as an MP. Lok Sabha Speaker has taken this decision and Rahul Gandhi has today been disqualified. Political storm, of course, it's erupting, and reactions from all corners. Congress, of course, yet again calling it targeting, and we've seen for the past 24 hours how they've been calling it a targeting of Rahul Gandhi and silencing. Aishwarya, our executive editor for politics, Aishwarya is back with us on the phone line. Aishwarya, we are seeing this for the past 24 hours and still we are getting some tweets from Congress party, even Priyanka Gandhi Vadra, who's saying that we not be silenced. They're talking it, they're calling it freedom of expression, that this is, this is kind of, silencing of the opposition. And they are kind of now justifying the remarks he has made against a community. On one hand, they talk about Bharat Jodo and they talk about peace and love and unity. Well, absolutely. But first, if we could directly go to Congress leader Lokesh Jindal. Lokesh Jindal, is the Congress party still calling it a political vendetta, Lokesh? Are you still calling it political vendetta, Lokesh? Aishwarya, do you have any basis to justify BJP's action? The due process, is this BJP's action or is this the court action? No. Lokesh, is this court action or is this BJP's action? Lokesh, I'm asking you point blank. Please answer. Please do so. The Criminal Procedure Code 202, was it followed in essence? No. Defamation Law 101, was it followed in essence? No. Why is it that the complainant went in March 2022 to the Gujarat High Court to stay the entire proceeding, claiming he has all the rights of evidence? Lokesh Jindal, you should know better. Every Indian citizen has that right to do so. How come suddenly evidences emerged in February 2023? Just after the Hindenburg scam? No, listen. Aishwarya, media is one of the fourth pillars of democracy. I would repeat again. Media is the fourth pillar of democracy. Opposition holds the executive responsible. That's how democracy functions. Now you cannot cut the head to cure a headache. BJP is cutting its nose to spite its face. Again, I'm repeating. This tendency of doing away with the opposition, to establish a single party rule, to completely subvert the democratic system is disastrous. It is dangerous for the entire political system altogether. I would again repeat, over here, Lokesh Jindal, strong with Rahul Gandhi. In fact, the entire country will stand strong. Lokesh Jindal, and this will go down in history as one of the... Lokesh, you are saying the whole country stands. I am asking whether the Congress party stands with Rahul Gandhi anymore or not. Doesn't the Congress party realize that it's high time? We are proud of that you get a real leader at the helm of affairs, Lokesh. No, listen. Rahul Gandhi is a former MP now, Lokesh. The leader who in 2013 tore the ordinance that would have protected any convict against disqualification, that very leader who has always been committed to clean politics, the leader who has stood for what is right, and today he is standing for what is right. We are proud that he has taken a stand for democracy. Lokesh, and he will come out stronger from this entire turmoil. In your excitement, are you forgetting, very humbly I am saying, are you forgetting that the man you are referring to is already on bail on one case, and he has just taken a 30-day bail in this criminal defamation case as well? The man about whom you are talking so highly has brought Congress party to a level which could have not only unheard, unimaginable. Don't you feel, Lokesh, as a real true congressman, I am asking you, Lokesh, please, and I'm asking you as a political reporter today. I'm asking you, don't you feel that it's high time that today a Congress party get a leader at the helm of affairs who can once again get back Congress into the fray? Get back Congress into the competition. Don't you want to defeat the BJP? At least don't you want to give BJP a competition? Please answer, Lokesh. Let me clarify what a congressman is. A congressman is not someone who simply belongs to the Congress party. Is not equal to Gandhi. Please, Aishwarya, give me an audience. Give me a fair audience. Please. Congressman means somebody who is dedicated to an ideology.
an ideology which believes in... But what is that ideology? An ideology which No, believes Lokesh, in I have to stop you. I didn't want to. Ideology... Lokesh, I didn't want to intervene, but I have to. What ideology is this, Lokesh Jindal? That ideology is to go on overseas ground and question your own democracy. What is that ideology? To question your own government on foreign land, Lokesh? It's unheard of. Aishwarya, if you will not allow me to answer, if you'll keep answering, keep asking me questions, how will I answer because you used, Lokesh, because you used the word ideology. Allow me to answer one question. I am saying what ideology is that? Please. Answer, let me explain the ideology to you. When the laws are formulated by the representatives of the people. Lokesh Jindal, I'm stopping you there. I have senior Congress leader Acharya Pramod Krishnam joining. Acharya ji, अब राहुल गांधी सांसद नहीं पूर्व सांसद है. आपकी बात सत्य हो गई. आपको मालूम था आचार्य, आपने पहले ही कहा था कि कांग्रेस के नेता राहुल नहीं प्रियंका गांधी होने चाहिए. आपको मालूम था क्या आचार्य जी? सीधा सीधा पूछ रहा हूँ, जवाब दे दीजिए आज तो. जी आचार्य. So I am going to ask that question to Acharya Pramod Krishnam again, Lokesh Jindal, because you know, I know so for a fact that at least viewers, there is the top leadership. There is no more an old school and a new school of thought in Congress. They're all one, and they are divided right in the middle. Can Rahul Gandhi really lead the Congress? And now when he has been disqualified on a criminal conspiracy case, Lokesh Jindal, if you can still hear me, there are leaders who are calling out. So that's the fact, viewers, that what has happened is that Rahul Gandhi has been... जा रहे हैं जब देश आज भारत के लोकतंत्र को दुनिया में सबसे मजबूत लोकतंत्र में गिना जा रहा है और हम समाजों को तो अपमानित कर ही रहे हैं, भारत को भी अपमानित लंदन में जाकर के कर रहे हैं. और अब जब न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत कोई निर्णय हुआ है, 4 वर्ष के न्यायिक पूरी प्रावधानों को, पूरी प्रक्रिया को पालन करके पूरा उनको सारा अवसर देकर एविडेंस रखने का, अपना पक्ष रखने का, अपने डिफेंस के विषय को रखने का जब निर्णय आया तो कांग्रेस के नेता उस निर्णय के ऊपर अपशब्द कर रहे हैं, न्यायालय के ऊपर अपशब्द कर रहे हैं, न्यायिक प्रक्रिया पे अपशब्द कर रहे हैं. इस देश में न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार शासन चलता है और जो सर्वोच्च न्यायालय ने डिस्क्वालिफिकेशन का जो निर्णय दिया है उसके अनुरूप जो जैसा अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ कार्रवाई हुई है, उचित दिशा में उसी दिशा में कार्रवाई हुई है. देखिए, जो देश में कानून की स्थिति है और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो पूर्व में निर्णय दिया गया है उसके अंतर्गत ये स्पष्ट है कि आपराधिक विषयों में अगर 2 वर्ष की सजा किसी को भी होती है तो वो डिस्क्वालिफिकेशन है और उस कानूनी प्रावधान के अनुसार ही लोकसभा सचिवालय ने उनके डिस्क्वालिफिकेशन के विषय को. लेकिन मूल विषय जो है, और आज सुबह से मेरे को ओबीसी समाज के लोगों के कॉल आ रहे हैं कि क्या कोई राष्ट्रीय राजनीतिक दल का नेता एक सरनेम पे एक समाज को, पूरे समाज को क्या चोर कह सकता है? क्या ओबीसी समाज के लोगों को, क्या छोटे समाज के लोगों को अपने सरनेम के कारण अपमानित होना पड़ेगा? क्या कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी को छोटे समाजों को अपमान करके और अपने अहंकार में आकर के अगर वो माफी भी नहीं मांगते तो क्या इस अहंकार को ही वो अभिव्यक्ति की आजादी कहते हैं? ये अब्यूज कर रहे थे, क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे थे. गाली देने में और आलोचना करने में अंतर होते हैं. कोई लोकतांत्रिक बहस नहीं कर रहे थे राहुल गांधी, एक ओबीसी समाज को गाली देने का काम कर रहे थे जो उनकी इस कृत्य के कारण उनको सजा. Central Minister Bhupendra. So reactions now. Reactions are. करोड़ों रुपए डूब गए, 10 लाख करोड़ डूबे लोगों के, बैंकों का पैसा डूब रहा है, उसकी जांच तक नहीं होगी? इतना बड़ा फ्रॉड, इतना बड़ा प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में जो कुछ हुआ है उसकी जांच होना चाहिए. कितनों को जेल भेजोगे? हम सब जाने तैयार हैं. हाँ ठीक है, डिटेन करने के लिए हम तो और जहां जाएंगे चले जाएंगे,
लेकिन जेपीसी करवा कर रहेंगे, घर घर जाएंगे, गांव गांव जाएंगे, पूरे देश में जाएंगे और मोदी जी को मजबूरी में ये जेपीसी लागू करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो हम आखिरी दम तक इनसे हिसाब मांगेंगे। अब सर आगे की रणनीति आपकी क्या होगी? उधर वो तो खड़गे जी तय करेंगे। उधर नड्डा जी कह रहे हैं कि अरे नड्डा जी, अरे एक बात सुन लो, नड्डा जी आप ब्राह्मण हैं, उच्च वर्ग के हैं, आपने कभी ओबीसी के बारे में कभी बात की है? अरे ओबीसी का आरक्षण किसने किया है? उस समय जनता दल में हुआ, आपने जनता दल का समर्थन छोड़ दिया था मंडल कमीशन की वजह से। आप कहां की ओबीसी की बात करते हैं? आप लोगों को उम्मीद थी इतनी आनंद? और दूसरी बात यह है, ये कह रहे हैं मोदी समाज। अरे मोदी में तो बनिया भी हैं, ओबीसी भी हैं और अनेक लोग हैं, अपर कास्ट भी है। मोदी बनिया अपर कास्ट हुआ हमारे यहाँ, जैन है। तो ये का झूठ बोलने वाले, मैं समझता हूं कि बीजेपी और आरएसएस में झूठ बोलने वालों का कोई मुकाबला नहीं। उम्मीद थी आज की आज फैसला? अरे मालूम था, उम्मीद क्या थी, मालूम था होना ही है। क्या कारण है कि 3 साल पहले एक मुकदमा दायर होता है और चुनाव, उसके बाद 2017 का उनका भाषण है, उसके बाद जो जिसको आपत्ति है वो कहता है कि अभी मैं इसमें कोई कार्रवाई नहीं चाहता, और वो कहां जाता है हाई कोर्ट में कि स्टे करवा देता है प्रोसीडिंग्स। क्यों करवा देता है? क्योंकि उसको लगता है कि जो वहां जज साहब हैं वो राहुल गांधी जी को रिलीफ दे देंगे। क्योंकि राहुल गांधी जी ने क्या कहा है? राहुल गांधी जी ने यही तो कहा कि बड़े बड़े चोर हजारों करोड़ रुपए लेकर देश से भाग गए, नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौक से, इनको वापस क्यों नहीं लाते? मोदी जी ने कहा था कि नहीं कहा था चुनाव के पहले कि मैं काला धन लाऊंगा, एक एक परिवार को 15-15 लाख रुपए दूंगा? कहा था कि नहीं कहा था? लाओ ना काला धन। इनके राज में काला धन आया नहीं है, यहां से गया है। प्रमाणित रूप से हम कह रहे हैं, प्रमाणित रूप से मैं कह रहा हूं कि जितना काला धन स्विस बैंक में मोदी जी के जमाने में जमा हुआ है और किसी के राज में नहीं हुआ। अगर हाईकोर्ट से आपको उम्मीद है रिलीफ मिल जाएगी, तो फिर लोकसभा सचिवालय इतनी हड़बड़ी में क्यों? क्योंकि डरते हैं, राहुल गांधी से डरते हैं, भाजपा डरती है, पूरा संघ परिवार डरता है। थैंक यू सर। वेरी क्लोजली मॉनिटरिंग द So that was right, and I have senior Congress leader आचार्य प्रमोद कृष्णम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आचार्य जी, आपको तो लगता है पहले से मालूम था? आपने तो पहले ही कह दिया था राहुल गांधी नहीं, प्रियंका गांधी होनी चाहिए कांग्रेस की नेत्री। आचार्य जी, देखिए ऐश्वर्या, ये लोकतंत्र का काला अध्याय है। दिस इज ब्लैक डे फॉर डेमोक्रेसी। और जिस तरह से राहुल गांधी जी का कन्विक्शन हुआ, और कन्विक्शन में एक अपील करने की उस अवधि का इंतजार भी नहीं किया गया, और भारतीय जनता पार्टी सरकार और लोकसभा सचिवालय ने आनंद फानन 24 घंटे के अंदर राहुल गांधी जी की सदस्यता को रद्द किया है। उससे ये साफ हो जाता है ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, ये विपक्ष के नेताओं के खिलाफ नफरत है जो बीजेपी के दिल में भरी हुई है, विपक्ष को मिटाने की एक साजिश है। तो आज का दिन लोकतंत्र के इतिहास में काला दिन के रूप में जाना जाएगा। नहीं आचार्य जी, आप क्या चाह रहे थे कि कोर्ट धीरे चले? आप क्या चाह रहे थे कि संसद का सेक्रेटेरिएट धीरे काम करे, क्योंकि बात किसी और की नहीं, राहुल गांधी की हो रही है, इसलिए आचार्य जी यहाँ भी वीआईपी ट्रीटमेंट? नो, बिल्कुल नहीं। अदालत में जो मुकदमा दर्ज हुआ वो पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत दर्ज हुआ। फिर अदालत में जो फैसला दिया उसमें अपील की अवधि भी शामिल करी। ऐसी कौन सी जल्दी थी, ऐसी कौन सी आफत आ रही थी, ऐसा कौन सा काम रुके जा रहा था जो राहुल गांधी जी को कन्विक्ट हुए अभी 24 घंटे नहीं भी थे? कम से कम अपील करने का मौका तो दिया जाता। तो इससे ये बात सिद्ध होती है कि ये बीजेपी पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत काम कर रही है। लेकिन अब आचार्य जी, आप जैसे कांग्रेसियों को तो खुश होना चाहिए। आई थॉट दैट यू विल बी हैप्पी आचार्य प्रमोद कृष्णन, दैट नाउ द लीडर यू वांटेड टू लीड, प्रियंका गांधी, शी कैन कम इन फ्रंट। आपको तो खुश होना चाहिए। नहीं, क्या राहुल गांधी की
सदस्यता समाप्त होने से, राहुल गांधी जी की लोकसभा की सदस्यता समाप्त होने से राहुल गांधी समाप्त हो गए राजनीति में। अरे हम जनता की अदालत में जाएंगे, हम जनता की अदालत में जाएंगे, हम हर अदालत में जाएंगे, क्योंकि हम अब ये मानते हैं कि हमसे कोई और सहारा बचा नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक सहारा है, वो है जनता का। और हम जनता की अदालत में जा करके कहेंगे कि हमारी गलती कुछ नहीं है, हमारा गुनाह कुछ नहीं है, लेकिन हमें सजाएं दी जा रही हैं, हमें बदनाम किया जा रहा है, हमें बर्बाद करने की साजिश हो रही है। तो सिर्फ और सिर्फ अगर कोई बचा सकता है तो जनता की शक्ति बचा सकती है। तो जनता ही जनार्दन है लोकतंत्र में। ऐसे हम जनता की अदालत में जाएंगे, विपक्ष चुप नहीं बैठेगा। थैंक यू वेरी मच। चुप नहीं बैठेंगे। थैंक यू वेरी मच आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ आई एम जॉइंड बाय सीनियर कांग्रेसमैन एंड फॉर्मर मल्टीपल टाइम चीफ मिनिस्टर Mr. Harish Rawat. Mr. Harish Rawat, how do you see so? Are you also calling it political vendetta, sir? Hello, I'm Harish Rawat. जी हरीश जी, मैंने कहा क्या are you also seeing this as political vendetta? Yeah, definitely. It is a planned vendetta. The moment Rahul Gandhi raised the issue of Adani's how he became the wealthier from 609 to number 2 in the world ranking, तो उस दिन से ये तय हो गया था कि अडानी को बचाना है तो राहुल गांधी को संसद में नहीं होना। बट ये तो कोर्ट का निर्णय है। 4 साल में हम कोर्ट पर नहीं उठा रहे, 4 साल से केस चल रहा था, तो पैरोकारी पूरी ताकत लग गई कि इसका फैसला जल्दी से जल्दी आए। और मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि फैसला आने में और उनकी सदस्यता समाप्त होने के आदेश निकलने में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इतनी देर कैसे कर दी। उनको तो 1 ही घंटे के अंदर आदेश भी निकाल देना चाहिए था, मेंबरशिप उनकी समाप्त हो जाए, ताकि कहीं अपील न कर ले। कोर्ट कह रहा है कि अपील के लिए 1 महीने का समय देते हैं। हाँ, कोर्ट कहता है 1 महीने का समय देते हैं, और ये मेंबरशिप समाप्त करने के लिए इतने तत्पर हैं ताकि राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी जी ने जिस दिन से कहा कि मुझे समय दीजिए, मैं अपने पर लगे आरोपों का पार्लियामेंट में जवाब देना चाहता हूं, लोकसभा में जवाब देना चाहता हूं, भाजपा हिल रही है, डरी हुई है उस दिन से, क्योंकि अडानी का सत्य देश के सामने आएगा तो भाजपा नंगी हो जाएगी, सरकार नंगी हो जाएगी, इसलिए सब किया गया है। पर हरीश रावत जी, आप एक पुराने कांग्रेसी हैं, आपने कांग्रेस का समझे, आपको नहीं लगता कि लॉ से ऊपर कोई नहीं है? कोर्ट ने उनको सजा दी और उसके बाद नियम के अनुसार अगर आप होते, चाहे होता, तो सबके साथ लॉ से ऊपर कोई नहीं है। हम कानून का दरवाजा भी खटखटाएंगे, लेकिन लोकतंत्र में जनता से ऊपर भी कोई नहीं है। भगवान और जनता, हम दोनों की शरण में जाएंगे, हम जनता जनार्दन की शरण में जाएंगे। तो आपको लगता है कि जनता आपकी मदद करेगी? 78 में इससे शक्तिशाली लोग थे, बड़े बड़े पराक्रमी लोग थे, देश के इतिहास को बनाने वाले लोग थे, और जब उन्होंने इंदिरा गांधी जी पर ज्यादतियां की और संजय गांधी जी पर ज्यादतियां की, तो देश की जनता उनके पक्ष में आकर के खड़ी हुई, और हमें पूरा भरोसा है कि देश की जनता जनार्दन राहुल गांधी के पक्ष में आकर के खड़ी होगी। एक नौजवान आप लोगों के अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, एक विपक्ष की लड़ाई लड़ रहा है, और आज मुझे बेहद खुशी है इस बात की, जो हमसे असहमत राजनीतिक दल भी थे वो भी आज राहुल गांधी जी के पक्ष में आ रहे हैं, इस बात को कह रहे हैं अन्याय है, गलत है। लेकिन एक बार कहिए कि इसके अंदर उनका कुछ भी नहीं है, जो भी है जो भी है लिखी है, और इसके ऊपर कोई नहीं, तो आप उसको कैसे गलत पाते हैं? उससे आप कैसे उसको नकारें? आक्रमण करते हैं, इसका मतलब है सारे नेहरू बिरादरी पर आक्रमण करते हैं। ये तो उड़ीसी में बातचीत में इस तरीके की बातें होती हैं, और इसको एक ऐसा प्रसंग बनाना, और जिस तरीके और जिस व्यक्ति ने बनाया है, ही इज नॉट द ऑर्डिनरी मोदी, वो भाजपा का शीर्ष लीडर्स में से हैं गुजरात के, ये जो फॉर्मर मिनिस्टर एंड MLA, पार्टी का शीर्ष फंक्शनरी है। हाँ, तो ये केस जो है इट वाज स्पॉन्सर्ड बाय द भाजपा। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि क्योंकि राहुल गांधी हैं तो कांग्रेस पार्टी को उम्मीद नहीं थी कि ये एक्शन हो सकता है। Somewhere or the other, it's being felt that only because it was Rahul Gandhi,
or it is Rahul Gandhi, that the Congress party feels that he should be over and above the law, sir. Is that true? ये इसके विपरीत बात है। यदि ऐसा नहीं होता, यदि मेंबरशिप नहीं जाती उनकी, तो हमें आश्चर्य होता कि भाजपा लीडरशिप कहीं लोकतंत्र में ये तो नहीं समझ रही है कि एक्सट्रीम नहीं करना चाहिए, और उनको वो ये समझ तो नहीं जा रहे। ये तो उनका एजेंडा था टू एलिमिनेट दी अपोजिशन पार्टी, तो उस एलिमिनेशन के प्रोसेस में लीडरशिप को समाप्त करने के लिए सब किया जा रहा है। ये तो हमें आश्चर्य होता है यदि वो नहीं करते। Okay, so that was senior Congress leader, multiple time Chief Minister Harish Rawat speaking to Republic, saying that the Congress is calling it as a political vendetta and Congress is going to hit the roads on this issue. But as far as the Congress party is concerned, it is high time that now at least the Congress party understands that just by rallying behind a Gandhi, rallying behind a family is not going to get them anything. They are not going to achieve anything. And at the end of the day, if the Congress party really wants to regain the trust of the people, they would have to get the true leaders, the leaders who are connected with the ground, to the people out. But as far as today's developments are concerned, as we speak, viewers, there's a parallel meeting happening between Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi. Yes, the brother and sister are meeting. The former member of parliament, Rahul Gandhi, is meeting Priyanka Gandhi as we speak. And while that also happens, there is another meeting called at 5 p.m. by the AICC president. Yes, I've joined in by a leader on the phone line. If I could just be told the name again, please. Yes. So I have senior BJP leader, Javeer Shergill. Javeer, you are one of those who understands the Congress also pretty well. The Congress is calling it as political vendetta, Javeer Shergill. How does the BJP respond to that? It's tragic that in today, for Congress, the law of the land, the rule book, the Supreme Court judgments have become Kala Akshar Bhains Barabar. The Congress's objection to disqualification stinks of Congress's double standard and hypocrisy. Mr. Rahul Gandhi himself supported the law and rather tore the ordinance, lowering the bar of conviction from 5 years to 2 years. Today, when the law supported by Rahul Gandhi has been implemented on Rahul Gandhi, Congress is crying democracy is in danger, which reeks of double standard and hypocrisy. The truth of the matter is Congress wants a free pass, an open license for Mr. Rahul Gandhi to break law, to abuse backward community, to malign judiciary, to malign institutions by raising this false bogey that there is dictatorship in the country. I hope the Congress brigade now learns a lesson that neither the court of law nor the court of public will tolerate Mr. Rahul Gandhi's irresponsible, factually incorrect and insulting statements towards any institution, people, community and the nation. No, but Javi, they are not only calling their parallel meetings, but they're also hitting the roads. They are saying that they're going to protest not only in the parliament, Javi, but they're also going to protest on the streets. And not only of the national capital, but they say across the country, as they are calling it as the black day in Indian democracy, Javi. So they seem to be backing Rahul Gandhi. This protest is nothing but a hollow PR stunt being organized by Mr. Rahul Gandhi's sycophant Darbaris to please Mr. Rahul Gandhi. This protest will not resonate with the people of India. That's the point which you should understand. The rule of law and Supreme Court judgment. The Supreme Court judgment of 2013 and 2018 is very clear that an MP will be immediately disqualified if his conviction is not stayed. Mr. Rahul Gandhi and his protesters can keep acting like jumping jacks, but the People's Court and neither the Court of Law will be swayed or weighed by these cheap PR stunts. Rather, by the demonstrations, by the protest, the Congress is validating, accepting Mr. Rahul Gandhi's politics of abusing backward communities. Let the nation not forget, and through Republic I want to reiterate, Mr. Rahul Gandhi has not been convicted in some freedom struggle case. Mr. Rahul Gandhi has not some won for war for the nation. Mr. Rahul Gandhi has not come back from Kargil. He has been convicted of a crime of abusing the OBC community of this country, for which he does not deserve a badge of honor, for which he deserves the imprisonment and the fine which he has been given for the court of law.
But Javier Shergill, I would just want you to say for 30 more seconds, the terminology which you use, the coterie of Rahul Gandhi, those people who believe just to rally behind a Gandhi can help them achieve their target really need to smell the coffee. Javier, they are so far away from the truth, from the reality. Javier. That the psychophancy within the Congress party has become sickening, nauseating, that they are hero-worshipping a leader who has made abusing the backward community, defaming the nation on foreign soil as his favorite hobby. The Congress existence today is in question mark because of Mr. Rahul Gandhi's misadventures. Rather than giving a reality check to Mr. Rahul Gandhi, advising them to keep a control on his tongue by garlanding Mr. Rahul Gandhi, the entire Congress brigade is guilty of rubbing salt on the wounds of the OBC community. Absolutely, Javier. Thank you very much. And I'm just going to go to Rahul Gandhi's residence. But first, Akhilesh Yadav, Samajwadi Party leader, former Chief Minister of Uttar Pradesh. Akhilesh Yadav is speaking. If you could just listen in to Akhilesh Yadav first. लोग किसी की हत्या नहीं कराते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने संविधान की हत्या करने की शुरुआत कर दी है। और जहाँ तक हमारे जो डिप्टी सीएम हैं, डिप्टी सीएम को कोई मरवाने वाला नहीं है। उनका झगड़ा तो मुख्यमंत्री जी से है। अगर उनको जान का खतरा हो, कुर्सी का खतरा हो, तो वो किससे है? मुख्यमंत्री जी से, हम लोगों से नहीं है। हम तो उन्हें कुछ दे सकते हैं, समर्थन दे सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं। अरे हम लोग उनसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, वो जानते ही नहीं इस बात को। सर वो कह रहे हैं कि हम अखिलेश जी को सम्मानजनक शब्द से कहते हैं और वो हमें जहरीले शब्दों का इस्तेमाल। कभी जहरीला शब्द इस्तेमाल किया हो तो बताइए, क्या जहरीला लगता है उन्हें? मैंने कोई जहरीले शब्द से उन्हें कहा हो तो बताओ। हम तो यही कहते हैं कि Directly go to our colleague Anuj, who's standing right outside the residence of Rahul Gandhi. Yeah. Anuj, you just flashed that information that Priyanka Gandhi has come to meet Rahul or then vice versa. What's the latest now? Anuj, over to you. What's the latest there? Well, Aishwarya, at this point in time, let me tell you that Rahul is inside. Rahul Gandhi is very much inside, what we have been told, but I can see the alert of the security. So this means that there is someone, either Rahul Gandhi is moving outside or it is expected that Priyanka is going to come back again because she left earlier. But Rahul Gandhi is very much inside. Prior to that, Aishwarya, let me also tell you that there are several reactions which is coming in from the Congress party, whereas the Congress party is again backing Rahul Gandhi. But if we talk about the important meeting which is already lined up for 5 p.m, this is going to happen at the AICC headquarters, that's the Congress headquarters in the national capital. So this is the meeting to decide the future course of action, that what exactly is going to be the next course of action. On the other hand, I'll ask my video journalists to continue, give you the sense from the ground that what exactly is happening, because the security has been already increased. On the other hand, yes, we are expecting some action, because this exactly is the exit gate from where Rahul Gandhi leaves, or if somebody enters. Anuj, absolutely. Carry on, Anuj, carry on. Well, exactly, Aishwarya. We are just waiting if anyone is going to come, if Priyanka is expected to come over here. Normally, when we used to see this kind of alert outside Rahul Gandhi residence, then this is some kind of movement. Either Rahul Gandhi is going outside or someone else is coming inside. So this is something what we are expecting, because the alert could be seen of the security. Whereas if we talk about a 5 p.m. meeting, this is going to be an important meeting of the Congress party, where they are going to decide. I'm just going to stop you briefly there. I've joined in by the Congress spokesperson of Punjab, Hardeep Singh. Anuj, I'm just going to briefly stop you there. Yes, I've been told that CISF has added an outer ring to security at Rahul Gandhi's residence. But I have Congress leader Hardeep Singh Kingra joining in. Hardeep Singh ji, why can't the Congress party for once accept the rule of the law? It's the rule of the law, Hardeep Singh. Yeah, look, but this is the rule of the law of the lowest court. There are courts higher than this. There is a court which is a court of the district judge. So, there is a court are you demeaning that court? High court. So don't. So the decision of the honorable court will have to be contested. Are you saying on national television, just because it's a district court, it's a lower court, you will not accept the judgment? No, I never said we will not accept judgment. I said there is a judicial review in the higher court.
and the Congress will file an appeal in the higher courts to have this judgment reviewed. That's it. How can I say that we don't accept the verdict of the court? I never said it that we can't accept the verdict of the lower court. What I'm saying, court Mr. of any Kendra, well, if you it's a court verdict. No, we will have to good on accept your it. part. Good But on at your the same part that time, you do. there is a judicial why is review the Congress available party for all the protesting? court decisions. That is the strength of the judicial decisions, that you can file a review. Well, it is. Well, it is. But according to the law, sir, if a 2-year or more criminal... Yes, okay, I am getting that movement. Now, yes, I can just see these live visuals coming in. Over to you, Anuj. Anuj, over to you. Aishwarya. Yes, Aishwarya, this is Sonia Gandhi. Aishwarya, this is Sonia Gandhi who has just reached at the residence of Rahul Gandhi. Now this is going to be the mother who is going to meet the son after the disqualification. Yes, Sonia Gandhi is there. We have seen in the visuals, this is the carcade of Sonia Gandhi, where Sonia Gandhi has just entered the residence of Rahul Gandhi. Prior to that important meeting at 5 p.m, this is to happen, and this is going to be the very, very important discussion where Sonia Gandhi and Rahul Gandhi is meeting now. This meeting is going to decide the future course of action, what exactly is going to happen with Rahul Gandhi and what is going to be the future of the Congress party and what is going to be the future of Rahul Gandhi. So that is going to be the very, very important meeting, because every time what we have seen, Aishwarya, you and me both have seen, this is Rahul Gandhi who is visiting Sonia Gandhi's residence. But this is Sonia Gandhi who is coming to Rahul Gandhi's residence, and Sonia Gandhi now at this point in time is going to meet Rahul Gandhi as he is no more a MP. As he is no more a MP. इस समय जो देखे तस्वीरें देखिए ऐश्वर्या, हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, सोनिया गांधी पहुंची है राहुल गांधी से मिलने। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हो जाती है, क्योंकि जो 5 बजे एक बैठक है जिसमें ये डिसाइड करना था कि आगे का फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, उससे पहले जो मदर हैं, जो माता जी हैं राहुल गांधी की, सोनिया गांधी जो प्रेसिडेंट रही हैं, जो कर्ता धर्ता कहलाती हैं कांग्रेस पार्टी की, वो राहुल गांधी से मिलने आई हैं। तो ये महत्वपूर्ण बैठक ये दर्शाएगी ऐश्वर्या, इसमें ये सब डिस्कशन होगा कि आखिर आगे की क्या रणनीति है, राहुल गांधी के फ्यूचर की क्या प्लानिंग है, आखिरकार कौन चेहरा रहेगा। क्योंकि देखिए अभी तक जितनी भी लॉबी हमने देखी है वो लगातार राहुल गांधी को बैक करती रही है। अभी भी देखिए सुबह से एक के बाद एक रिएक्शंस आ रहे हैं। कल से कांग्रेस पार्टी इस चीज में लगी थी कि किस तरीके से यूनिटी दिखाई जाए, ऑपोजिशन पार्टीज को साथ में लेके आके आज पार्लियामेंट से विजय चौक तक का एक मार्च निकाला गया और उसमें दिखाया गया, दर्शाया गया कि एक यूनिटी है और जो भी राहुल गांधी के साथ हुआ है वो गलत है, ये कहना है कांग्रेस पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी का। लेकिन उसके बाद जो होता है ऐश्वर्या वो सबके सामने है कि रद्द कर दी जाती है सदस्यता। अब सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस पार्टी के एक लीडर जो एमपी हुआ करते थे वायनाड से, जो पहले अमेठी की सीट हारते हैं, अब वायनाड से भी एमपी नहीं रहे और वो प्रेसिडेंट भी नहीं है। तो आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी कहां खड़े होते हैं, व्हाट इज द स्टैंड, राहुल गांधी कहां खड़े होते हैं, इस पे अब डिस्कशन होगा सोनिया गांधी और राहुल गांधी का। देखिए सोनिया गांधी राहुल गांधी के घर हमने अमूमन नहीं देखा है कि आती हो। हमेशा पहले अगर इतिहास की बात करें तो यही देखा गया है कि जितनी भी इंपॉर्टेंट बैठक है, जितने भी महत्वपूर्ण डिस्कशन है, राहुल गांधी सोनिया गांधी के घर जाते हैं, प्रियंका गांधी राहुल गांधी मिलकर सोनिया गांधी के घर जाते हैं। लेकिन अभी जो तस्वीरों में देखने को मिल रहा है वो ऐतिहासिक तस्वीरें हैं, क्योंकि देखिए इस समय सोनिया गांधी खुद राहुल गांधी के हो रहा है, क्योंकि एक माँ अनुज आप बिल्कुल हिंदी में बोलते रहिए बिकॉज यू आर लाइव ऑन बोथ आवर चैनल्स, बट आई वुड जस्ट वांट टू ब्रिंग थिंग्स बैक टू पर्सपेक्टिव दैट दिस इज हैपनिंग बिकॉज अ मदर इज आल्सो गोइंग टू मीट हर सन. A mother is also going to meet her son, a son who has just lost एक माँ अपने बेटे से मिलने जा रही है जिस बेटे को अभी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है. और दिक्कत यह है अनुज कि कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि जो गांधीज हैं, द गांधीज आर जस्ट ओवर एंड अबव द लॉ. कि अगर आप राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, प्रियंका गांधी है, आपको याद होगा जब इनसे एसपीजी का कवर हटाया गया था तो ऐसे हो गया था जैसे हिंदुस्तान में भूचाल आ गया है. यही नियम, यही लॉ हर एक सांसद के लिए है, चाहे वो राहुल गांधी हो या आप हो या मैं हूं या कोई भी हो. तो उनको ऐसा लगता है क्योंकि राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, सोनिया गांधी है, क्योंकि गांधी है तो वो नियम से ऊपर है. दे आर नॉट ओवर एंड अबव द लॉ.
बैक टू यू अनुज। अनुज बताइए क्या चल रहा है, फुल फ्रेम अनुज बताइए क्या चल रहा है लेटेस्ट। क्या वहां पे प्रियंका गांधी भी आ गई? बिल्कुल बिल्कुल ऐश्वर्या, बिल्कुल ऐश्वर्या। देखिए यही सब बातें जो है हमेशा से कांग्रेस पार्टी के साथ रही है। ये जो लेगेसी की बात है, ये अगर लॉबी की बात करी जाए कि वी बैक राहुल गांधी, एक लॉबी है जो राहुल गांधी के पीछे खड़ी है, एक लॉबी है जो प्रियंका गांधी को बैक करती है। हमने देखा था किस तरीके से प्रियंका गांधी की एंट्री हुई थी। मुझे याद है आज भी मैं अमेठी में मौजूद था जिस समय ये अनाउंसमेंट हुआ था कि अब प्रियंका गांधी एक्टिव पॉलिटिक्स में रहेंगी। लेकिन अगर आज की बात करें ऐश्वर्या, तो सोनिया गांधी अब इस समय दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं, राहुल गांधी से मिल रही हैं। सदस्यता रद्द होने के बाद सबसे पहली मुलाकात अगर देखी जाए तो अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी की हो रही है। देखिए 5 बजे ये महत्वपूर्ण बैठक होनी है जो एआईसीसी के अंदर जितने भी दिग्गज हैं कांग्रेस पार्टी के, जितने भी सीनियर लीडर हैं, भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे खुद भी जो अब प्रेसिडेंट भी हैं वो खुद भी मौजूद रहेंगे, लेकिन उससे पहले ये महत्वपूर्ण बैठक हो रही है जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी हैं। सिर्फ मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के अलावा इस बैठक के अंदर कोई लीडरशिप मौजूद नहीं है कांग्रेस पार्टी की। तो यहां डिसाइड करा जाएगा कि आखिर किस तरीके से आगे की रणनीति बनानी है, कहां राहुल के कदम जाएंगे, राहुल के लिए क्या राह चुनी जाएगी, ये इस महत्वपूर्ण बैठक में डिसाइड करा जाएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि एक मां भी बेटे से मिलने आई है, लेकिन हम जानते हैं कि मां भी और बेटे भी पॉलिटिक्स से जुड़े हैं। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष रही सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे राहुल गांधी। 2019 के चुनाव के बाद हमने देखा कि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया, लेकिन उसके बाद इंटरिम प्रेसिडेंट रही और उसके बाद हमने देखा कि किसी तरीके से फाइनल नहीं हो पाता कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं। लेकिन अभी मौजूदा स्थिति की बात करें तो सुबह से ही देखिए कांग्रेस पार्टी लगातार, हालांकि बात करें तो कल से ही लगातार कांग्रेस पार्टी ये कहती नजर आई है कि राहुल गांधी ने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया, राहुल गांधी ने गलत नहीं किया है और ये हमारे खिलाफ एक साजिश है। वहीं कोर्ट ने तो फैसला दिया ही दिया, लेकिन जो रूल है उसके हिसाब से आज लोकसभा ने यह साफ कर दिया कि आपकी सदस्यता रद्द करी जाती है। अब उसके बाद कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि देखिए राहुल गांधी पहले अमेठी से चुनाव हारते हैं, अमेठी से चुनाव जिस समय हारते हैं तभी वो दूसरी एक सेफ सीट से चुनाव लड़ते हैं जो वायनाड की सीट थी। अब वायनाड की सीट भी जाना और प्रेसिडेंटशिप भी ना रहना, तो राहुल गांधी आखिर स्टैंड कहां करते हैं, ये कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा सवाल है। हमने देखा कि कई सदक से अब तो राहुल गांधी के पीछे ही कांग्रेस पार्टी चलने को तैयार थी और कई सदक से यही चल रहा था कि हमारा नेता राहुल गांधी है। लेकिन अगर राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो जाती है, वो एक एमपी भी नहीं रहते हैं, तो आगे अब कैसे चला किसी मामले में, तो फिर किसी भी सदन का सदस्य नहीं रह सकता है। तो और वही जब उसकी कॉपी जब स्पीकर को मिली होगी तो स्पीकर ने अधिसूचना जारी की है। इसके अंदर इतनी हाई तबाह मचाने की जरूरत क्या है? अभी जाइए कोर्ट के अंदर, ऊंची अदालत में जाइए, राहत की मांग कीजिए, अगर आपको राहत मिल जाए तो वापस लौट कर आ जाइए। लेकिन अभी तक, जहाँ तक मेरी जानकारी, अभी तक किसी मामले में कोर्ट ने जल्द ही इस तरह के मामले में कोई राहत किसी को नहीं दी। सर इसमें कोर्ट ने फैसला दिया तो डेमोक्रेसी की हत्या है। और आपने क्या सच बोला? आप तो गाली दे रहे थे, क्या सारे मोदी चोर हैं? इस देश के अंदर कम से कम 1-2 करोड़ लोग होंगे जो मोदी सरनेम रखते हैं और अधिकांश पिछड़ी जाति से आने वाले लोग हैं। क्या सारे लोग चोर हैं? यही आपका सत्य है या यही गांधी की अहिंसा है? तो देखिए, पहले बोल देने से नहीं होता है कि हम सत्य के रास्ते पर चल रहे हैं। तो आपने जो किया वो आपको भुगतना पड़ेगा। बोया पेड़ बबूल का, कहावत ना गाँव में, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए। तो आपने जो किया वो आपको भुगतना पड़ेगा। लेकिन ये इनको अहंकार है, इनकी हेकड़ी है कि मेरे परिवार ने देश पर राज किया, मेरे परिवार ने आज़ादी की लड़ाई में बड़ी भूमिका का निर्वाह किया और हम लोग पैदा हुए देश पर राज करने के लिए। तो देखिए, इस देश में, लोकतंत्र में कोई राज करने के लिए पैदा नहीं होता, जनता चुनती है। और नरेंद्र मोदी ने 2014-2019 में इस देश पर से लोगों की सेवा करने के लिए उनका चुनाव किया है और 2024 में फिर एक बार नरेंद्र मोदी लौट कर आएंगे लोगों की सेवा करने के लिए। सर, आपने भी आखिरी दौर में है सुनवाई, उसको लेकर के आपने, देखिए, इसी मामले को लेकर मैंने भी पटना के that was Sushil Modi, and from Sushil Modi I'm going to senior Congress leader Rashid Alvi. Rashid Alvi जी, आपने सुना बीजेपी को भी और कांग्रेस के नेता लेकिन अभी भी ये कह रहे हैं राशिद जी कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। क्या आप भी इसको पॉलिटिकल वेंडेटा मानते हैं राशिद अलवी जी? ये कोर्ट के डिसीजन के बाद हुआ है सर। देखिए, पॉलिटिकल वेंडेटा तो है ही। ये बड़ा सवाल ये कि बीजेपी के नेता किस तरीके की जबान बोलते, हर रोज गांधी परिवार के खिलाफ बोलते हैं, हर रोज मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं।
क्या ये जुमला जो बीजेपी के तमाम नेता कहते हैं कि सारे आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होते हैं, फिर तो उन्हें सबको 2-2 साल की सजा होनी चाहिए। राहुल गांधी ने यही तो कहा था कि सारे एक कम्युनिटी के लोग ही क्यों बेईमानी कर रहे हैं, यही जुमला तो था उनका। और आपको याद होगा अभी 1 साल पहले, जस्ट 1 year ago, Delhi High Court has issued a direction to register a case against one of the leaders of Bharatiya Janata Party. That High Court judge was transferred and that leader was provided security. What is this? This is the justice. यही लोकतंत्र है, यही justice है. We have seen from our own eyes. High Court judge was transferred. Hello? But this is also, yes sir, I can hear you and the country can hear you right now, Rashid Alviji. But this is happening after a judgment of a district court. And according to the rule book, sir, 2 years or more, any criminal case, if there is a 2 year plus more, the member of parliament, irrespective whomsoever he or she is, has to be immediately disqualified. So the rule book is being followed. You yourself are a former MP. You are exactly aware of the rule book and the rules, sir. And this is the maximum punishment which was given to Rahul Gandhi. Do you justify it? How can you justify it? 2 years punishment has been given. Yeah, I'm telling you. 2 years punishment has been given with this motive that his membership should be finished from the parliament. It is not punishment, and you see from the High Court. Now, we are going to appeal in District Court, then High Court, then Supreme Court. And he will come out from the Superior Court against the order of this court. We are sure about it. But may I ask you, but may I ask a counter question to you, sir, that just because he is a Gandhi, just because he is Rahul Gandhi, should the punishment be less for him, sir? Can I just flip that question and ask you? Just because he is Rahul Gandhi, the punishment should be less? Sir? No, not at all. Not at all. Rahul Gandhi is also a citizen of this country like other citizens. But Rahul Gandhi has been punished only because he is Rahul Gandhi. Important thing is this. If you would have been there, I'm sure about it. आपको punishment नहीं मिलता. It is only Rahul Gandhi who has got punishment only because he is Rahul Gandhi. It is unfortunate. And now it is my considered opinion, time has come. All MPs of Congress party should resign immediately and come out from the parliament. Parliament itself has become absolutely irrelevant. Sir, are you saying that all MPs of the Congress party are going to resign? Are you telling us something there? I'm not saying they are going. I am saying they should resign from the parliament. Absolutely, Mr. Rashid Alvi. I'll come back to you. I'm just going to my colleague Anuj. Sonia Gandhi is leaving the residence of Rahul Gandhi. I'm so sorry, Rashid Alvi ji. मैं माफी चाहता हूँ, Rashid Alvi ji. Sonia Gandhi is leaving the residence of Rahul Gandhi. Anuj, over to you. Anuj, over to you, Anuj. Anuj, बोलिए. आप इस समय दोनों चैनल पे लाइव है. बोलिए, Anuj. Yes, ऐश्वर्या. Anuj, over to you. Yes, ऐश्वर्या. जी ऐश्वर्या, देखिए ये तस्वीरें हैं राहुल गांधी के घर के बाहर की ये तस्वीरें हैं. अब अलर्ट हो गया है दोबारा से. जी बिल्कुल, दोनों अलर्ट हो गया है फिर से. और फिर से हम देख रहे हैं कि जो सोनिया गांधी का कैवलकेड है, जो सोनिया गांधी का काफिला है, वो स्टैंड बाय पे लग गया है. तो देखिए अब किसी भी पल सोनिया गांधी जो है वो निकलेंगी. जो मुलाकात हुई है वो मुलाकात करने के बाद सोनिया गांधी किसी भी पल यहाँ से निकलेंगी. देखिए जैसा कि हम दर्शकों को बता रहे थे कि देखिए वो एक गाड़ी निकली है सफारी, उसमें सोनिया गांधी निकल चुकी हैं. सोनिया गांधी निकल गई हैं. 15 मिनट तक देखिए ऐश्वर्या ये बैठक रही और सोनिया गांधी का जो कैवलकेड है, जो सोनिया गांधी का काफिला है, वो जा चुका है. राहुल गांधी अभी भी जहां तक अनुमान है कि वो घर के अंदर है, क्योंकि उनका काफिला अभी यहीं नजर आ रहा है. तो सोनिया गांधी आई थी, उनका काफिला और सोनिया गांधी मुलाकात करके निकल चुकी है. 15 मिनट ये मुलाकात रही. अब 15 मिनट में क्या कुछ डिस्कशन हुआ, क्या कुछ बातचीत हुई है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है, ये डिस्कशन, ये मुलाकात, ये जो बैठक
बैठक है ये उससे पहले हुई है। जब 5 बजे महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है कि आगे की रणनीति क्या रहेगी, उससे पहले माँ बेटे के बीच में कह लीजिए या फिर ये कह लीजिए दो जो पुराने अध्यक्ष रहे कांग्रेस पार्टी के, जो दिग्गज नेता रहे कांग्रेस पार्टी के, उनके बीच में ये मुलाकात हुई है। लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुलाकात होती है क्योंकि इसमें कोई लीडरशिप मौजूद नहीं थी, सिर्फ सोनिया गांधी और राहुल गांधी, 2 जनों की ये मुलाकात होती है। इस मुलाकात में क्या कुछ निकल के आता है या क्या डिस्कशन होता है इसका हमें इंतजार रहेगा। लेकिन 5 बजे से पहले ये मुलाकात हुई है। 5 बजे से पहले ये मुलाकात राहुल गांधी के घर पे हुई है। हमने तस्वीरों में 15 मिनट पहले दर्शकों को दिखाया था कि सोनिया गांधी राहुल गांधी से मिलने पहुंची हैं। 15 मिनट तक ये मुलाकात चली। 15 मिनट की मुलाकात के बाद अब सोनिया गांधी निकल चुकी हैं। वहीं तस्वीरों में हम लगातार देख रहे हैं जो पुलिस का डिप्लॉयमेंट है, जो दिल्ली पुलिस की तैनातगी है, वो बहुत ज़्यादा राहुल गांधी के घर पर कर दी गई है। हालांकि अभी तक सोनिया गांधी के अलावा और कोई लीडरशिप कांग्रेस पार्टी की यहाँ नहीं पहुंची है। लगातार जो है बातचीत चल रही है कि 3:45 में मैं आपको बता दूं अभिषेक मनु सिंघवी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे एआईसीसी दफ्तर से। उसके बाद 5 बजे ये महत्वपूर्ण बैठक होगी जिसमें ये सब कुछ डिसाइड करा जाएगा कि आखिर क्या कुछ अगला कोर्स ऑफ Anuj, hold on for a second. We know Sonia Gandhi is leaving. But I'm being joined right now by Mahesh Jeth Malani, senior lawyer and MP of the Rajya Sabha. Thank you for joining us here. And being a parliamentarian, you know how serious the Constitution is about certain things. This time under the RPA, when there's a criminal case, a conviction, no matter who you are, which surname you have, which caste, which creed, you have to leave the parliament. He has been disqualified. Your first reaction coming in on Rahul Gandhi? Well, I mean, after yesterday's order of conviction and sentence, and particularly since the sentence was 2 years, there was no other consequence except that he had to be disqualified. That's the law. At the moment you get a conviction for an offence of punishable with 2 and the sentence is 2 years, then you stand automatically, by law you stand disqualified. So this is only a consequential action which the Speaker was bound to take. But the root cause is the judgment of conviction in the defamation case. Mahesh Jeth Malani, now what next can we expect at this point of time? Because we know that the